साथ था, क्योंकि आज भी रामायण और महाभारत का पूरा प्रभाव आज भी है। तो उस वक्त तो और भी ज्यादा था, क्योंकि संस्कृत स्टडीज भी चल रहे थे। लेकिन एज मैनी पीपल डिस्क्राइब दैट देयर वाज ए डार्क एज ऑफ around 1200 years where we have forgotten what is our culture and whether we should be proud of it or not. और जो लोग आधुनिक टीकाकार है वो अभी तो कहते हैं कि अभी तो रेनेसॉ चल रहा है, भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। तो ये दो बिंदुओं के आसपास बीच वाले 70 साल में सभी भारतीय भाषाओं ने एक विशेष अंगड़ाई लेकर नए साहित्य का निर्माण करने का कार्यक्रम किया, अभियान किया। एक प्रकार का नवोन्मेष भी देखने मिल रहा है। आई एम वेरी लकी and we are all blessed that in this hall we have languages which have a different flavor. You see, if you see Konkani, then Goa has a different history of freedom struggle and they have a different flavor. But Marathi has a great upsurgence. They have Shivaji's legacy. They have uh, many fighters in their history, and that's why their literature has started in 1947 with a different angle to it. Rajasthani folk was coming to the fore, and it has moved rather all the entire freedom struggle. Sindhi, if you look, एज शिवदासानी जी उनके पेपर में भी लिखती है कि ये पार्टीशन का जो विभीषिका थी, उनका बड़ा बैगेज, हेड बैगेज प्रजा और रचनाकार के मन में था। तो ये अश्रुपूर्ण उनकी कहानी थी, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ विभाजन के कारण। तो हम सब लोग स्वतंत्रता का उत्सव कर रहे थे, तब उनके पास विभक्ति का, सेपरेशन का, और जो ट्रेजेडी हुई, जो कैटास्ट्रॉफ हुआ, उनकी आफ्टर इफेक्ट्स, एज वी डिस्क्राइब इन सेस्मोलॉजी, द आफ्टर शॉक्स, that has really shadowed the literature of Sindhi. And that is how now we are going to examine. And Vidyaji, of course, will tell us how the oral traditions have developed. If we look at immediately after the independence, there is a there is a, two, three things were happening. Of course, the Western, uh, particularly European languages, under the influence of, say, Virginia Woolf, when Virginia Woolf wrote that I would like to have my own room, that नारी शक्ति, नारी स्वातंत्र, एक नारी विमर्श का बड़ा आंदोलन यूरोप में चल रहा था, और उनका बहुत बड़ा प्रभाव भी गुजरात भारत में आ रहा था। और हमने देखा है कि भारत में तो नारी संवेदना और स्त्री सशक्तिकरण की एक परंपरा बहुत पुरातन काल से है। हमारे पास गार्गी है, अपला है, लोपामुद्रा है, जिन्होंने बहुत बड़ा वेदांत का चर्चा किया। जैसे शंकराचार्य के साथ भारती ने मंडन मिश्र के घर पे जो चर्चा की, वो नारी सम्मान की, और नारी का जो महत्व था वो हमारे संस्कृति में बहुत एस्टैब्लिश था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, एक सिद्धांत लेकर हम चल रहे थे। और भगवत गीता जैसे में तो भगवान ने बताया कि श्रीर्वाक नारी नाम मेघा स्मृति द्रुति क्षमा, जो 7 वैभव है व्यक्तित्व के, सातों नारी के पास है। तो ये सब भारतीय संस्कृति में था, और यूरोप से ये एक हवा चली। तो नारी विमर्श का एक बहुत बड़ा अभियान हम सभी भारतीय भाषाओं में देख रहे हैं। दूसरा जो विमर्श हमको मिल रहा है वो दलित चेतना का है। और ये 7 दशकों में दलित चेतना का बड़ा आक्रोश, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर
एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे बंधारण और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते। तो ये दलित चेतना का जो आक्रोश था, इसने साहित्य को बहुत बड़ा प्रभाव दिया, क्योंकि जो हम सपने वाले थे, आदर्श स्वातंत्र की अभिप्सा करने वाले थे, अब हम हमारे मुल्क में है, हमारे देश में है, अब हमारा राज है। तो यथार्थ का कैसे चित्रण किया जाए, यथार्थ का कैसे प्रतिबिंबित हो यथार्थ, इसके लिए दलित चेतना में और दलित जो साहित्य आया, उनमें ये बहुत फोर्सफुली वी हैव started recognizing it. And I should say that among all the Western languages, of course, every language has Dalit Chetna, but Marathi language has brought it out so forcefully. और विशेष करके ग्रामीण परिवेश में जो दलित चेतना के उपन्यास आए मराठी में, उन्होंने भारतीय भाषाओं में भी अपना प्रभाव दिखाया है। मैं उसकी यहाँ नोट लेना चाहूँगा, क्योंकि वो कैलाश जी तो बताएंगे कि किस प्रकार से वो हुआ। तीसरा जो हमारा, हम जो पश्चिमी छोर पर है भारतवर्ष की, एक बड़ा आदिवासी पट्टा है, वनवासी बंधुओं का एक अलग साहित्य है। हम अभी हमारे गणमान्य भारतीय साहित्य में जो गणमान्य आदिवासी साहित्य का संशोधन कर रहे थे, वो भगवान दास पटेल हमको मिले, जिन्होंने रामायण की ट्रेडिशन डांग और अरवल्ली और विंध्याचल के पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी समाजों में ओरल ट्रेडिशन से कैसे हमारे दो महाकाव्य जीवित रह रहे हैं और किस प्रकार की परंपराएं हैं। जैसे कि हम जानते हैं दंडकारण्य, जहाँ शबरी का आश्रम था, वो डांग के जंगलों में पाया जाता है, और शबरी का आश्रम, और वहाँ भी एक गायन प्रणाली, ओरल ट्रेडिशन आदिवासियों की ऐसी बड़ी दिखने मिलती है, जो उनके नृत्य और गीत, जैसे कि हम जानते हैं, विद्या जी तो बताएगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ओरल ट्रेडिशन में आदिवासी में जो गीत होते हैं वो फोक प्रकार के होते हैं, लेकिन अंततो गत्वा जैसे राजस्थान और सौराष्ट्र में हम लोक साहित्य में देखते हैं कविता का तत्व, साहित्य का तत्व, ऐसा कुछ साहित्य का तत्व भी ये लोगों के पास भी है। हम बहुत बड़ा क्वेश्चन भारतवर्ष में जो पूछते हैं कि साहित्य का पठन पाठन क्लासरूम में होता है, वही साहित्य है, या प्रजा के मन में भी कुछ साहित्य है? क्योंकि प्रजा जब कुछ गाती है, कुछ कुछ गीत गाती है, मैरिज में गाती है, मरणोत्तर गाती है, कोई प्रसंग पे गाती है, मेले में गाती है, तो इसमें म्यूजिक भी है और साहित्य भी है। और पश्चिम भारत में ये एक विशेषता है कि बहुत बड़ा जो फोक लिटरेचर और ओरल ट्रेडिशंस है, इसमें कविता का तत्व और साहित्य का तत्व बहुत बड़ा देखने मिलता है। तीसरी बात, 91 के बाद जो इकोनॉमी ओपन अप हुई, और हम गुजरात से आ रहे हैं, और बम्बई भी हमारा ही भाग है, गोवा टूरिस्ट प्लेस है, तो और राजस्थान भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूरे विश्व के लिए। तो पश्चिम भारत का ये वैशिष्ट्य है कि हमारा ओपनिंग अप, वी आर ओपन, नो, द लिटरेचर हैज बिकम अ विंडो टू द वर्ल्ड। एंड गुजरात, आई कैन से, आज गुजरातीज आर इन 126 कंट्रीज। तो उनका कनेक्शन से न केवल वी हैव ब्रॉट द लाइफस्टाइल, बट वी हैव आल्सो ब्रॉट लैंग्वेज and some nuances of literature in diaspora literature. We have now, there is a full-fledged Gujarati community and Gujarati literature written in US, England and Australia, because we have sizable population. So that has brought new kind of lifestyle, and that's why new stories, new languages. So that is also big opening up. So diaspora has done a big thing.
But when the new century has opened up in 2001, so new century has seen a big new kind of environment when the twin towers were destroyed. It was a global impact on, because of terrorism. Everybody was so concerned, and then up to this point, it has given a birth or a thought of identity politics and identity literature. If you read Francis Fukuyama, who has written a great book called Identity, इसमें यही बात हो रही है कि language has become identity. I want to write, I want to be proud of my language, and that's why if you can, that is reflected very well in the national education policy. That मातृभाषा का महत्व ये 7 decades के बाद में, because globalization then deglobalization, ब्रेक्जिट में से ब्रिटेन को बाहर निकलने की इच्छा हुई, तो ये सब चीजें ग्लोबल is impacting our own thought process also. So वर्जीनिया वुल्फ से स्टार्ट हुआ नारी विमर्श आज पहचान का, पहचान की राजनीति, पहचान का साहित्य, आइडेंटिटी लिटरेचर, वो हैज कम सो फोर. So if I am writing novel or a story or a poem, I would like to say and reflect how the Gujarati ethos have evolved over these 7 decades. My grandparents, when they were writing in the beginning of 1947, they were all influenced by Upanishads and they were all writing the religious things. But now in 2023, when I write, or 2024, when I write, I have a global impact on my language. I am also worried and I am concerned about the emerging artificial intelligence, what will happen to the language, because we have seen there is a great decline of readership. People have ten, people have a tendency not to read, but to look at the mobile and the shorter forms of microfiction and novellas and shorter poems, because the attention grab has also decreased significantly. So in light of the developing world around us, we हम रचनाकार है और हम सोसाइटी का दर्पण है, mirror है, we have to mirror the emotions of our people. So that's how this western part of India has exhibited how the literature has reshaped itself. And these 3 or 4 vimarsh, Nari vimarsh, Dalit vimarsh, Adivasi vimarsh, diaspora connection, identity politics, and global impact, these things have really influenced. With this opening remark, I think we will proceed, and I will request Shri Hasit Mehta ji to start with Gujarati literature in the past 7 decades. Dr. Mehta. नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं पिछले 70 दशकों से बहता हुआ हमारा गुजराती साहित्य का प्रवाह और उसकी एक प्रतिनिधि काव्य रचना हमारे गणमान्य कवि हरीश मीनाश्रू जी की आपके सामने इसको रखकर मैं अपनी बात का प्रारंभ करना चाहूँगा। हरीश जी लिखते हैं, 1000 पत्ते, 1000 फूल, 1000 फल, 1000 हाथों वाला वृक्ष खड़ा है और उसकी हथेली में हाजिर है एक पंखी, इतना अधिक जीवंत कि मृतक जितना स्थिर। पंखी के बहाने पूछे जा सकते थे उपयुक्त प्रश्न, यायावरी के या युयुत्सु के,
लेकिन गुरु तो पूछता है एकदम सरल प्रश्न धनुर्धर से, तुझे क्या दिखता है वत्स? वृक्ष, डाल, पत्ते, फल, फूल, पंखी? सबको पता है, जिसे दिखेगा पूरे के पूरे पंखी के साथ पूरे का पूरा वृक्ष, वह होगा पारधी। जिसे दिखेंगे पूरे के पूरे पंखी के साथ पूरे के पूरे पत्ते, वह होगा व्यापारी। जिसे दिखेंगे पूरे के पूरे पंखी के साथ पूरे के पूरे पक्व फल, वह होगा गृहस्थ। जिसे दिखेंगे पूरे के पूरे पंखी के साथ पूरे का पूरा पुष्प, वह होगा प्रणयी। और जिसे दिखेगा केवल पंखी, वह होगा एकाकी। जिसे दिखेंगी पंखी की केवल आंख, वह होगा जोगी। परंतु केवल पंखी को ही पता है कि जो देख सकेगा पंखी की आंख में स्वयं की छवि, वही बनेगा धनुर्धर, वही कर सकेगा सरसंधान। यही है हमारे आज के गुजराती कविता का चेहरा, जो आज़ादी पश्चात निखरी है और वह स्वयं सिद्ध है अपने संवेदन का, अपने समय का सरसंधान करने के लिए। वैसे आज हमारे साहित्य में पोस्ट मॉडर्न युग चल रहा है। आधुनिक और अनुआधुनिक काल से प्रभावित हुई गुजराती रचनाएं आज का सांप्रत का एक अनूठा आलेख बना रही है। आज हम उसके प्रवाह की व प्रवाह में आए हुए बदलाव की बात करेंगे, नहीं कि रचनाकारों के इतिहास की। दोस्तों, मानव मन और मानव समाज और मानव इतिहास की अनंत संभावनाएं तो किसी भी साहित्य में होती है। वैसे ही गुजराती कवि या कथाकार या आलोचक गांधी युग के पश्चात आया हुआ मोह भंग का काल, उसका चेहरा पिछले 70 दशकों से बता रहा है। गांधी युग तक माने आज़ादी तक गुजराती साहित्य में सामाजिक आवाज, सामुदायिक संवेदना ज्यादातर देखने को मिली। लेकिन 1950 के बाद वह अपने रचना पाठ में निजी उसके सामने यंत्र संस्कृति, गांव और संवेदना का रास जैसे कड़े आक्रमण थे। इसीलिए वह रचना रीति और रचना विषय दोनों ओर से विवश अवस्था में मध्य बिंदु पर आ खड़ा। सुरेश जोशी, निरंजन भगत, मधुराय, किशोर जादव, प्रबोध परीख, सितांशु यशस चंद्र, ऐसे कई अगणित गणमान्य सर्जकों ने अपने रचना पाठ में प्रतीक, फैंटेसी, कपोल कल्पन, जस्टापोजिशन, फ्लैशबैक जैसी नव्य प्रवृत्तियों की अतिरिक्तता दिखाई और बढ़ाई। रचना में भाषा का प्रभाव इतना बढ़ा, रचना में रीति का चलन रचना प्रयोग का आग्रह 19 के दशक में यह सांप्रत प्रवाह फैला हुआ है। यह वह रचनाकार है या चिंतन या कथा भार से बोझिल बनती हुई रचनाएं भी नहीं। यह तो अपने आप में परिष्कृत हुई कृति है, जहां आर्ट भी है और लाइफ भी है। एक बात यह भी हुई कि पोस्ट मॉडर्न रचनाकार ने आंचलिक चेतना को नए ढंग से
आजादी पश्चात बड़ी हुई शिक्षा प्रभाव वाली नई ग्राम चेतना से नाता जोड़ा। यह वह गांव है जहां बिजली आई हुई है, सड़क आई हुई है, शिक्षित युवा वर्ग के नए ढंग आए, गांव नहस करने लगा। गुजराती कथा कथा साहित्य ने यह नई ग्राम चेतना का आलेखन शुरू किया। दूसरी ओर गांव से बाहर आकर बसा हुआ मानव अपने मूल कुल को ढूंढता हुआ उसके अभाव में पछताने लगा, क्योंकि नगर संस्कृति में वो अपने आप को रेफ्यूजी फील करता है और वह गांव उसे अपनापन तोड़कर जा चुका एक शहरी मानता है। यही हमारे कवि मणिलाल पटेल लिखते हैं, बानी साथे गયું बाळपण गाम जवानी हट छोड़ी दे। यह पोस्ट मॉडर्न कविता भी स्वार्थ परायता, संकुचितता जैसे महानगरीय संवेदन को, निजीकरण, भूमंडलीकरण, बाजारवाद जैसी सामुदायिक और वैयक्तिक समस्याओं को अभिव्यंजित भी करता है। गुजराती में मॉडर्निज्म की कविता यूरोपियन, अमेरिकन और अन्य विदेशी रचनाकारों और रचनाओं से आयात हुई और प्रभावित हुई। उसके सामने पोस्ट मॉडर्निज्म की कविता में हमारी मिट्टी की महक शुरू हुई, हमारी परंपरा की झलक दिखाई दी, हमारे आंचलिक लय माने लोक लयात्मकता, पर्यावरण, मानव भाव का आंतरिक सौंदर्य, मानव की मानव मन और मानव समाज की धरातल पर यह रचनाएं विकसित होने लगी। गुजराती का ये पोस्ट मॉडर्न युग माने नारीवाद, दलितवाद, वनवासीवाद, नॉस्टेल्जिया से घिरा हुआ डायस्पोरिक रचनाकार। महाभारत की द्रौपदी को एक सनातन नारी की संवेदना में परिवित परि, परिवर्तित करते हुए अकादमी पुरस्कृत कवि विनोद जोशी ने सैरंध्री प्रबंध रचना में नारी चेतना को एक नए ढंग से शाश्वत रूप देने का प्रयास किया है। वो लिखते हैं, विवश सांझ नभ निरालंब निस्पंद निस्पंद समीर निगूढ़, एक यौवना खड़ी अधोमुख व्यग्र चित्त सन्मूढ़, रही नाम रट्टी निचका ने शरीरांध्री निश्वास, सहे हस्तिनापुर की साम्राज्ञी अपूर्व परिहास, नृपति विराट विराट नगर, अजात अगल्पित देश, गुप्तवास अवगुंठित परिचय, वितत विसंगत वेश, मृगनयनी मन में अकुलाती, खड़ी विकल असहाय, आज हस्तिनापुर साम्राज्ञी हुई अनुचरी हाय। पूरे 1000 जितने चरण, 7 सर्ग, चौपाई छंद, प्रबंध मंद और मीत की छाया फैलाता हुआ यह सैरंध्री प्रबंध काव्य का यह नया चेहरा गुजराती पोस्ट मॉडर्न कविता का गान भी है और गौरव भी है। नीरव पटेल की बहिष्कृत फूलों वाली कविता में और मोहन परमार आदि कथाकारों में दलित उपहास की वेदना, भगवान दास पटेल का आदिवासी वनवासी लोक साहित्य का प्रलंब पट पे फैला हुआ संशोधन सम्मार्जन, धीरूबेन पटेल, कुंदनिका कापड़िया और वर्षा अडालजा से लेकर हिमांशु शेलत और बिंदु भट्ट का नारी सम्मान के लिए जूझता हुआ संवेदन, यह सब गुजराती साहित्य के पोस्ट मॉडर्न युग की सर्वोच्च सिद्धियां हैं। नया काल, नई टेक्नोलॉजी और माहिती विस्फोट की विडंबना से घिरी हुई हमारे कृष्ण दवे की कविता कृष्ण की बंसी को कैसे पुकारती है। વાસલડી.com, ગોકુલિયું.com, વૃંદાવન આખું, કાંજીની વેબસાઇટ એટલી વિશાળ કે કયા કયા નામ એને આપું। हमारी इस बैठक की चेयर करते हुए गणमान्य कवि भाग्येश जी भी गुजराती कविता के यह बदलाव को कैसी आवाज देता है, जरा सुनिए। इंटरनेटनी अगासीओ पर ई सूर्योदय जोयो, અમે તમારી સોબત ખોઈ પડછાયો પણ ખોયો। ई राधा ने यमुना तट पर खोला साइबर कैफे, ई राधा ने यमुना तट पर खोला साइबर कैफे, मोर पंख का पुदना पहने ईमेल एड्रेस हांफे। बाइट बाइट पर कृष्ण विराजे वेबसाइट वन रावण, वायरस वाले विचार से तो यह रस है मन भावन। मानुषी की इस भक्ति मानुष की इस ई भक्ति में विभूति योग गवाया, इंटरनेट की छतों पर
ही सूर्योदय दर्शाया। आज गुजराती साहित्य नर्थ की ओर झुका हुआ है। ये नर्थ माने आजादी पहले का अर्थपूर्ण और आजादी पश्चात आए हुए मॉडर्न युग का अनर्थपूर्ण के बीच का, नहीं अर्थ नहीं अनर्थ, लेकिन नर्थ का चेहरा। आज गुजराती साहित्य लोकल है, क्योंकि वह लोकल को साथ रखते हुए ग्लोबल का प्रवाह है। आज के गुजराती साहित्य का विषय मूल्य ह्रास भी है और मूल्य प्रतिष्ठा भी है। आज की गुजराती साहित्य की रूप रचना आधुनिकों से प्रभावित है और अपने मूल कुल से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, यह सच है कि पानी अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है, लेकिन ये शर्त भी है कि वह पानी तालाब के रूप में नहीं, नदी के रूप में होना चाहिए। समाज और साहित्य की परिसीमाएं भी यह तालाब और नदी के पानी जैसी ही होती हैं। मैं कहूँगा, गुजराती साहित्य के पिछले 70 दशकों में मॉडर्निज्म का तालाब भी है और पोस्ट मॉडर्निज्म की नदियां भी हैं। इससे भी आगे बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं कि हमारा आज का सांप्रत का पोस्ट मॉडर्न युग का गुजराती साहित्य नहीं तालाब नहीं नदी, वह सब बांध तोड़ते हुए अपनी प्रवाहिता को सागर की जाज्वल्यमान लहरों तक पहुंचा रहा है। आइए भगवान, राम नाम लीजिए और गुज्जू आजमन कीजिए, क्योंकि कुछ दिन तो गुजारिए। थैंक यू Thank सर, you. थैंक यू सो मच। Thank you very much. Now I will request Kiranji for Konkani literature in past 7 decades. Kiranji. 2 minutes to time, please. Yeah. Namaskar. I will be presenting my paper in English. Chairperson of this session, renowned fellow panelists, illustrious audience, dear friends. My title is Konkani Literature in the Last 7 Decades, a critical analysis in the context of post-independence Indian literature. It sounds a bit paradoxical that I'm going to talk about Konkani literature in the context of Indian literature as though it is not a part of Indian literature. It is, and it wasn't at one given time, politically speaking. And that has made a lot of difference to the growth and the development, the focus and the relevance of Konkani literature to us all. Within the ambit of post-independence Indian literature, the upsurge of Konkani literature over the last 7 decades displays a very interesting trajectory. If 3 progressive criteria of innovation, experimentation, and social commitment are applied generally to Indian literature, the same can be applied to Konkani literature too. And you will see them in the themes, forms, and vision percolating through Konkani literature of the last 5 decades, albeit with a pronounced secular, inclusive, and reformist verve. However, the overall identical temperament of Konkani literature with that of its Indian counterpart ends at this point. And if a decade-wise analysis is taken, a parallel but quite often a reverse growth pattern becomes starkly visible in Konkani literature as compared to the Bhasha literatures across India. This distinct manifestation of growth is not without a reason. While the rest of India was free in 1947, Konkani's heartland Goa still languished under the colonial yoke until December 1961. This delay of 14 years was not just a temporal retard. It was a denial of political freedom, socio-cultural reform, and linguistic rejuvenation that was needed for Konkani to grow. It was metaphorically
an exile that entailed a likely loss of identity. It was a anvas, it was vanvas with agyatwas in tow. Without doubt, the delay of 14 years in Goa's liberation has certainly jeopardized its existence, survival, and the status of Konkani within the Committee of Sister Languages. And I have described the papers with you, I won't read that. Along the Western Coast, although it has lost out in this delayed liberation from the colonial rule. Konkani lost out on the shared opportunity of linguistic reorganization of states in independent India. And with that, Goa missed the vistas of political identity, linguistic empowerment, and freedom to decide its own destiny. This has impacted Konkani language and literature and vice versa. As it is, in comparison with the languages of the erstwhile British India, Konkani has been shackled in the land of her birth for almost 450 years, and her shackles were manifold. The foremost was the denial of Konkani's existence by a draconian decree of 1684, and that sealed her growth as a language. I cannot go on to explain in the absence of time, but it meant that Konkani could not be spoken in public and formal domains. Konkani could not be taught or learned, and Konkani was essential even if you wanted to get. Konkani was not essential, Portuguese was essential even if you wanted to get married. It was therefore a language that could not be publicly spoken, studied, or taught. In 1910, in Portugal, there was the Republic, and there was a little time in which the socio-political restrictions on Goa were released. However, the damage done by almost 3 centuries could not be undone. And at best, what returned to Konkani with the lift of those restrictions was maybe the litany among the masses, letters written home by sailors who were meagerly taught the alphabet of Roman writing, the accounts of payment to daily wage writers that a stray landlady would write, and so on. And of course, the publicly spoken use of Konkani became popular then in the Konkani theatre. However, Konkani could not return to the schoolroom until much later after Goa's liberation in 1961. To make matters worse, in 1930s, in stark contrast to post-independence surge of renewed efflorescence in Indian languages, in Goa, there was the vice-like grip of dictatorship under the iron fist of Dr. Salazar. In the late 40s, when India was gearing up to the possibility of freedom, colonial oppression in Goa was only growing, and Konkani folk, alienated from their mother tongue, sought political patronage and social prestige through other languages then prevalent in Goa, such as Portuguese and Marathi. However, and here also there is a stark difference, the chairperson elucidated just now how impact of Mahatma Gandhi is so strong and seen across all Indian languages in independent India. But you will see the impact of a different persona is visible on Konkani ethos, Konkani expression, literature, and political freedom. While India was moving towards freedom, Goa also was hoping that her destiny would take a new turn. On 18 June 1946, a visionary called Dr. Ram Manohar Lohia came to Goa and ignited its populace into live wire vitality. The euphoria of this moment has been celebrated ever since as the Kranti Din on 18th June. And it has been etched in the history of Konkani by Konkani's buoyant bard, Bakibab Borkar, also known in Marathi as the poet Babh Borkar. He wrote his well-known poem in Marathi, Pavitra Mangalwar, and a little later, its Konkani version also as Pavitra Ho Mangalar, and he says, Mod kaso yeun tuve gulam panar malli
फूक सुस्तेल्ल्या इंगळ्यावेलो धवो शेळो गेलो उबून परजळीत तांबड्यो जिबो परजळीत तांबड्यो जिबो जागली जोत खडबडून दयावंत शांतेचेर आयलो भार पवित्र हो मंगळार. And he talks of the deity Shanta Durga, who's supposed to be the cool version of the Durga. Now she was overcome with the presence of Durga herself. And the translation is there in English. I will skip that for your personal reference. Defying governmental restrictions, Bakibab Borkar not only wrote the poem, he read it to his school children the next day, and he himself plunged into Goa's freedom movement, then called ironically as Jai Hind. If a person so much as said Jai Hind, you were considered to be anti-national and against the government, and that could bring you a stamp that you were to be imprisoned. Well, and inspired by that, one of his students within 5 years, Nagesh Karmali, jumped into the freedom struggle as well. And you can see that young generation was moved to this kind of association with Goa's freedom struggle. In 1954, a second wave, a stronger wave of resistance burst forth, and that has been led by the poet Manohar Rai Sardesai. And he begins his earliest poem by saying, Dusmana tuja mukhar, dimi kashits marchana. And he says, in no case, O adversary, shall I kneel in front of thee. This is how his poem begins. Well, and he also celebrates Dr. Dr. Lohia's contribution to Goa's freedom. And in 1961, when Goa becomes free and Lohia is invited there, Manohar Rai's poem, Manohar Rai was a young lad then, is read by no less a poet than Bakibab Borkar. He reads the younger poet's poem called Agwadacha Shivwa Tuve Halli Amka Zag. O Lion of Agwad, you awakened us into selfhood. And on attaining freedom on August 47, India was embarking on a new destination of hope and progress. The literary vision in her multilingual voice revealed a deeply inherent paradox of perception. While in the newly carved out Pakistan, far away from post-partition India, far away psychologically, Faiz Ahmad Faiz was lamenting in his Subhe Azadi the pain of the dawn of freedom. And in free India, Sumitra Nandan Pant infused hope and reassurance through his timeless words. Dhanya aaj ka mukti divas gao jan mangal, Bharat Lakshmi se shobhit, fir Bharat Shatdal. And you can see on this backdrop, Lonesome Kokni was still daring to write her struggle for. And there, the poet's pen now awakened people doubly forcefully. And Wakibab Borkar was to say, Zagi zalya goinchi sasa yetla bhar, dhol tashe, bade, mar shesar. And he was saying, he was using again the metaphor of divine presence and saying, Goa's selfhood has awakened now, the present shall manifest. Let dhol and taso sound aloud, let sacred grains shower on. Well, the decade of the 60s is very significant. Interestingly, the decade of the 60s began with a sense of fulfillment, idealism, and creative energy for the writers of Konkani. Some of the best romanticist poetry of all times, anticipating imminent freedom, flowed from the pen of Bakibab, and he said, Saat lakh goinkarami, nave yug fuletale, andalyat mantri jivi, te navan uletale. We 7 lakhs of Goans will help a new era bloom. Chants that have suffocated within shall speak now anew. And you can see that poets like Manohar Rai Sardesai also joined this bandwagon, and in his collection of poetry, Eyes Re Dholar Polli Badi, he uses the myth of Kaun's Vadh to indicate how Goa's association with the freedom struggle was going to entail in the elimination of the dictatorship. And with Goa's liberation in 1965, there was a new bloom came. A poet
R.V. Pandit shot across the horizon of Konkani literature with 5 collections of poetry published all together. And you can see the focus of poetry right in 1962. Island Tasheng Island, poetry of the heart. Utar Mujhe Gaudechen. This word of Gaudo, the Adivasi, I speak from his behalf. Urtalen te roop dhartalen. What shall survive will assume form. That is a comment on the poetic expression in creativity. Dhartare chen kavan, the song of the earth and Chandrava. Together, these poets became the foremost voice of the voiceless, invoking strong poetic commitment, demand for social justice, and initiation of cultural critique in Konkani poetry. They were committed to freedom, but also to societal change. In comparison, the Indian poet of the 50s was on his ideological bandwagon, and you can see that I have given you an example of about 10 writings from Konkani. 60s was the decade for the rest of India, which was of utter disillusionment, a sense of loss, and you can see right from novel to poetry to Karnad's plays, Tughlaq, for instance, is an era that bespeaks this. And I need to jump, and you can see Konkani's battle for survival had never ended. And until 1975, when this very august body, the Sahitya Akademi, acknowledged Konkani as a literary language, Konkani's march along the Sahityik path had not really begun. And in the 14 years after that, you can see that with Sahityik language, Konkani also became the state language of Goa. Goa became a state in the Union of India. And from there on, you can see, if you look through, from 70s to 90s has been a golden period for Konkani literature. I will only refer to the various dimensions in which the novelist has gone, for instance. One is focus on women-centric writings have gone hand in hand with the speaking on behalf of the minorities, the downtrodden, the marginal. The diaspora has come into Konkani writing, and women who have gone abroad and suffered at the hands of circumstances have become very prominently brought out, whether in the novel or in poetry. And I have the names which can be read. What is more important? Konkani never forgot that it has a lot to gain, and it has grown because of translations. Initially, all Konkani poets of the first generation were polyglots, and they were well-versed in Western literary tradition as they were rooted in the Indian, in the Sanskrit language. And because of this, there was a beautiful bond that flowered in them. And even during their jail terms, they taught the younger generation these little tricks of growing by remaining in touch and contact with your people, with your land, and with the aspirations of society. This has continued. And today, apart from all the other challenges, Konkani has the challenge of, I'll complete in 1 minute. Konkani has the challenge of living with the new era of AI and natural language processing. Co-converter is a software that has brought the various scripts in Konkani. They have become accessible from one to the other, and we hope that natural language processing will take Konkani far, although we will need to fight the demons of threat perception of language being lost. I thank you all. I have been in a tearing hurry, but I hope I have covered my point. Konkani's story is the story of survival first and glory later. And I do hope someday I shall be able to survive to sing of only the glory of Konkani literature. Thank you very much. Thank you, Kiranji. It was very Borker-like, no, spirit. We are really thrilled. Now I will request our friend from Rajasthan, Arvindji. Will you please come and tell us briefly how the 7 decades went?
Honorable Chairperson Cha Sahab, intellectual panelists, and dear friends. I would like to start my paper from one of the story which is written by a young Rajasthani writer. That hero of that story is a primary teacher and going every day for morning walk. One day he forgot his mobile in pocket, and during the walk he feel that there may be some problem at home, but he is not connected. He tried to continue his walk, but soon that thought that I haven't mobile and I'm not in touch with my family and something has happened. He turned back and ran away to the home back. He knocked the door. When his wife came out, what happened? And he asked, everything is okay? And just see the impact of mobile in our life. This is today's Rajasthani story. Rajasthan, as sir told, that has rich folk culture. And in fact, we people belong to the desert where survival is very difficult. So to flourish and develop the languages is very difficult task. Even in Rajasthan, the area from which I belong, uh, that area is just on the border of desert, from where desert started, and 50 years back, because today irrigation and lot of facilities are there, drinking water facilities are there provided by the government. But before, just you can imagine 50 or 60, 70 years back or 100 years back, the people were not able to work more for language. They struggle for life. And so you wonder that they use some words instead of the whole sentence. They never constructed sentence. They just use some kind of the voices. See, if they want to ask, "Tum kaise ho?" Then in my area, the people ask, "Ko." Ko is enough. Nothing. "Tum kya keh rahe ho?" Then they say, "Koko." Koko means "tum kya keh rahe ho?" तुम क्या कह रहे हो तो बहुत बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया जब लोगों के पास खाने को रोटी आ गई. Otherwise they were struggling for the life, and that is Rajasthani, and even still we are struggling for uh, recognition. So I'm just starting my paper. The last 77 decades of Rajasthani literature. Rajasthan has a glorious and beautiful history of literature from ancient time. The oldest philosophical thoughts called Samkhya was created by Kapil Muni in Jangal Pradesh, which is present day Bikaner. Rajasthani literature took formal shape in medieval period when Jain Sahitya and Charan Sahitya became the primary form of poetry. Mudya and Abhransh were the scripts in which the word has been sculpted. In 778 AD, Jain Muni Udyotma Suri referred Rajasthani as Maru Bhasha. Most of the ancient literature in Rajasthani was in poetic form. It was heroic poetry dedicated to the great kings and warriors of Rajasthan. Once great poet Rabindranath Tagore said, the heroic sentiment, which is the essence of every song and couplet of Rajasthani, is peculiar emotion of its own, of which, however, the whole country may be proud. Rajasthani literature's root could be found from the 11th century when Maru Gurjari began to be developed as a language. This was the time when the base of Rajasthani had been developed. It continued till the 14th century until Marubhasha and Gujarati got their separated identities. Even in Aine Akbari, Abul Fazl counted Marwari as the language of the area. By that time, Rajasthan literature had already been spread out in various genres. Dingle and Pingle were the famous style of Rajasthani poetry. Simultaneously, the work in prose was also flared up. In this period, Prithviraj Raso by Chandra Bardai, Achaldas Khichiri Vachanika by Garden Sivdas, Visaldev Raso by Narpati Vijay, Ranmal Chanda by Sridhar Vyas are counted as the remarkable work of Rajasthani literature. Most of the Rajasthani literature until end of the medieval period was in the form of Charit Kavya, Utsav Kavya, Niti Kavya, Shruti Kavya, and Stuti Kavya. Socio-cultural aspect of that time and bravery were the main concept of the literature.
About Charan Sahitya, it is said that it was very vibrant and powerful literature which played a very crucial role in shaping and molding the destiny of Western India and its heroes. Mostly Jain, Charan, Brahmin, Sant, and folk literature can be seen in this period in Rajasthani. Before India's independence in late 19th and early 20th century, the poets named Kriparam Khiriya, Bankidas Ashia, Opaji Ara were renowned for creating heroic poetry in Rajasthani. Simultaneously, Gavribai, Mancharam, Dinaji Lohar were known for their Bhakti Kavya. Here it must be noted that before independence, most of the Rajasthani literature was based on heroic poetry and Bhakti Kavya. In 14 and onwards, the territory, which was called Rajputana by James Todd, was also affected by national movement and revolutionary philosophers like Dayanand Saraswati and organizations like Prajamandal. A political consciousness had developed in people. Many small sub-territories in different states jumped into the freedom movement led by Gandhiji. Social and educational status of society were changing. National values had been inculcated in literature, and shadow of the Gandhian philosophy could be seen in the Rajasthani writing. From this traditional, from this transitional phase, two poets deserve the special notice, namely Suryamal Mishran of Bundi and Shankardan Samur from Bobasar. Both were the poets of the people, the nation, and the progressive modern poetry. In the true sense of them, it was a unique phenomenon in the contemporary literary history of the North Indian languages. In poetry, where on one hand, the impact of Romanticism could be seen due to the effect of Western literature, Chandra Singh Birkali, Narayan Singh Bhati, Kalyan Singh Shekhawat, Nanuram Sanskrita, but those whose poetic creations could be considered as beautiful work of Romanticism in Rajasthani in 20th century. On the other hand, due to paradigm shifting of social strata of Rajasthan, the progressive literature in Rajasthani also knocked the doors, and Revatan Charan, Ganeshi Lal Vyas Ustad, Manus Dipawat, Ganpati Chandra Bhandari, Paras Arora, etc. Several writers put words on paper for exploitation-free society and against the feudalism. In the mid-70s, some of the poets started writing on the pattern of Hindi. This came to be known as Nai Kavita. Changes in attitude of life, human values, environment, and individualistic tendencies were the main notes of this poetry. All traditional subjects of literature writing in Rajasthani were pushed away like bhakti, shaurya, heroic poetry, social ethics, and new challenges which were on threshold of the society took place. It was time when Rajasthani writing struggled to free from the set pattern of writing like Chand, Chappai, Khayal, etc. And the topics of these writings had been changed in being women, Dalit discourses, deprived classes. In prose, the routine way of writing was also squeezed in novel, drama, one-act play, satire, diary writing, travelogue, etc. rose on the horizon of Rajasthan literature. But that did not mean the Rajasthan literature has changed completely. In fact, the frames of literature were broadened. Way of writing and the central themes had become out of the box. Rajasthan, formerly known as Rajputana, had a typical feudal system from past thousands years. This blew out the proportion of British period when Jamindari was imposed by British Crown. Rajasthan was divided into princely states and Jamindari were the smallest unit of ruling hierarchy. Rest were subject who worked for Jamindars without any gain. It was a vicious picture of poverty and repression of commoners. Most of the writers were dependent upon states, so there was no voice for peasants, artisans, and economically poor classes. Caste system prevailed. At that crucial time, some writers begin their writing on cattle class instead of heroic poetry or bhakti kavya. In latter half of the 19th century, the great poet Bankidas Ashia wrote against the British Crown, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आहंस लीधा खेच उरा, धनिया मरे नदीदी धरती, धनिया उबा गई धरा. Bankidas Ashia composed
Dingle Geet Sampakaro against the exploitation of the common people by merchants. He said, Darsave Jagnu Daya Pap Uthave Pot, Hitme Chit Hatme Khatme Matme Khot, Thut Bajari Dharmari Hiye na Mane Heel, Man Chalaye Khapan Mahi, Kade Nafo Nukil, Man Lagade Palada, Tola Mahi Kapur, Urtaj Rakhe Dandiya, Padar Hantapur. A big name in Rajasthani poetry, Surimal Mission's Veer Sassai, we may see in the light of 1815 revolution, when poet says, Ila Nadani Apni Halariya Hularae Poos Sikhave Palane Maran Badhai Mai. Kesri Singh's Pingal lyrics, Udaraj Ujwal's Baniara Duha, Nathu Singh Mayaria's Gandhi Shatak, Shankardan Samor's Vakatro Bairo, Ganeshilal Vyas Ustad's poetry against the exploitation of peasants, Savai Singh Dhamoraj's Gandhi Gatha, Thakur Kesi Singh Bharat's Chetavnira Chungtia were the significant work opposing the British Crown and favored the freedom of India. About Shankardan Samor, renowned historian Dr. Hiralal Maheshwari says, Samor gave a clarion call to the nation against the British for their corrupt, selfish way and the dishonest motives. Naturally, we have a line of time, and as sir indicated me, so just I'm jumping on the last part of the paper, which shows the modern concept which is writing in Rajasthani in these days. At present in Rajasthani writing, Malchand Tiwari, Madhu Acharya, Bharat Ola, Rameshwar Godara were the names who are writing novel in different way of Rajasthani and storytelling. They are out of the way of storytelling of the ancient style. At present, in early 80s, I would like to say some of the indicated, I would like to indicate some of the Rajasthani stories, which are out of the social concepts, in fact, because social strata and social concept and social ethics, which was prevailing in the previous story writing, has came out, and the presently people are writing on the gray matter impact, means whatever we are thinking in our brain, and the present technical scenario which we can see in which we are living. The present writers are writing for that, as well as the two important things which I would like to indicate here, and that is women writing and writing for the deprived classes. Yes, sir, just 1 minute, I'm finishing. As Rajasthani society was in the strong part of feudalism in 100 years, so presence of the proletariat classes seen in the social structure, and it is the part of, I think, that matter of pride for all Rajasthani writers, that at present the people from deprived classes are writing, like Umed Dhania, Umed Gotwal, B.L. Paras, Shiv Bodhi, and the Peplo Chamar, Label, and Musan. These three novels and stories, which just published in these 10 years, belongs to the deprived classes, and the class which is on the एक हाशिए पर जिसे जिन classes को छोड़ दिया गया था, for that they are writing now. I'm thanking to the academy for giving me this good opportunity to Thank you. Do some and say something about the 70 years of this literature. Thank you very much. Thank you, Arvindji, and welcome, Mohanji. You are in time. Now, Menkaji is presenting the 7 decades of Sindhi literature. So, Mohanji is the convener of Sindhi Language Board. Oh, Menkaji. that makes me very nervous, Mohanji. So good morning, everyone. My original paper would have taken me at least 45 minutes to present, so I had already cut it quite substantially, and I will reduce it further, so which means I will drop many names and examples that I had included. But I would like to start by telling you about the time in 1998 when we released our book, Freedom and Fishers, published by Sahitya Akademi in Mumbai. And in the audience, there was a Marathi poet, Niranjan Uskare. We did not know him. But at the end of the event, he came up to us and he said that
He thought he was very culturally sensitive and aware, but he did not know that an entire community had suffered so much and never talked about it. And he was so shaken by this that he decided to, in fact, translate these poems again into Marathi, which was again published by the Sahitya Akademi under the title Falyacha Kavita. What happened is that for the Sindhi community, independence came at a very heavy price. It was a traumatic experience that led to a sense of cultural amnesia. It's neat to forget what they had gone through. The community had fought vigorously for Indian independence, but in the end, there was a profound sense of betrayal. Because when independence happened, all of Sindh went to Pakistan. And the Sindhi Hindu community found itself displaced and trying to find ways to survive in, they lost their homes, they lost their families. Many people lost everything that they had lived for and believed in. And in fact, Pritam Varyani, he told me, he was 17 at the time, and he was 83 when he told me this. He said his father had given him some harsh options at the time of partition. His father told him, change your religion, leave the country, or be killed. And Pritam Varyani pointed to this picture of the train, the iconic picture of an overcrowded train that we see, and it's become so much a part of our consciousness. And he said, what is a photograph for most people is something that I have lived through. And during this difficult time, Professor M.U. Malkani, president of the Sindhi Sahit Mandal, he was a rock for Sindhi writers because he used to organize weekly meetings in Mumbai. And Moti Prakash told me that he met his future wife, Kala Prakash, both were very great writers. He told me in an interview that we used to go to Kalyan camp in Mumbai and recite our poems and read our short stories. And people would come in large numbers to hear us. And the tragedy was that in moving from one refugee camp to another, Moti Prakash said he lost many of the poems that he wrote. And Mohan Gehani notes that in a survey of Sindhi literature, which was first published in 1954, and later in a book called Sindhi Sahitya Jojaiso in 1980, Professor M.U. Malkani had listed 35 active and important writers in and around Bombay who wrote numerous stories running into hundreds in those times. Meanwhile, there were literary and cultural groups being formed in other cities where Sindhis had a significant presence. And some of these included Ulhasnagar, Ahmedabad, Pune, Delhi, Jaipur, Ajmer, to name just a few. So what were the themes that these Sindhi writers focused on, and how has this changed over 75 years of independence? Writing in Sahitya Akademi's Indian Literature in 1993, Krishan Rahi, a first-generation post-partition poet, spoke of three trends: progressive, experimental, and modern or new. Later in 1998, Param Abhichandani wrote in the same journal in an article titled Sindhi Literature After Independence. Before independence, especially during the 40s, the romantic and progressive trends were dominant in Sindhi literature. Abhichandani also pointed out that many stories and novels pointed to the utter futility of the religious divide and the violence that ensued. And in those early tumultuous post-partition days, there was a great deal of nostalgia for the homeland. And I did have several examples, but I'll just tell you what Narayan Sham said. And he lamented, Allah, ye na the jo kitaban mein padje, the hui Sindh, a Sindhi varanji boli. Which in translation is, oh Lord, let it not happen that a day might come when we get to read only in books about Sindh and Sindhi language. And there was a lot of anger too. When we translated the Sindhi partition poems at the time in 1998, there was a poem by Parsuram Zia that we discovered in the voice of Pohu's mother. He said, Congress wala's necks should be broken. Those men have done us injustice. She's washing clothes at a refugee camp and in a rage. And in the Bhojwani, he said, you prostitute politics. You have destroyed the peace of nations.
These are some of the poems that we translated into English. But the resilience of the community also found expression in humor. So you had Vasudev Nirmal's wry comment on the potholes of Sindhu Nagar. You ride a camel without even mounting the animal. And the trauma of partition played a significant role in development of Sindhi fiction. Motilal Jotwani wrote in his introduction to Sindhi short stories, which he edited in 1985, the Sindhi short story before independence had not yet come of age. It was after partition that the Sindhi short story was shocked into adulthood. And one of the most famous examples is Sundari Uttamchandani's short story Buri. And she talks about a woman making this dignified effort to eke out a living selling papads. And that there are several others that people wrote at that time. Professor Ram Panchwani wrote a story called Mohammad Gadi Jawaro, which speaks of his real life experience of being saved during communal riots by a Muslim coachman. However, Sindhi literature has by no means been restricted to issues of partition and survival. The Cold War, which began after World War II, made an impact with themes of absurdity, alienation, and a sense of meaningless existence. Moving away from more social contexts, the new literature became personal, delving into the psyche of human nature. So there was Lakshmi Khilani, for instance, who wrote about a character using his own mother as a drug courier, and he refuses to recognize her when she's caught. And contemporary Sindhi writers, both in the realm of fiction and poetry, have gone beyond issues of partition. Speaking of Nanjaveri's work, for example, in Story of Word, published by Sahitya Akademi in 2019, Vinod Asudani says, the poet is intensely aware of his cultural past. At the same time, he is also conscious of his present circumstances. He knows that globalization has left geographical and cultural boundaries blurred. In an interview with me in 2011, which was first quoted in News India, Vimi Sadrangani, she was a second generation post-partition writer. She pointed out that while Sindh and Sindhis would always be intrinsic to this kind of writing, it has moved beyond partition themes. Then again, in pre-partition time, women writers were few and far between. And I remember speaking to Popati Hiranandani. This was an interview published in Poetry International Web 6 years after she passed away. And she said that Sindh was predominantly a Muslim province, and there were many restrictions on women. So she talks about the age of 13 or 14. She asked her mother if she could learn meter, rhythm, or rules of composing a ghazal or nazm from Lekra Aziz, who was a relative. And the mother forbade her. She said that, you can't sit with a male. It's not done. And Hiranandan pointed out that, in fact, Sindhi poetry in those days was composed according to Persian prosody norms, which meant that learning a variety of metrical forms. And this meant that you would find very rarely, she said, Hindu girls could not sit with males, and that is why you will rarely find a Sindhi woman poet. But after partition, many women writers made significant contributions, bringing feminist perspectives into their writing. They included Tara Mirchandani, Sundari Uttamchandani, Kala Prakash, Popati Hiranandani, Paru Chola, to name just a few. And Popati Hiranandani, of course, was the most fiery of them all. She had a very famous poem called Dun Heta Dabli, which is the box below the navel, which caused quite an uproar, and also appeared in a major English anthology by Arlene Said. So this strict metrical forms, the systems that excluded women, they took their forms in a variety of ways. So there were ghazals, there were dohas, there were baits, there were vais, there were rabai. But later, as the poets began to experiment, they started using free verse and inventing new forms, and doing some really interesting things, because Prabhu Wafa in 1980, he came up with this new form of poetry in a book published by Sahitya Akademi, in which he just had 5 lines called the Panchakada.
And then there were versions of haiku, which is 3 lines. Teru is what it was called. And Hari Dilgir was one of the people who wrote like that. Inder Bhojwani went even further. He came up with the Tanha, which is a poem that consisted of just a single line. And Gopal Thakur went even further. He came up with the Chawakra, which is a poem reduced to just 4 words. So if any evidence was needed that poets were getting used to the fast pace of living in Mumbai, it was certainly these examples of the changed style of writing. What of the publishing during these times? So the strange thing is that despite a dwindling readership, Sindhi books have continued to be published in India, which is very heartening. In 2011, Professor Satish Rora told me in an interview that as many as 150 books written in Sindhi were being published every year. And this is because there was some institutional support in the form of organizations like National Council for Promotion of Sindhi Language, which also buys books in bulk. I'm skipping quite a bit of my paper. Sahitya Academy, of course, adopted Sindhi in 1959, and that has played a key role in publishing translations, poetry, short stories, drama, and monographs of Sindhi writers under its Makers of Indian Literature series. One community effort that I would like to talk about is the Indian Institute of Sindhology in Adipur, because this is it was a labor of love. Sindhi writers like Lakshmi Khilani, Preetam Varyani, Moti Prakash, Kala Prakash, Dr. Rora, they've given their lives for this, and they maintain a library that includes some 30,000 books on Sindh. They've also published more than 50 books. And today, in his 80s already, okay, sorry, in his 80s, he continues to manage the activities of this organization. Now, I'm just going to quickly run through. I just want to make one major point that while one thing that has changed is that in the 1980s or 1990s, very few people were aware or were talking of partition. But today there has been a resurgence. Today there are people who grew up not learning Sindhi. My generation, we grew up not ever speaking Sindhi, because we suddenly realized that there was this whole cultural heritage that was being lost at the time of partition. And this resurgence, and the people who lived through partition were also no more with us. So there's been this whole resurgence. I had several examples, but I'll tell you a few names. Saz Agarwal, Nandita Bhavnani, Subhadra Anand has come out with a novel now, Koki. There are several people doing various things in different directions. Sushil Gajwani organizes poetry events called Roots, under the title Roots. I just want to, also Asha Chand is a name I cannot leave out. And they've all realized that there was an issue with the script. They've realized that whatever language, whatever script Sindhi can be preserved in, it must be preserved. So whether it is Devanagari, Perso-Arabic, Romanized script, people are actually coming together to bring out books and doing translations in different scripts. And I just want to end. So I am optimistic. People might think this naive, but I do believe there is a fundamental change happening. And I just like to end. It's not going to be immediate. Of course, there are problems. There are issues with writing, with translation, with funding, a lot of things. But I will tell you one thing, that in 2011, Vasudev Mohi told me that Sindhi literature was in a coma. And today I believe there is perhaps a slight fluttering of the eyelids that suggests life may be returning. And at the very least, the fears that Sindhi intelligentsia had at the time of partition, that Sindhi language and literature would face extinction, have been belied. Thank you very much. Thank you, Menkaji. It was very nice presentation, and we hope that we'll come out of coma. Yeah. Now, may I request Kiranji, Kailashji, for the Marathi literature's journey of 7 decades. Namaskar.
विद्वत मंच और आप सभी विद्वतजनों, विगत 7 दशक में मराठी साहित्य का विकास के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। एक मौलिक और समृद्ध परंपरा से युक्त मराठी साहित्य पिछले 7 दशकों में मराठी साहित्य में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इस अवधि के दौरान जीवन के सभी क्षेत्रों के रचनाकारों ने ध्यान आकर्षित करने वाले साहित्य का सृजन किया। यह साहित्य हमारी जीवन स्थितियों का चित्रण, नए प्रश्न प्रस्तुत करने के साथ इतिहास की पुनर्खोज करता है। खास तौर पर 1960 के दशक के मराठी साहित्य में दलित, पीड़ित, वंचित और बहुजन समुदाय के लेखकों और कवियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस अवधि में मराठी साहित्य विकेंद्रीकृत हुआ और अधिक बहुलवादी, अधिक बहुजनवादी और लोकतांत्रिक बना। स्वाभाविक रूप से यह साहित्य बहुजनों के जीवन, उनके सुख दुख, उन बहुजनों का जीवन और उनके सुख दुख को चित्रित करता है, प्रतिबिंबित करता है। इस काल में मराठी साहित्य जहाँ सामग्री की दृष्टि से समृद्ध हुआ, वही शैल्पिक दृष्टि से भी विकसित हुआ। उपन्यास, कहानी, कविता और नाटक की साहित्यिक विधाओं पर व्यापक दृष्टिपात डालने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि पिछले 7 दशक में मराठी साहित्य की अभिव्यक्ति प्रगतिशील और जीवन उन्मुख साहित्यिक परंपरा की है। कुछ घटनाओं ने मराठी साहित्य के विकास में योगदान दिया है, जिसमें 1947 में मिली भारत की स्वतंत्रता के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा अपने अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म को अपनाना, संयुक्त महाराष्ट्र के गठन के लिए आंदोलन, भाषिक प्रांत रचना के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार और इससे उत्पन्न आत्मचेतना, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की स्वीकृति शामिल है। इन सभी का प्रभाव बीते 7 दशकों में मराठी साहित्य में देखा गया है। उपन्यास के बारे में देखें तो स्वाधीनता के बाद के मराठी उपन्यास मानव जीवन के अनुभव के प्रति अधिक से अधिक ईमानदार हुए। यह अपने कथ्य और शिल्प दोनों में बदलाव को अपनाकर समसामयिक बना। विशेषकर 1960 के बाद ग्रामीण, दलित, नारीवादी, आदिवासी, महानगरीय साहित्यिक प्रवृत्तियों ने आकार लिया और इन्हें लेकर व्यापक मात्रा में उपन्यास लिखे गए। आजादी के बाद के दौर में मराठी उपन्यास मनोरंजन और भड़कीले आदर्शवाद से आगे बढ़कर वास्तविकता बन गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में मराठी उपन्यास के विकास को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। 1960 तक का काल, 1960 से 1990 तक का काल और 1990 के बाद निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाने के बाद का काल। इन 3 कालखंडों में मराठी उपन्यास के कथ्य और शैली में परिवर्तन आए हैं। ग्रामीण उपन्यास गांव, किसान और कृषि के संबंध में मानव जीवन का चित्रण करने वाले उपन्यास को ग्रामीण उपन्यास कहा जाता है। आजादी से पहले लिखे गए बलिबा पाटिल और पिराजी पाटिल के मुकाबले बीते 7 दशक में ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले मराठी उपन्यास काफी बदले और विकसित हुए हैं। ग्रामीण साहित्य अब न सिर्फ यथार्थ का चित्रण करता है, बल्कि उसका विश्लेषण करके वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास भी करता है। वह स्पष्ट रूप से बताता है कि उस यथार्थ के लिए जिम्मेदार कौन है। नए ग्रामीण उपन्यास सीधे साधे अनुभवों को छोड़कर जीवन अनुभवों की जटिलताओं को उजागर करते हैं। उद्धव सेल्के से लेकर मनोज बोरगावकर तक के उपन्यासकारों ने मराठी ग्रामीण उपन्यास को समृद्ध किया। उद्धव सेल्के, जिसकी धग उपन्यास, और मनोज बोरगावकर की नदिष्ट के उपन्यासों का नए ग्रामीण प्रतिनिधि उपन्यासों के रूप में उल्लेख करना आवश्यक है। मराठी के दलित लेखकों ने अपने साहित्य के माध्यम से दर्द, विद्रोह, अस्वीकृति, मानवतावाद, जातिवाद, अस्पृश्यता, अत्याचार आदि का यथार्थवादी चित्रण किया है। यह लेखक अपने उपन्यासों के माध्यम से उस जीवन को प्रकाश में लाए जिनके बारे में यह विश्व अनभिज्ञ था। अण्णा भाऊ साठे ने मराठी उपन्यासों को जुझारू और विद्रोही नायक नायिकाएं दी। बाबूराव बागुल से लेकर सुरेश पाटोले तक के उपन्यासकारों ने मराठी में दलित उपन्यासों के आंगन को समृद्ध किया। ये ऐसे उपन्यास है जो बीते 7 दशक में दलित उपन्यासों की प्रगति दर्शाते हैं।
आदिवासियों के जीवन को चित्रित करने वाले भी उपन्यास मराठी में इस समय लिखे गए हैं। आदिवासी उपन्यासों में आदिवासियों का अज्ञात जीवन, उनका वंचित जीवन, उनकी समस्याएं और उनकी प्रकृति सन्मुख संस्कृति मुख्य रूप से देखने को मिलती है। स्वातंत्र्योत्तर कालखंड में सभी मूल जनजातियों को आदिवासी कहा जाने लगा। शिक्षा के प्रसार के कारण आदिवासियों को चित्रित करने वाले उपन्यास वास्तविकता बन गए। अनंतराव पाटिल से लेकर माधव सरकुंडे आदि ने आदिवासी जीवन को चित्रित करने वाले उपन्यास लिखे हैं। आदिवासी उपन्यासों पर विचार करते हुए अशोक पवार का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए, जिसने बेलदार इस खानाबदोश के जीवन और कष्टों को बड़ी शिद्दत के साथ प्रस्तुत किया है। आशा बगे, सानिया, मेघना पेठे आदि ने नारीवादी उपन्यास लिखे हैं। इसमें भूमि, त्रिदल, मनस्विनी, झुंबर, धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, आकाश, सेतु, उत्सव, स्थलांतर, अवकाश, आवर्तन, नाथी चरामी जैसे उपन्यास समाविष्ट है। ऐतिहासिक या जीवनी संबंधी उपन्यास, ऐसे उपन्यासों के रचयिताओं में वी.स. खांडेकर, विश्वास पाटिल, रवींद्र शोभणे आदि उपन्यासकारों का उल्लेख आवश्यक है। ययाति, श्रीमान योगी, स्वामी, बखर एका राजाची, पानीपत, महानायक आदि स्वातंत्र्योत्तर काल के ऐतिहासिक या जीवनी परक उपन्यास है। क्षेत्रीय उपन्यास, जिस उपन्यास में विशिष्ट भूभाग, प्रकृति विशेष, भाषा, सामाजिक जीवन, आर्थिक चित्रण, सांस्कृतिक जीवन, राजनैतिक पृष्ठभूमि आदि कारकों के आधार पर समुदाय की आवाज सुनी जाती है, उसे प्रादेशिक या क्षेत्रीय उपन्यास कहते हैं। श्रीना पेंडसे के उपन्यास को क्षेत्रीय प्रादेशिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है, जबकि वेंकटेश माडगुलकर का उपन्यास बनगरवाड़ी भी क्षेत्रीयता को दर्शाता है। महानगरीय उपन्यास भी लिखे गए हैं। महानगरीय उपन्यास महानगरीय जीवन के विभिन्न स्तरों से संबंधित है। अण्णाभाऊ साठे, सुभाष भेंडे, ह.मो. मराठे, संजीव खांडेकर, भाऊ पाध्ये, प्रभाकर पेंढारकर, अनंत कदम, अरुण साधू, जयवंत दलवी, मधु मंगेश कर्णिक, अनंत कदम, ल.ना. केरकर, विश्वास पाटिल के उपन्यासों में सूक्ष्मता से महानगरी का चित्रण आया है। अन्नाभाऊ के उपन्यास चंदन से लेकर कोंडी जैसे उपन्यास झुग्गी झोपड़ियों में हाशिए पर पड़े सामाजिक जीवन को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण उपन्यास है। अण्णाभाऊ साठे भारतीय महानगरीय साहित्य के संस्थापक माने जाते हैं। विश्वास पाटिल के उपन्यास लस्ट फॉर लालबाग में लालबाग की गगनचुंबी इमारतों के नीचे दबे लाखों मजदूरों की कराह आह सुनाई देती है। विज्ञान उपन्यास, इस काल में विज्ञान के तथ्यों और विचारों पर आधारित उपन्यास मराठी में लिखे जाने लगे। मानवीय दृष्टिकोण से उपन्यास का सृजन हुआ। प्रेषित, वामन परत न आला, सुपर क्लोन, वारस आदि जयंत नारलीकर, पंडित विद्यासागर, निरंजन घाटे के उपन्यासों के नाम लिए जा सकते हैं। उपरोक्त वर्गीकरण के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकारों का स्वतंत्र रूप से विचार करना भी अनिवार्य होगा। इनमें बालचंद्र नेमाडे, विश्वास पाटिल, रंगनाथ पठारे, राजन गवस, भारत सासने, प्रवीण दशरथ बांदेकर, राजन खान, श्याम मनोहर और यहाँ श्रोताओं में बैठे हुए आसाराम लोमटे भी शामिल है। आजादी के बाद के मराठी कहानियां, आजादी के बाद की मराठी कहानियां विशेषकर 1960 के बाद ग्रामीण कहानियां, दलित कहानियां, आदिवासी कहानियां, महिलाओं की कहानियां, वैज्ञानिक कहानियां आदि में विभाजित दिखाई देती है। स्वाधीनता के बाद के काल में मराठी कहानी का विकास गहन और विविधतापूर्ण रहा है। उद्धव सेलके, शंकर पाटील, रारम बोराडे, अप्पासाहेब खोत, आसाराम लोमटे, अशोक कोळी, प्रतिमा इंगोले, सदानंद देशमुख आदि कहानीकारों ने सशक्त ग्रामीण कहानियां लिखी। वही अण्णाभाऊ साठे, बंधू माधव, शंकरराव खरात, नारा शेंडे, बाबूराव बागुल, केशव मेश्राम, वामन होवाल, योगीराज वाघमारे, अविनाश डोलस, योगेंद्र मेश्राम, माधव कोंडविलकर आदि ने अपनी कहानियों में दलितों के जीवन का वास्तविक चित्रण किया। मराठी भाषा में नारीवादी लेखिकाओं ने लिखी कहानियां अलग अलग और विशेषताओं से परिपूर्ण है और वो कहानियों में महिलाओं के सामाजिक और भावनात्मक जीवन को भी वो कहानियां चित्रित करती है। स्वाधीनता पूर्व युग में लिखी गई कहानियों से यह कहानी आत्माभिव्यक्ति और शैली की दृष्टि से बहुत आगे निकल चुकी है। प्रतिमा इंगोले, रेखा बैजल, आशा बगे, सानिया, मेघना पेठे, अरुणा ढेरे, निर्जा, प्रिया तेंदुलकर आदि श्री कहानीकारों का कहानी लेखन महत्वपूर्ण है। जयंत नारलीकर, बाल फुंडके, निरंजन घाटे से लेकर मेघश्री दलवी तक आदि ने विज्ञान कथाएं लिखकर मराठी कहानियों को एक और पहलू दिया है। विविध जीवन अनुभवों की मराठी कहानियों की गैलरी जो ऐसे किसी भी वर्गीकरण में फिट नहीं बैठते हैं, उसमें
श्रीना पेंडसे, शांताराम, सखा कलाल, जी.ए. कुलकर्णी, रंगनाथ पठारे, भारत सासने, राजन गवस, रविंद्र शोभने, राजन खान आदि की कहानियों से समृद्ध है। आजादी के बाद का मराठी नाटक। मराठी नाटकों का सफर विष्णुदास भावे से शुरू होकर बीते 7 दशक में कई गुना विकसित हुआ है। विश्राम बेड़ेकर, आचार्य आत्रे, वी.वा. शिरवाडकर द्वारा लिखे गए नाटक काफी लोकप्रिय रहे। पु ल देशपांडे ने अपने नाटकों तुझे आहे तुझपासी, सुंदर मी होणार, ती फुलरानी में दिखाया कि हास्य समाज की पीड़ा को कम करने में उपयोगी है। वसंत कानेटकर ने अपने नाटकों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया। उनके नाटकों ने पहले की ऐतिहासिक और संगीत शैलियों को आधुनिक बनाया और व्यावसायिक थिएटर को पुनर्जीवित किया। विजय तेंदुलकर को तो नवनाट्य का चॅम्पियन कहा जा सकता है। उनके माणूस नावाचे बेट, गिधाडे, शांतता कोर्ट चालू आहे, कावळ्याची शाळा, नारीवादी दृष्टिकोण से लिखा गया उनका नाटक सखाराम बाइंडर विषय और तकनीक की दृष्टि से एक अभिनव और लोकप्रिय नाटक है। शन्ना नवरे, विद्याधर गोखले, पुरुषोत्तम दारव्हेकर, चिंत्र्य खानोलकर के नाटक भी प्रसिद्ध रहे। महेश एलकुंचवार की वाडा चिरेबंदी, मग्न तळ्याकाठी, युगांत प्रसिद्ध त्रिनाट्य धारा है। दत्ता भगत के आवर्त, वपू काले के रात्र नको चांदण्याची, पार्टनर, रारम बोराडे के आम्ही लेखी कष्टकऱ्यांच्या, अजित दलवी के डॉक्टर तुम्ही सुद्धा, प्रशांत दलवी के चार चौगी, इंदुमती जोंधळे के फुलझड़ी, रेखा बैजल के आकाशवड, ज्योत्सना देवधर के कल्याणी नाटक ने मराठी थिएटर को जीवंत बनाए रखा। सतीश आलेकर के नाटकों ने मराठी प्रयोगात्मक रंगमंच में एक नया आयाम दिया। गोपू देशपांडे द्वारा लिखित सत्यशोधक, विश्वास पाटिल के पानीपत उपन्यास पर आधारित 2 अंकों में लिखा गया नाटक रणंगन और बाबा साहब पुरंदरे द्वारा लिखित नाटक राजा शिव छत्रपति विशेष रूप से लोकप्रिय है। तो जाते जाते मराठी कविता के बारे में 1 मिनट में मैं कुछ पेश करूंगा। आजादी के बाद की विषय और शैली की दृष्टि से मराठी कविता का काफी विस्तार हुआ है। आजादी के बाद महाराष्ट्र के गांवों से शिक्षित युवाओं का पहला जत्था तैयार हुआ। इस पीढ़ी के युवाओं को एहसास हुआ कि प्रचलित साहित्य और कविता का जीवन उनकी वास्तविकता नहीं है, बल्कि यह दूसरों के अपर्याप्त अनुभव से आता है। ग्रामीण कविता की एक धारा इस प्रबल भावना से सक्रिय हुई कि हमारे पास कहने के लिए इससे कहीं अधिक सच यथार्थ है। आनंद यादव, विठल वाघ, नाधोन महानोर से कल्पना दुधाल तक आदि कवियों ने ग्रामीण कविताओं के आंगन को गुलजार कर दिया। ग्रामीण कविता की यात्रा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर हो रही है। 1960 के बाद दया पवार, यशवंत मनोहर, वामन निंबालकर, अर्जुन डांगले, नामदेव ढसाल, हीरा बनसोडे ने दलित कविता की ताकत को दुनिया में प्रकाशित किया। मराठी कविता में मनोहर ओक, सतीश कालसेकर, वसंत गुर्जर, भालचंद्र नेमाडे, तुलसी परब, अरुण कोलटकर, दिलीप चित्रे, वसंत आबाजी डहाके, गुरुनाथ धुरी की कविताओं में प्रयोग धर्मिता की विशेषता है। स्वाधीनता के बाद नव कविता में भी बहुत बड़ा काम हुआ है। उसमें दासु वैद्य, श्रीधर नांदेड़कर जैसे कविताएं लिखते हैं और महिला कवयित्रियों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। इंदिरा संत से लेकर अंजलि कुलकर्णी का अनुराधा पाटिल, कल्पना दुधाल तक। आदिवासी कविता में देखा जाए तो वहाँ भी भुजंग मेश्राम से विनोद कुमरे, तुकाराम धांडे तक, और अभी अभी मराठी में गजल लेखन की भी अच्छी धारा चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस प्रकार पिछले 7 दशकों में मराठी भाषा में उपन्यास, कहानी, नाटक और कविता की साहित्यिक विधा में अच्छी खासी वाटचाल सफर हुई है। धन्यवाद। Thank you very much, Kailash ji. And may I request Vidya ji? She will be the concluding speaker. I'm the last person, so I have the onus of letting you go as early as possible for the lunch. So I'll keep my paper very short. I would like to thank the organizers and today's chair for giving me this opportunity. And without taking much time, I would like to begin with my paper. The orality plays a central role in Indian civilization, particularly within the indigenous or tribal cultures. Through oral narratives, these cultures preserve and transmit their cultural wisdom, knowledge systems, and history to subsequent generations via tales, rituals, performances, chanted narratives, etc., etc.
The narratives passed down through these generations deeply anchor their existence, their connections with the land and environment, their survival wisdom, and their ethical frameworks of sustainable cohabitation, binding them as a community or a group. Goa's indigenous tribal population is no exception to this, boasting rich history of oral traditions through songs, dance, folk performances, and festivities, offering comprehensive insights into Goa's past and history. This paper is a working paper which will try to attempt to provide a brief overview of the transition of the indigenous Adivasi narratives from the oral to the written literature in post-liberation Goa since 1961. I think Madam Budkule has done a beautiful job of and has made my paper a little easy because she has explained the whole context of the development of the Konkani language, the kind of the problems that it has faced. So I think I will skip most of the issues that may have repeated the same thing. So through this paper, I intend to present my initial observations of the identity issues addressed by the Adivasi writers of Goa and the emerging cultural hybridity within which their voices navigate the issues of heritage. To begin with, I'll just quote Homi Bhabha's, it's not a quote, it's a rewriting. It's Homi Bhabha's concept of the third space refers to the space that challenges traditional binary divisions and allows for cultural hybridity and negotiations. Bhabha's theory emphasizes the importance of this third space in communication, translation, and cultural identity. The third space is characterized by fluidity, vagueness, and the blending of different cultural elements, enriching experiences and interpretations while also posing the challenges to communication due to the complexity and the potential of misinterpretations. This is somewhat the case of the Adivasi literature, which I'm going to talk about. But before I dwell upon the Adivasi literature, let me introduce you to the socio-political position of the Goa's Adivasi community. The four main communities are Gauda, Kulmi or Kunbi, Velips, and Dhangars. They are identified as the tribal communities of Goa. They're said to belong to the Proto-Austral race, and they were the first settlers of the western coast and Konkan region. During the Portuguese rule of Goa, the Gauda tribe got split into a sizable number of Gauda population were converted to Catholicism in 1620 AD. However, in 1928, a segment of the Christian Gaudas was reconverted back to Hindu faith under the initiative of Masurkar Maharaj of Bombay, dividing the Gauda community into tripartite social grouping of Hindu Gaudas, Christian Gaudas, and Nava Hindu Gaudas. Thus, one finds two distinct cultural expressions in the Gauda community: Indo-Portuguese cultural influences and the Hindu religious influences in the Gauda and Velip communities. Both these communities have a rich heritage of oral traditions in folklore, which have been meticulously studied and documented by noted folklorists and scholars of Goa. One of the main issues grappled by the Gauda Kunbi Velip community was the acceptance of the status as Adivasi under the Scheduled Tribe Act of Government of Goa. That has brought upon them an identity crisis, which is clearly reflected in their contemporary writing and literature. Coming to the identity crisis among the tribal community of Goa. In her online essay, To Be Gauda or Not to Be Gauda, Favita Dias, a postgraduate student seeking teaching post at Goa University Department of Sociology, penned her experience of applying for a ST certificate from a Talati office. She states that she had grown up in the city area of Kurtorim of Salsett district of South Goa without any knowledge about her caste or tribe status. But when she was keen to apply for a teaching post at the Department of
sociology, she was advised to apply for the post through the ST category by acquiring a caste certificate. She writes, and I quote, "That evening, I asked my mother what our caste was. My mother was startled. Why do you want to know about a caste? Who asked you? You shouldn't believe in all that." She went on and on, but finally she did tell me that we belong to Gauda community. And that too just because my younger cousin laughed and said, "Ami Quinchi, Ami Gaudi," meaning we are nobody else but Gaudas. I didn't know what to say to my friends. I wondered if I could go back and tell them the truth, but then I dropped the idea of I felt uncomfortable about revealing the truth. Diocese unease in claiming the Adivasi status must be understood within the political environment and prevailing narratives of post-liberation of Goa. I'm skipping some of the points for the sake of time. The process of recognition of the Goan tribal under the Scheduled Tribe Act was restarted in 1980s under the political movement led by Catholic priest Father Joaquim Fernandez. After multiple political rallies and revolts, the SC/ST Amendment Bill was passed in 2002 and ratified in 2003 to include Gauda, Kunbi, and Velibs into the scheduled tribe. However, the Dhangars were excluded. Thus, 2003 becomes an important marker among the Adivasi communities of Goa. Henceforth, I will be referring to this date as pre and post 2003 period of literary production of tribal or Adivasi writings of Goa. Meanwhile, for Adivasi authors who produced their literary works between the period of 1961 to 2003, the dilemma of whether to acknowledge themselves as Adivasi or not remained problematic. Although their silence about their identity was apparent, their writings seemed to seek answers and address issues that haunted their community. Many authors, poets, dramatists like Avinash Kunkolikar, Uday Chepo, Gaunkar, Sunil Palkar, I'll skip the names, and many more significantly contributed to Goa's literary repository as a Goan author rather than tribal or Adivasi writers. These authors write in Marathi, Konkani, as well as, that is, Konkani in Devanagari, as well as in Roman script and in English language. Some of the writers, tribal writers such as Pandurang Gaude, Ramnath Gaude, and Vinci Kodros have also been recognized for their literary contribution by Sahitya Academy and have received awards for their work in literary translation and children's literature in 2014, 15, and 17 under the general category of the Konkani authors from Goa, as there is no separate category assigned to them as tribal authors. To the best of my knowledge, that's what I was communicated. The question is, while reading their works, how does one approach their literature? As a tribal writer, or a Konkani writer, or a Goan author? For any writer, identity is a key factor for representing his or her politics. Who is writing, and for whom are they writing, and why are they writing? I'll briefly enumerate the works of 4 authors just for the sake of time, their politics of writing, and include a group of young university-educated women scholars who fall within this category of pre and post 2003 category. And therefore, their writing shows a distinct concern over the issues of identity. I begin with Pratap Singh Velip Kankar, an first-generation Adivasi writer. Velip Kankar acquired a formal college education in BA LLB and retired as an additional district magistrate. He has written 6 books till date, mostly in a non-fiction category since 1988. Most of his revolves around the research to discover the origins of tribal communities across India. In his 2 books, The Kulmis of India, 2006, and All India Kurmi Samaj, 2013, both written in English, Velip Kankar tries to look for cultural similarities among the various Kurmi communities spread across India. He probes the sources from Vedic Puranic literature,
inscriptions, descriptions, seals, legends, customs, traditions, to write a counter narrative of the Adivasi history. He explains the nuances of the Konkani proverb, Kutte Marun Muthi Jodli, that is, the right of tilling of the land in Goa was given to Gaudaveri community by King Bali. He has also given an account of various local community myths, rituals, legends of King Bali, which is an interesting folklore information for the first time given. The next author is 55-year-old Ramnath Gajanan Gaude, a fiction writer hailing from Mole, a deep forest area known for tribal habitation, has a master's degree in art. He has 16 books to his credit that include short stories, fictions, children's literature, and dramas. A keen observer of life, Gaude prefers to call himself a storyteller, as his fictional narratives are about the people and incidences that he has observed around him. Gaude, along with Velip Kankar, does not claim his Adivasi heritage, but his writings reveal his sympathies are with the poor and the deprived section of the society. Gaude's lucid style of writing makes his story a canvas of depicting universal human emotions. His short story, Katha Eka Sandasachi, The Tale of a Toilet, finds a place in the anthology of the greatest Indian short stories ever told, edited by Arunav Sinha, Aleph 2013, along with the writings of the national laureates like Sharat Chandra Chattopadhyay, Ismat Chugtai, and Rabindranath Tagore. It speaks of his mastery as a storyteller, crossing the boundary of confining labels and tags set by cultural and political hegemonies. Tale of a Toilet revolves around an illiterate tribal man, Somulo, who is trying to seek government funds to build a toilet in his house. Corrupt government officials and the village sarpanch are bent on humiliating the protagonist for his lowly status and naivety. Gaude portrays conditions under the tribal communities of Goa exist, the pathos of their life, their struggle to understand the new urbanized world around them. The motif of toilet in the short story becomes a metaphor of the otherness. Velip Kankar and Gaude belongs to the era of pre-2003 Adivasi writers who are silently negotiating the concerns of Adivasi communities. They are also the founding members of the literary platform for Adivasi writers called Goa Adivasi Sangh, founded recently, that is 2021. Having realized that the tribal writers have been writing on a variety of social issues, they hardly get proper representation of the platforms or the acknowledgement from the government. So, okay, I'll just skip the whole thing. I think this will be a more important writing back. In the non-fiction text on the post-colonial title, The Empire Strikes Back, Theory and the Practice in Post-Colonial Literature, assured the concept of write back, a method of post-colonial rewriting as a part of the counter-discourse. Into post-2003, in Goa, armed with academic rigor and boosted by the acknowledgement of the constitutional rights, young Adivasi writers and scholars from Goa have embraced their tribal identity and are acknowledging their membership with confidence. They are now ready to contest and challenge the narratives of the discrimination handed down to them. The blog, How Code or Who Am I? Researching the Self, created and curated by Professor Alito Siqueira, Professor of Sociology, which was intended as an academic exercise for university students to open up the process of discovery and recovery from the hidden injuries, while recreating one's identity as one learns. Priyanka Velip, in her essay titled Velip Writes Back on the blog How Kon, writes, Priyanka Velip, am confused by answers to the question how kon, me kon, and who am I? These are three ways of asking one question, and I would expect one answer even though I use three different languages to express myself. However, in my case, this is not so. In each language, I get a different answer.
Really, a university graduate, now a PhD scholar, well versed in 3 different languages, Marathi, English, and Konkani, tries to grapple with the Velip identity, classified as tribals or Adivasi today. She's conscious about how she has othered through the various writings about her community, but what concerns her is the kind of writing that represents her community. What if after 20 years, a child of this changing community asks for our past? What kind of customs, rituals, dress, food habits were there? And by that time, we could possibly have lost our oral history, and the last source would be the only books. Then what? If parents told their children to refer to the history books, what impression would child have regarding his or her own community? She explains that although their Adivasi identity, their dance, their clothing, their unique way of wearing sari called as detli has been romanticized for the benefit of Goan tourism, she fears that when the cultural symbols and rituals are used as a form of entertainment for tourist gaze, as an object of study representing exotic cultures of the past, the community might lose the significance and control over its ownership of the cultural material and associate knowledge, in turn alienating them from their own roots. Okay, I'll conclude. Thank you. Okay, I'll. Okay. Thank you very much. Yes. Please. Last year, we have done whole seminar. Just consult 2018 2018 में हमारा लेटेस्ट जो है इशू सरकारी सारा पोस्ट has been covered. हमारा सारा जो है ना कंप्लीट पिक्चर है because ये थोड़ा ठीक है आपका बहुत अच्छा था इट्स गुड 15 मिनट में हम सब कुछ नहीं दे सकते बट कंसल्ट दैट उसमें हम आत्मकथा कहानी हमारा जो कहानी उपन्यास है our story and novel is very and poetry all are very strong. Thank you. उसमें आपका बहुत कुछ मतलब रह गया है बहुत कुछ रह गया वैसे. Yeah. Thank you, Mohanji, for their intervention. I will also do some Samvedhan because we're running late. Thank you. We have such a illustrious panel and so many languages to cover, but I thank all the learned panelists to be very brief. As we in Sanskrit say, Ardhamatra Laghavena Putrotsavam Manyante Vayyakarana. कुछ थोड़ा भी लाघव में अगर हम कह सकते हैं तो हमें पुत्रोत्सव का आनंद होता है. तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे वक्ताओं ने, हसीद भाई ने शुरू किया गांधी से, अभी मैं कह सकता हूं कि मोहन से मॉडर्निटी तक हम आ गए और आधुनिक नगर कविताओं की जो अवतरण हुआ गुजराती में उनसे शुरू करके किरण जी ने तो हमको वो बाभा बोरकर की जो स्पिरिट थी उनका भी परिचय करवाया. रिफॉर्मिस्ट लिटरेचर कैसा होना चाहिए उनकी भी झांकी हमको मिली. अरविंद जी ने एक बहुत लाघव में मारवाड़ी, राजपूताना और पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस कैसे, आशिया जी अपने आई थिंक आपके परिवार के ही होंगे शायद, लेकिन उन्होंने जो लोक कलाएं विकसित करके राजस्थान के साहित्य को समृद्ध किया, इसकी बहुत बड़ी परंपरा की आपने बहुत लाघव में बात की. मेनका जी ने ऑफ कोर्स आपने बताया, लेकिन आई शुड से दैट फ्रीडम एंड फिशर्स वाज अ ग्रेट थिंग एंड द ढाई लाइफ, वो जो द what we can say split life and the values that has been described, and the 3 major conventions, the progressive literature, the experimental and the modernist, that has really given great focus
on how Sindhi literature has progressed. Kailash ji, thank you very much for your दलित ग्रामीण उपन्यास। विशेष करके आपने महानायक के लेखक हमारे विश्वेश्वरराव जी पाटिल और सखाराम बाइंडर का जो ड्रामा वर्जन है, दैट हैज बीन वेरी पॉपुलर इवन इन गुजरात। Like Pula Deshpande has already crossed the परिधि of मराठी लिटरेचर। लोग पूरे देश में जानना चाहते हैं कि पुल देशपांडे क्या कहेंगे, पुल देशपांडे का क्या है। सो ये सब होने के बाद विद्या जी ने सा विद्या या विमुक्त हमको एकदम ब्रीफली उन्होंने ओरल ट्रेडिशन का बात बताया, और जैसे कि पोर्टुगीज वर्सेस कोंकणी का बहुत इमोशनल प्रेजेंटेशन जो किरण जी ने दिया था उसका सप्लीमेंट किया। सो थैंक यू वेरी मच ऑल द पैनलिस्ट एंड द एकेडमी for giving us this opportunity. Though the subject was 7 decades, it was a great examination for all of us, and we were all on toes, and that is what the literature gives the capacity to an author to be as brief as possible, but at the same time, the density of feelings and the powerful expression can express everything, even one in word. Thank you very much. Thank you. Thanks to the panel. Yeah. Yes, this is the time for a group photograph. In this session, we explored, albeit very briefly, the literature of Western India in the last 7 decades. We would like to thank the chair, Shri Bhagyesh Jha, Shri Kailash Dhond, Shri Hasit Mehta, Professor Kiran Kule, Menka Shivdasani, Arvind Ashia, and Vijay Kamath. We will take a very short tea break for about 10 minutes and then begin the next session, which is about woman power.
साहित्य उत्सव में आप सभी का स्वागत है। स्वाधीन भारत के साहित्य पर संगोष्ठी के 5वें सत्र में सत्र का शीर्षक है नारी शक्ति। इस सत्र की अध्यक्षता के लिए मंच पर आमंत्रित है प्रोफेसर मलयश्री लाल। Professor Lal is an eminent English writer, scholar, and retired professor in the English Department, University of Delhi. She was a senior consultant to the Ministry of Culture and has served on international book award juries. She has 16 books to her credit. Her specialization is in literature, women, and gender studies. May I also request on the dais Leena Chandorkar, who is a professor and head of Department of English at Pune University. Oh, there she is. Leena Chandorkar is the author of the non-fiction book I, Me, Myself, a study of 6 women's autobiographies. She has also written 2 novels, Bends and Turns and Gulmohar Lane. She will be speaking on the impact of feminist literature on society in independent India. Rakshanda Jalil is a multi-award winning translator, writer, and literary historian. May I request you to come on the dais, please? She has published over 25 books and written over 50 academic papers. Some of her books include Liking Progress, Loving Change, a literary history of the progressive writers movement in Urdu, a biography of the Urdu feminist writer Dr. Rashid Jahan, A Rebel and Her Cause, a translation of The Sea Lies Ahead, Intezar Hussein's seminal novel, Karachi, and Krishan Chandra's partition novel, Gadar. Rakshanda will be speaking on Indian feminist literature, assessment, and challenges ahead. Professor Rekha Sethi, may I request her on the dais, please? Professor Sethi has authored 5 books, edited 10, and translated a poetry collection from English to Hindi. She has published over 100 research papers. She was recently awarded the Vatayan Shiksha Samman at Oxford Business College, London. She will be speaking on feminist narratives and countering patriarchal hegemonies. May I hand over the mic to Professor Mallashri Lal, please? Good afternoon, everyone. It's working. It's indeed a great privilege to be chairing this session on women power. And as we are all aware, it's a subject that can be approached through many perspectives. In my opening remarks as the chair of this session, I'm just going to make a couple of points which come to me as significant when we are talking about women power. As we've been seeing in the rest of the seminar that's ongoing, we're talking of post-independence writing, and we're also talking about the 70 years of the Sahitya Academy. And woman power has been quite substantially represented in the women awardees of the Academy. I want to go back to the 1970s and remind ourselves that Anita Desai got the award in 1978, Rama Mehta got the award in 79, and Maitri Devi for Nahannate was awarded in 1976. And I mention these in order to link literature with the women's movement in India, because 1970s was a very significant signpost for all of us who were interested in women's issues. In 1974, this significant document called Towards Equality, which was the report of the Committee on the Status of Women in India, was published. It was authored primarily by Veena Mazumdar, leading an extraordinary team along with Lotika Sarkar and many others who did a survey throughout India to find out what the ground reality was about women power. And what they concluded was that while the Constitution of India guaranteed equal opportunity to women and assured gender equality in all spheres, the ground reality was indeed very different.
And it is Towards Equality report that created the institutional establishment of women's studies throughout the universities in the country. And it also signposted many campaigns, advocacies, efforts, and books on what was required in order to bring genuine women power to the people of the nation. And the leaders of this movement, what we often think about as the first generation or the pioneers, it's difficult to say first or second, the pioneers of that time, the 1970s, Veena Mazumdar, Mohini Giri, Devki Jain, etc., were very much the leaders of how we began to rethink the idea of women's power, that it wasn't enough to keep it within the legislation, but to be able to put it on ground. From that, I move very rapidly to a few legislative changes which happened. One of them I'm only going to talk about, and this was the ground level power that was given in the panchayat elections. And the constitutional amendment, the 73rd, which guaranteed that 1/3 of the total seats would be reserved for women by turns. How this links to the literature that I value is a story by Maitri Pushpa, which is called Tulna. It's the story of a village where there is a male pradhan, but now is the turn of the woman, according to reservation. And the wife of the pradhan is persuaded to accept being a candidate. And she wins, but everybody's assumption, primarily the assumption of the husband and the men in the village, is that she will only be what used to be called in those days a rubber stamp. Today we have forgotten what a rubber stamp is, but it was considered to be the rubber stamp role for a woman panchayat. Now, what happens instead in the story is that quite the reverse takes place, that under the guidance of women's leadership of the kind that I was just mentioning, there was training given by NGOs to panchayat women. And they realized, and particularly this woman realizes, that her husband and all the male members of the panchayat were utterly corrupt. So when during her tenure, she brings about a complete rehabilitation of social justice in the village. And next time the election comes, and it's no longer the reserved seat for a woman, the Pradhan stands, but there is one vote short by which he loses. And guess who didn't vote for him? So it's this kind of an interweaving of what the constitutional and legislation gives as power to women and what actually comes out in literature, which is, for me and perhaps for many of us here, a very fascinating combination. Obviously, I will not go into other details of this nature, but I want to point out that there are other prejudices against women which one has had to fight against. Violence against women has been rampant. Particularly the commodification of the female body is something a lot of literature talks about. The adversarial conditions that happen because of son preference that most communities have, at least where I live in the northern part of India and the East Bengal and all that area that I know, and the West Rajasthan where I grew up, the hierarchy within which a woman is a lower category is very, very obvious. However, we come to the 90s and we come to a kind of a post-feminist era. And one is glad to notice the new voices that have come up since then, which have confidently spoken about the diversity among women. So it's no longer a women's movement or a feminism. And there are very strong voices of women that we're getting. And I'm particularly struck by what is coming from the Northeast. Temsula Au's Those Hills Called Home is one of my favorite books because there is a cultural authenticity about it. And there is a certain kind of repository of powerfulness that the women have, which is not evident, which is not spelled out in aggressive and combative terms, but is subtly presented in that literature.
Recently, I read Janice Parriot's novel, Everything the Light Touches. And there is a kind of an eco-feminist connection that the woman writer seems to prioritize, particularly from the Northeast areas, but possibly from elsewhere. Now, I want to end by going to the other end of the country's spectrum and Malayalam writing. And recently I had the privilege of reading through A.J. Thomas's book, The Greatest Ever Malayalam Short Stories, and went back again to reading Kamla Das. Yes, in a way, she belongs to an earlier generation, but what a trajectory she has covered. And it's in her voice where she is ready to play with multiple identities that she can proclaim the woman's agency. She can be happily placed wherever she wants to be, whether it's in the public domain or in the private domain, whether it's in politics or the domestic sphere. She is a confident woman's voice expressing the power of the self, the power of the individual. And what the rest of the world thinks about her is not her concern. I'd like to end at that point to say that these are some of my thoughts about what woman's power means to me through literature, and I look forward to listening to our eminent panelists. So the first speaker this afternoon is Leena Chandorkar. You've already heard about her many accomplishments. Over to you for about 10 or 12 minutes. And if we stick to that kind of a time schedule, then we'll have time for interaction. And please feel free to use this mic or another one. Should I use that? Please. Madam? Yeah. Thank you, Malaji, for that succinct but very scholarly overview. And the topic given to me was so vast that it was overwhelming. So I have decided to concentrate on, it's a kind of focused study. It was the best of times. It was the worst of times. These were the words with which Charles Dickens famously began his novel, A Tale of Two Cities. These words can be applied with equal justification to the heady years after India's independence. That was the time when all the contrasts that Dickens evokes were clamoring for attention in a newly independent nation, struggling to create a space for itself on the world stage without compromising its core values. Good afternoon to all, and a big thank you to Sahitya Akademi for inviting me to this event and giving me an opportunity to present my views in front of this august audience. India has come a long way from those days of uncertainty and doubt. And more than 76 years after independence, the country can look back on the past 7 decades and face the future with an air of assurance. The changes that took place in the country were a combined effort of intellectuals, artists, thinkers, and policymakers who brought about legislative and institutional changes in the body politic to make this a more inclusive and equal society. No small part was played by women writers who struggled to pave a path for women in the emerging economy and warned against subsuming the specialized needs of women under the mainstream developmental narrative. The list of such women is long and varied. As the topic for the panel is too vast to be covered in the limited time given to me, I will confine myself to one woman writer who made a significant impact on the society around her. And we will take her as a kind of a representative symbol. It will be a spotlight rather than a washlight effect. Now picture this scene. A scooter is coming down a quiet tree-shrouded lane. As the scooter comes closer,
one can see that it is being driven by a sari-clad woman. The people on the road stop and stare and watch open-mouthed as the scooter disappears into the distance. The time is the 1950s. The place is Pune, and the woman is Iravati Karve, the first woman to drive a scooter down the roads of that once quiet, sleepy town. There were many other firsts to her name. India's first woman anthropologist, first to start the Department of Anthropology in Deccan College in Pune, the first woman to receive the Sahitya Akademi Award for Marathi. With a phalanx of male relatives and supporters who stood firmly behind her, this intelligent woman was able to reach her full intellectual potential at a time when the highest achievement for a girl was to be married into a well-to-do family. Born in Burma in 1905 to an engineer father, she did her schooling in Pune under the guardianship of Wrangler Paranspe, a famed mathematician who was then the principal of Ferguson College, Pune. After her BA in philosophy, she got married to Dinkar Karve, her marriage being just another event in her life, and then went on to complete her MA in sociology. Her husband was the son of the famous reformist and pioneer of women's education, Dhondo Keshav Karve, and the nephew of the equally famous Raghunath Karve, who campaigned for female contraception. She won a scholarship to Berlin to study anthropology and embarked on this intellectual adventure when it was not common for girls to travel abroad for higher studies. Her first book, Ethnic Affinities of the Chitpavan Brahmins, was published in 1933. A series of books on social science followed. Anthropometric Measurements of Marathas, published in 1948, Anthropometric Measurements of Maharashtra in 1951, Marathi Lokanchi Sanskruti, written in Marathi in 1951, Kinship Organization in India in 1953, Beals of Western Khandesh in 1958, Hindu Society and Interpretation in 1961, Maharashtra, the Land and its People in 1968. What adds an extra dimension to Karve's oeuvre is that, apart from her scholarly work, her vast array of short essays have secured her a place in the world of Marathi literature. She wrote about 40 essays, which were published as 3 collected works. Paripurti, published in 1949, Bhovra in 1960, Gangajar in 1972. Her most famous work, though, is Yuganta, her book in Marathi, which is a commentary on the characters of the Mahabharata and which got her the Sahitya Akademi Award as the best piece of writing in Marathi in 1967. A quick look at the titles of Iravati Karve's books will make it clear that she is not writing books as a woman scholar. She was writing the books as a scholar. Her areas of research were new and innovative, but it was the very act of publishing these books that marked her out as a pioneer. Coming as she did from a liberal and progressive family that was at the vanguard of women's education in India, many people would remark that it was no big deal for a woman from such a family to reach such heights. It is the subaltern we should bring into the limelight, the poor and the downtrodden who never got the opportunities that Iravati got. However, that would be an injustice to the real achievements of a woman who so nonchalantly reached great heights. A family name can open doors, no doubt, but the rise to the top is completely dependent on the merit of the individual. And that merit, that grit, the sharp intellect was shown by Iravati Karve. She was far from being an armchair intellectual. During her tenure as a faculty member of the anthropology department in Deccan College, she never shied away from getting her hands dirty. She embraced field work with enthusiasm, spending days away from her family and home in isolated excavation pits with her team. I quote from the essay, Janma Janmantarichi Bhet, from her book, Paripurti, published in 1949. I had translated this extract into English for Sahitya Akademi's journal, Indian Literature, many years ago.
And I quote, "The train was slowly moving ahead. Soon we would reach our destination. Our minds, which till now were thinking of our homes, now turned slowly towards the new environment, and our eyes began to take in the scenery outside. We were not many. Ahead, Professor Sankalia, a photographer, a surveyor, an assistant of Professor Sankalia's, my assistant, and a cook." End quote. In the above extract, she describes herself mainly as part of a team, not as a woman, although it was rare in those times for an Indian woman to go on work-related long tours. Her identification of herself as an anthropologist, not a woman anthropologist, speaks of her utter self-confidence in her ability and confidence. This unapologetic staking of her claim in the public and professional sphere, without asking for special favors or reservation, points to her complete belief in her professional competence. But even at the peak of her professional duties, she remains at heart a romantic, a person with heightened imaginative powers. She becomes a woman who finds a connection with a woman from the past, a bond across the ages. Here is an extract from Janma Janmantari Bhet, and I quote, "Look, the skeleton is now in your care. You can clean it properly for the photo. It is too sunny now. In a couple of hours, when the sun is milder, the light will be right for taking photos. We are starting our work from the other side. Do you need any assistance?" Mr. Sankalia was asking me. I just shook my head in refusal, and then everybody departed. I was left all by myself in the pit. The sun was screaming hot overhead. Bending down, I was cleaning the skeleton delicately with my tools. These bones, lying in a covering of mud, were looking at the sun after 15,000 years. After cleaning her torso, my hands turned towards her head, reached her jaw. But the moment my brush swept near the jaw, the teeth were exposed and gleamed in the sun. My heart started to beat. The voices of my colleagues working in the pit alongside came hazily to me as though in a dream. I had a sudden feeling that the absent pupils in those empty sockets moved. Those shining teeth smiled with knowledge of past kinship. My fingers were grazing her narrow chin, but my heart was asking the skeleton piteously, "Are you me, my dear? Dear, are you me?" End quote. This lyrical prose is that of a poet and writer, not merely that of an academician, jotting down dry notes from an excavation. It was this touch of poignancy that she added to her professional documentation that lifted it from being merely an academic exercise to a literary work worthy of merit. She proved herself to be a competent storyteller. And it was this that brought her the Sahitya Akademi Award for Marathi literature. It was not merely through her work that Iravati Karve added to the literary and social milieu of society. It was also through who she was, how she conducted her professional and personal life, and what she demonstrated to women around her about agency and control over one's life. Her scholarly works marked her out as a researcher of international repute in the fields of anthropology and sociology. And her writings of prose in English and Marathi brought her a readership beyond the borders of Maharashtra and India. Proficient in Sanskrit and Pali, she was an Indologist who believed that for an ancient civilization like India, the ready-made grafting of the Western democratic model would not work. India was a complex society with layers of hierarchies where caste and kinship were closely linked with social identity. She underlined the fact that a uniform imposition of the Western democratic model would not be applicable to the Indian context, and that it would have to be an organic, slow, and gradual shift from strong caste and kinship bonds to a democratic ideal befitting a modern nation state. Iravati Karve was outspoken and bold when putting forth her views. Many of her essays in Marathi may not have been in consonance with the government view of the time.
For example, in a pamphlet that was published in 1960 titled The Language Problem in India, she asks us to get over the prejudice of treating English as an alien language. She says that we need to treat proficiency in English as an important skill and overlook its cultural heritage and baggage. This is just one example of the numerous topics she touched upon and presented to the public through the many articles that she wrote for Marathi magazines and newspapers. In this regard, she fits into the definition of a public intellectual as put forward by Ralph Waldo Emerson in a lecture he delivered in Berlin in 1837. In this lecture, he suggests that a scholar is one who raises himself from private consideration and thinks for the public good. He is the world's eye. He is the world's heart. In conclusion, I would like to reiterate the contribution of women like Iravati Karve, who impacted the society around them, not only through their writings, but also through the way they lived their lives. Thank you. Thank you. Thank you very much, Tina, for bringing details of Iravati Karve's work, life, and view on women, particularly that section on the skeleton is not only lyrical, but it acts as a metaphor for Karve and for many other writers over the history of women's writing as a kind of manifestation of the inner self, which is both beautiful and also macabre. And it becomes a mode and methodology for exploring the inside of a woman, the structure, the essence, but also it occurs to me that the skeleton ensures that women stand in the real metaphorical and psychological sense, that they have a idea of worth and agency. Thank you very much. So we move on now to our second speaker, Rakshanda Jalil. Over to you. Yes, of course. Yes, it is. Yes. I too was given a somewhat magisterial topic for my presentation today, and I decided to talk about something entirely. So with the chair's permission, and also with your permission, Professor Lal, I wish to introduce a somewhat contrarian note. I mean, I don't need to establish my own credentials as a feminist here, but what I do want to say is that I will be asking some very uncomfortable questions to which I have no answers myself, and I hope some answers will emerge from a group such as this. Also, in the past many years, my own work has been within the framework of Urdu literature. So the questions I pose to you today will be specifically in the context of Urdu and Urdu poetry in particular. And I've been working in and around a big literary grouping known as the Progressive Writers Movement. So the question that, in fact, the gist of my talk today is coming from there. And the topic I chose for myself is, why did the Progressive Writers Movement in Urdu fail to produce women poets? Knowing my interest in left-leaning literary movements and feminist writings, a friend asked me to recommend women Urdu poets who may have been active during the great upsurge that we recognize as the Progressive Writers Movement. This, as you know, was a movement that was very active from the 1930s, right up till the 50s, 60s, till it began to taper off. This set me thinking. Of course, I could rattle off names of all the great Urdu progressive poets. Faiz, Sardar Jafri, Kafi Azmi, Majaz, Akhtarul Iman. The list is long and illustrious. Apart from copious amounts of socially engaged, purposive poetry, they have also written about women, for women, with great empathy and conviction.
But I found myself hard pressed to find even one woman poet who wrote in Urdu who could be counted as a progressive and was reading alongside the male poets in mushairas at a time when the progressive movement was at its most vigorous, that is, the mid 1930s to the mid 1950s. In Hindi, on the other hand, there was Subhadra Kumari Chauhan and Mahadevi Verma. There's, of course, Amrita Pritam in Punjabi during the time. And I'm sure there are so many other names in Bangla, in Tamil, in Telugu, all the other major Indian languages and the dialects. The progressives were robust upholders of feminism who made every effort to bust patriarchy in their writings. They encouraged the participation of women in their meetings. Dr. Rashid Jahan was a founder member of both the PWA, formally established in 1936, and its sister organization, the IPTA, set up in 1943. I've in fact worked extensively on Rashid Jahan, having written her biography. I've also worked on other feminist Urdu writers, such as Ismat Chughtai, for instance. Many women were to be found among their ranks and were published in the influential journals and magazines edited by them. Hajra Masroor, Khadija Mastoor, Siddiqa Begum Suharvi, Shakila Akhtar, Sarla Devi, and so on. But they wrote fiction, not poetry. And in their fiction, we find ample evidence of what can be termed progressive writing, a tradition that continues in the present day women Urdu writers, such as Zakia Mashadi from Patna, Renu Behel from Punjab, Siddiqa Nawab Seher from Maharashtra, who has been awarded this year during this Festival of Letters. So, why is the situation so different when it comes to poetry in Urdu? Was it the very nature of women's writing in the first half of the last century that discouraged poetry? Was it the late arrival of literacy among women in South Asia and consequently their late blooming in literature per se and later still in poetry, especially in Urdu? Or was there something in Urdu poetry in itself, in the ghazal in particular? And remember that the time that I'm referring to, the 1930s, the nazm is there, but it's still a fledgling nazm, as in as you know, there are two major types of poetry. Of course, there are many others like the Masnavi and the Qasida, but broadly speaking, we can divide Urdu poetry into the ghazal with its compact haiku-like two-line verse, the sher, and the nazm, which is a generic term for anything that is not the ghazal, which can be free of rhyme or it can have some sort of internal rhyme, but it does not have the constraints of the ghazal. The ghazal, on the other hand, derived its name from Arabic, meaning an amatory ode. So, in its essence, it is a romantic sort of poetry, though increasingly using a romantic metaphor, all sorts of things, including deeply political things, are also being said in the ghazal. But I'm still talking of a time from 30s and the 50s. So, was it something in the very DNA of the ghazal that made it a male preserve? A search for answers requires a brief looking back at recent literary history. The tradition of écriture féminine, the writing of the feminine, is not a very old one in Urdu. And in prose, especially fiction, it is just about 100 years old. There have always been men writing as women, that is, in women's voices, or of women and about women, making women both subject and predicate. But it took a long time for women to find a real voice in Urdu literature. In Urdu poetry, while the voice may be that of a lovelorn woman suffering from the pangs of separation, the Birahani, which has come to Urdu from similar traditions in Hindi, in Rekhti and others of the Baramasa tradition, for example, or the discontented woman or a young woman on the verge of marriage, the writer was invariably male. And it has been regarded as perfectly acceptable for men to write in women's voices on so-called women's issues expressing womanly concerns. This vocal masquerade has been taking place
4 centuries and has been taken quite for granted. In fact, I want to draw your attention to this excellent book by Carla Petovich called When Men Speak as Women. And she lists the many, many ways in which men have been speaking in fake female voices, and it has been taken as quite all right. Chand Bibi, better known as Mahalaka Bai Chanda, her dates are 1768 to 1820, is popularly believed to be the first published woman poet in Urdu. A courtesan dancer in the princely state of Hyderabad, she moved from seducing men for money and power to pursuing a mystical devotion to Mola Ali, a movement that is amply reflected in her poetic oeuvre. Displaying an extraordinary blend of Shia piety, almost all her poems incidentally contain references to Mola Ali. And seductive power, her poetry is at once elegant, articulate, and yet unconventional. I'll give you a brief sample translated in English. I'll toss the record of Chanda's deeds into passion's churning waves if Ali, the forgiver of my sins, comes with a wine cup my way. After Mahalaka Bai, there was a long gap when women from Sharif families, meaning respectable families, would either not write poetry or not write it for public consumption. The Mughal harem did indeed have many educated, accomplished, articulate women, some of whom wrote family histories such as Gulbadan Begum or Sufi treatises such as Aurangzeb's sister Jahara. But it was left to the historian to excavate these lost voices. In fact, there's been a fair amount of work in very recent years from the professional historian who has looked at Mughal women and clearly they were educated, but what were they writing? So some of those writings have recently been as it were, rediscovered or relocated. In their own time and age, these women remained cloistered within the Zanana. For all practical purposes, it has been a long journey from a Mahalaka Bai Chanda to a modern-day woman poet such as Zehra Nigah. Zehra Nigah appeared on the literary horizon as a child prodigy in the early 1950s and has consistently been hailed as one voice worth listening to in the babble that is the Mushaira circuit. When she began to make a mark as a poet in the 1950s and 60s, women who recited their poetry in public were a rarity. And here I mean women who recited Urdu poetry. Women from respectable families were not encouraged to come on stage to recite their poetry, let alone express themselves with any degree of sensuousness. I'd be most interested if the audience or the chair or the panel give me examples from other languages where it was not so. My own sense is that indeed it was not quite so, especially in Bangla. I think there was a tradition of women writing poetry, but I don't know if they were coming on stage to recite that. Maybe we can talk about that later. So a young Zehra Nigah hid her femininity behind demureness, read her poems with eyes downcast, and scuttled back to the safe haven of domesticity. But the sheer lyricism of her words, the engaging simplicity of her poetic idiom, and the sharp, insightful comments couched therein built a formidable reputation and amassed a legion of admirers. To this day, and she is now in her 80s, a hush invariably descends at noisome mushairas when she stands up to recite her poetry. She lives in Karachi, incidentally. While her recent poetry deals with the war in Afghanistan, the Pakistani debacle in Bangladesh, the repressive hudud ordinances in her own country, female feticide, parda, and so on, her early poetry that coincided with the glory days of the progressive writers movement cannot be said to be progressive. It was feminine rather than feminist. She was followed by younger contemporaries in her own country who wrote bold, outright feminist poetry, some names that might be familiar to you, such as Fahmida Riaz, Kishwar Nahid, and Sara Shagufta. In India, we can identify only 2 women, significant in their own way, but in no way connected with the progressive writers movement, nor considered progressive poets according to any standard definition or the definition set by the progressive movement themselves. These are
Bano Darab Wafa from Lucknow, her dates are 1926 to 2005, and Bilqis Zafirul Hassan from Delhi, born 1938. We are still, however, left with the unanswered question of why there were no women poets. Not few and far between, but no women poets among the Urdu progressives. Asked to offer plausible reasons, Javed Akhtar, who grew up in the lap of the progressive writers movement, his father Janisar Akhtar, his mother Safia Akhtar were both pillars of the movement. His maternal uncle Majaz was a major a poet, also deeply involved with the progressive upsurge. And Javed Akhtar enjoyed, as a child, enjoyed a ringside view to the triumphs and glories of the movement. Javed Saab confesses to being at a loss when I pose this question to him. Urdu poetry had till then been the language of love, employing the tropes of separation and union with the beloved, he says, whereas the newly emerging genre of fiction dealt with reality. And the progressives indeed emphasized how ishq mohabbat ki baatein ab bahut ho gayi. Now hold up a mirror to society and show what is in that mirror, good, bad, indifferent. So the progressives urged the people associated with the movement to write socially purposive, socially engaged literature. Javed Saab says, had women seized the space that was a hitherto masculine preserve, it would have been, and I'm quoting him, too much of a liberty. Citing the example of Zehra Nigar, who was the only woman active as a poet, but not a progressive poet, he says how her poetry uses hum, as in we or us, and not me, as in I or we, and how Zehra Appa's grandmother advised her to stay off subjects that were too personal. Now, this in fact is entirely not in keeping with the message that came out with the big feminist movement and the successive feminist waves of that time. You will remember that the progressive, the feminist movement was saying the personal is the political. And successive waves of feminist writers, poets were mining their own lives. This is something many of us continue to do. We mine our own lives, we take examples from our own life to make larger political comments. But here we have the example of Zehra Nigar, who is going by her grandmother's advice and staying off personal subjects. So a poetry that touches a chord, but is in a sense impersonal. Javed Akhtar goes on to cite Bano Darab Wafa, the one I mentioned just now, who I personally don't see as a feminist poet at all. But he says, and again I'm quoting her, she is the only chink in the progressive armor when she produces a sher such as this, and this is something that Javed Akhtar drew my attention to. कुरेदता है बहुत राख मेरे माजी की, मैं चूक जाऊं तो वो उंगलियां जला लेगा. I personally don't see it as a feminist poem at all. It means he scars the ashes of my past a great deal, one mistake from me, and he will burn his fingers. Gulzar, who attended the meetings of the Bombay Progressives as a young man, to whom also I posed this question, cites both patriarchy and craft as a possible reason. And he says, I'm quoting him, उस दौर को इस दौर से नहीं नापा जा सकता. That age cannot be judged by the yardstick of this age, Gulzar Saab says, pointing out how society changes and so do rules, values, attitudes. Samaji riwayat, social traditions, he says, were not in favor of women writing poetry in Urdu. Some women, such as Salma Siddiqui, who was a fine prose writer, by the way, in her own right, but today, in later years, was better known as the wife of Krishan Chandar, a major Urdu progressive writer. She would attend these progressive writers' meetings, but as Krishan Chandar's wife. There were others, such as Hajra Masroor and Khadija Masroor, two sisters, who wrote
tolerably good poetry, according to Gulzar Saab, who has heard it, but I have not, because very early in their literary career, they moved from poetry to fiction. I've of course read their fiction, which I see as feminist fiction, but I'm not aware of any poetry they may have written. But Gulzar Saab says he has heard it. And this also signals to us how women, if not actively encouraged, were somehow or the other shepherded away from poetry into fiction. Craft darata hai, Gulzar Saab says. Craft can scare. Now, all these quotes I'm not agreeing with. I'm just putting them before you. I'm not saying craft scares, I don't think it does, but I'm just putting to you what people have said to me as quotes and which I have inserted in my paper. Gulzar Saab also goes on to say, poetry requires a discipline that fiction does not. Also, and then again I'm quoting him, ghazal ka mizaj alag hai. The tone and tenor of ghazal is unique, he says. Again, a quote from him. And it is essentially about, again a quote, pure romance. And I'm still quoting, a woman's haya and sharam, modesty, would not have allowed her to write it then. There are some people in Rajasthan, Gulzar Saab points out, who still refer to Meera as Rand. Not a good word. Steeped in bhakti, doha bhajans are, they are different from other bhakti poets such as Raidas or Tulsi. Gulzar Saab points out, Meera has a distinctly romantic flavor that sets her apart. Now, the years after the decline and weakening of the progressive writers movement did indeed see the emergence of women poets. Anjum Rehbar is one. Meena Kumari Naz, the film actor, she used Naz as her takhallus, and she wrote poetry. Again, poetry that cannot be called feminist poetry. But there were two distinct feminist poets that we can identify, both from Aligarh, both academics, Sajida Zaidi and Zahida Zaidi, one a professor of English, the other a professor of education. But this is well after the progressive upsurge has died down. I can also think of another remarkable woman that some of us in Delhi would remember. This is the Urdu journalist Noor Jahan Sarwat. She worked for major Urdu newspapers. She was quite a distinctive figure. I remember meeting her very often, the Sahitya Academy, at the press club, at the India International Center. She drove a scooter, she wore a helmet, she had short hair. The poetry, and she died in 2010. The poetry she produces, again, cannot be termed feminist poetry. Let me give you a sher from a ghazal which is often recited, has been beautifully sung by Radhika Chopra. वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है, जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है. Beautiful poetry, but again not feminist poetry. Another, प्यास जो बुझ न सकी उसकी निशानी होगी, रेत पर लिखी हुई मेरी कहानी होगी. Again, excellent poetry. Nobody is doubting Noor Jahan as a poet. In more recent times, there is Tarannum Riaz, Iffat Zareen, Asna Badar, Azra Naqvi, Naseem Nikhat, Indira Verma, Amita Parsuram Meeta, Meenu Bakshi, Poonam Yadav. But can any of their poetry be considered feminist? Can any of their, no doubt, excellent work be compared with the kind of powerful feminist poetry in Urdu we have seen? But unfortunately, from across the border, people like Fehmida Riaz, Kishwar Naheed, Sara Shagufta, Ishrat Afreen, that I referred to earlier. Khalid Alvi, who has written extensively on the modern trends in the Urdu ghazal, minces no words when he says, again, I'm quoting, and again, these are not quotes I agree with. Poetry can be written on women. Women cannot write poetry, which explains why there are only a handful of big names of women poets in all the major languages. Again, something I do not agree with. I mean, I can count any number of women poets, especially in English, that I know and like and have read over the years, Sylvia Plath and so on. Now, I'll conclude here. Literary histories throw up uncomfortable, unpalatable truths. I want to leave you with the question if this is one of them. Thank you.
Thank you very much, Rakshanda, for leaving us with that troubling question. And the paper which pointed in the direction of asking why the progressive movement didn't have any women poets. And even as you tracked many other writers, why, even when they wrote poetry much later, the feminist edge is missing. So it leaves us something to think about, and I hope we will have time to go into this very, very significant inquiry. And let's move now to our third and final speaker for the afternoon, and that's Dr. Rekha Sethi. नमस्कार। सबसे पहले साहित्य अकादमी का धन्यवाद, और जो पैनल है वो इतनी बातें जो हुई हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जैसे हमारे सामने एक मानचित्र सा बन गया है, ऑलरेडी एक ग्राफ बन गया है। मालती ने बड़ी खूबसूरती से वो पड़ाव याद किए जो स्त्री शिक्षण, सोशल मूवमेंट्स, साहित्य सब में एक यात्रा तय करते हैं। उसके बाद एक सशक्त स्त्री की तस्वीर क्या हो सकती है, लीना जी ने इरावती कर्वे के माध्यम से वो प्रस्तुत की। और रक्षंदा ने जो सवाल पूछे हैं वो बहुत ही ज़रूरी सवाल हैं, क्योंकि जब हम एक ट्रेंड की बात करते हैं तो वो ट्रेंड ऐसा नहीं होता है कि बस एक बक्सा हमने बना दिया और सब कुछ को उसी चश्मे से देखना है। जो विषय मुझे भी साहित्य अकादमी की तरफ से दिया गया वो है तो बहुत विस्तृत, मैंने कोशिश की है उसको फॉलो करने की, लेकिन अपनी तरह से उसे तोड़ा भी है। फेमिनिस्टिक नैरेटिव्स एंड काउंटरिंग पेट्रियार्कल हेजिमनीज, दो शब्द हैं इसमें जो हमेशा जैसे ही आते हैं हम उस तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही हमने फेमिनिस्टिक नैरेटिव्स की बात कही, हमारे सामने स्त्रीवादी आख्यान, स्त्रीवादी आख्यान कहते ही एक खास तरीके से, चाहे वो स्त्री द्वारा लिखे गए हों, किसी पुरुष द्वारा लिखे गए हों, लेकिन वो स्त्री के प्रति सहानुभूति के, स्त्री के प्रति, स्त्री के हक में लिखे गए आख्यान होंगे। और जैसे ही हम स्त्रीवाद की बात करते हैं तो अपने आप जैसे कि एक माइक्रोस्कोप हो जो एक तस्वीर दिखाता है, पितृसत्ता, तो वो एक दायरा बन जाता है। तो ये दोनों चीज़ें लेकर, मतलब ये पढ़ने का ढंग जो है वो भी मुझे लगता है कि एक जेंडर्ड तरीका है, और मैं कोशिश करूँगी कि अपने पेपर में इस जेंडर्ड ढांचे से थोड़ा बाहर निकल के इसे एक जेंडर्ड ढांचा या जेंडर न्यूट्रल ढांचा जो हो सकता है उससे पढ़ने की कोशिश करूँ। जो बात मैंने पहले कही कि जब स्त्रीवादी आख्यान आता है तो उत्तर आधुनिक दौर में पोस्ट मॉडर्निज्म में जो आइडेंटिटी डिस्कोर्सेज आए और स्त्रीवाद को हाशिए की आवाज़ की तरह पढ़ा जाने लगा। स्त्रीवादी आंदोलन, स्त्री के संघर्ष, स्त्री मुक्ति, चाहे साहित्य में हो, राजनीति में हो, समाजशास्त्र में हो, उस नज़रिए से पढ़ा गया। लेकिन यही मुझे दो कहानियों के उदाहरण याद आते हैं। एक उषा प्रियमवदा की कहानी है वापसी, और दूसरी अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन। उषा प्रियमवदा एक स्त्री रचनाकार हैं, लेकिन उन्होंने उस पुरुष की कहानी लिखी जो रिटायर होके अपने घर लौटता है और फिर पाता है कि घर में वही सबसे अधिक अजनबी और अतिरिक्त व्यक्ति हैं, और फिर वो अपने काम पर लौट जाता है। तो यानी स्टीरियोटाइप जब जेंडर के बनते हैं तो केवल स्त्री के ही नहीं होते, पुरुष के भी होते हैं कि वो केवल घर में सबकी ज़रूरतें पूरी करने वाला व्यक्ति है। उषा प्रियमवदा ने बहुत सहानुभूति से ये कहानी लिखी। दोपहर का भोजन अमरकांत ने लिखी, एक पुरुष रचनाकार में,
लेकिन आज भी सिद्धेश्वरी अपने परिवार को बचाने के लिए जिस तरह टूटती है, लगता है हम सबके भीतर एक सिद्धेश्वरी रहती है। किसी भी तरह वो भोजन में सबकी ज़रूरतें पूरी करती है। तो इस तरह मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत ही हमारा ढांचा बन जाता है। यही मैं सबसे ज़्यादा जिसे पसंद करती हूँ, याद करना चाहती हूँ, रविन्द्रनाथ ठाकुर। उन्होंने स्त्री मन का जैसे पूरा एक इतिहास खड़ा कर दिया, चाहे वो कहानियाँ हों, उपन्यास हों, उन सब में जिस बारीकी से वे स्त्री के मन में प्रवेश करते हैं। और जो मेरा सबसे पसंदीदा दृश्य है वो सत्यजीत रे ने जब उसे फिल्म में बदला, घरे बाहरे, बिमला को 10 फुट का एक गलियारा पार करके बाहर आना है, लेकिन मानो ये 10 जन्मों की यात्रा है। तो इतनी खूबसूरती से इन स्त्रीवादी आख्यानों को स्त्री और पुरुष दोनों ही रचनाकारों ने जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ते हुए प्रस्तुत किया। मैं इसे इस तरह देखती हूँ जैसे ह्यूमन राइट्स एक बड़ा ढांचा है और जो मानव अधिकार हैं और उनके भीतर स्त्री के अधिकारों का एक सबसेट है। तो वैसे ही जब हम स्त्रीवादी आख्यान कहते हैं, वो एक बड़ा मानवीय दृष्टिकोण है। बहुत से स्त्री रचनाकारों ने कहा कि हमें स्त्रीवादी नजरिए से मत पढ़िए। कृष्णा सोपती, मृदुला गर्ग, इरावती कर्वे के लिए अभी लीना जी कह रही थी कि उसे एक व्यक्ति की तरह पढ़िए। उसका जो काम है वो एक स्त्री होने का ही नहीं है, बल्कि एक किसी भी बड़े स्कॉलर होने का है। तो मुझे ये याद आता है कि किस तरह महिला रचनाकारों ने स्वयं को स्त्रीवादी होने से ऐतराज भी जताया। और कृष्णा सोपती का मुझे याद आता है जब एक शताब्दी के उपन्यास गिने गए और मित्रों मरजानी को उसमें रखा गया और जिंदगी की नामा को नहीं, तो वो बहुत नाराज हुई और उन्होंने चुनने वालों की योग्यता पर प्रश्न उठाया कि कैसे, क्योंकि वो स्त्री रचनाकार हैं, तो स्त्रीवादी मुद्दे को लेकर मित्रों मरजानी को चुना गया और जिंदगी नामा को नहीं। लेकिन अब इसे दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं कि क्या स्त्री रचनाकार साहित्य की दुनिया में कुछ ऐसा लाई हैं जो पहले नहीं था। तो उसके भी बारे में हमें बात करनी पड़ेगी कि जिस तरह से कृष्णा सोपती ने स्त्री की इच्छा, आकांक्षा, उसके विस्थापन और सूरजमुखी अंधेरे को देखें तो उसके डर को, उसके कॉम्प्लेक्सेस को जो आवाज दी वो भी पहले नहीं था। अनामिका की एक कविता है, मैं बार बार कोट करती हूँ, फर्नीचर, जिसमें वो कहती हैं कि मैं रोज इनको झाड़ती हूँ, पूरे घर में सिर्फ यही हैं जो मुझे कभी नहीं झाड़ते। तो शब्दों के खेल से कितनी बड़ी सच्चाई उन्होंने कही। बल्कि अभी मीरा की बात हो रही थी, मीरा की कविता में जो सास, ननद, देवर की कहानियां आती हैं, तो क्या जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, जिसे कि इतना अनुकूलन हो गया कि वो तो मतलब स्वीकार्य है, तो इन रचनाकारों ने उस तरफ भी निगाह उठाई। अब दूसरी बीज शब्द जो है वो है पितृसत्तात्मक आधिपत्य, पेट्रियार्कल हेजीमनी। अब समस्या ये है कि अगर हम सारे स्त्री साहित्य को, स्त्रीवादी नहीं कह रही हूँ, स्त्री साहित्य को केवल पितृसत्ता को रेफरेंस पॉइंट बना के देखेंगे, तब भी कुछ खतरे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ होगा जो पितृसत्ता के बाहर भी पढ़ना जरूरी है। अब वैसे हम साहित्य की परंपरा देखते हैं, तो चाहे हम वैदिक साहित्य से शुरू करें, बौद्ध साहित्य पर जाएं, भक्ति साहित्य, नव जागरण, आधुनिक, उत्तर आधुनिक, हमेशा हमें ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां हम कहेंगे कि देखिए वो आवाज सुनिए, वो पितृसत्ता के विरोध में है। मीरा की भक्ति सुनिए, लेकिन देखिए उसमें भी एक विद्रोह है। लेकिन फिर भक्ति को कहाँ ले जाएंगे?
भक्ति भी है, जो बड़ा काम है, जो बॉडी ऑफ वर्क है वो भक्ति है, वो वैसे ही है जैसे कबीर और तुलसी में, जैसे सूर और रैदास में। तो मैं एक खास उदाहरण देना चाहती हूँ महादेवी वर्मा का, जिन्हें हमने करुणा की दृष्टि से पढ़ा। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ को बाद में भारत की जो भारतीय सैद्धांतिकी हो सकती है, उस टेक्स्ट को उसके बाइबल की तरह पढ़ा जा सकता है। लेकिन क्या नहीं पढ़ा, मैं आपको कोट करूंगी। एक उनका संस्मरण है जवाहरलाल नेहरू पे, जो प्रधानमंत्री बने, जवाहर भाई। 2 जगह पे उन्होंने नेहरू की कमजोरियों का उल्लेख किया, मतलब उनकी सबलताओं का और कमजोरियों का देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया। अगला एक वो संस्मरण लिखती हैं, उसमें सुनाती हैं कि नेहरू के पास वो गई हैं, 15-16 साल उनकी उम्र है। नेहरू ने उन्हें बुलाया, सुना है तुम्हारी मार्फत कुछ खत आते हैं, क्या ये सच है? मैंने स्वीकार किया। फिर प्रश्न हुआ, क्या तुम जानती हो कि खतों में क्या लिखा होता है या कौन किसको भेजता है? मेरे नहीं कहने पर उन्होंने उस संकट की संभावना जताई जो ऐसे अनजान माध्यम पर आ सकता है। मैं वचनबद्ध हूँ, महादेवी कह रही हैं, मैं वचनबद्ध हूँ। सुनकर वे गंभीर हो गए। अब महादेवी के व्यक्तित्व में जिस तरह की निर्भीकता है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के पत्र उनकी मार्फत जाते थे, इसको अगर हम केवल स्त्री साहित्य को पितृसत्तात्मक चश्मे से पढ़ेंगे तो ये साहित्य हमसे छूट जाएगा। दूसरा उदाहरण कृष्णा सोप्ती का, भाषा के महादेवी का एक और भी है। मतलब ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, जब उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला, मार्गरेट थैचर के हाथों मिला, तो जो उन्होंने स्वीकार वक्तव्य एक्सेप्टेंस स्पीच दिया, उसमें उन्होंने ये बताया कि कितने 100 साल हमने अंग्रेजों की गुलामी झेली, लेकिन उसके बावजूद ये एक नया समय संदर्भ है जहां हम अंतरराष्ट्रीयता को देख रहे हैं। ये 80s में है, ग्लोबलाइजेशन आने के पहले, और उस समय महादेवी ये बात कर रही हैं। तो कृष्णा सोप्ती को भी हमने बहुत पढ़ा, प्रेम, परिवार, पितृसत्ता, कितनी बोल्ड राइटर है, अपने लेखन में ये कह सकती हैं, वो कह सकती हैं। लेकिन भाषा को लेकर जो स्टैंड उन्होंने लिया, एक लेखक और भी बहुत कुछ करता है ना। स्त्री के साहित्य में राजनीतिक चेतना भी होती है, आर्थिक अधिकारों की बात होती है, प्रकृति, पर्यावरण, सौंदर्य, कला, शास्त्रीयता और लोक पक्ष, संस्कृति, भाषा, संगीत और न जाने कितने विषय हैं। तो जब हम केवल पितृसत्ता की मार्फत पढ़ते हैं, ये सब छूट जाते हैं। तो कृष्णा सोप्ती ने एक जगह वो कहती हैं, लोक की प्रतिष्ठा में लेखक का गणतंत्र है। और फिर कहती हैं, दोस्तों, भाषा इस लोक की जीवंतता का रोमांस है। हमारी भारतीय विविधता का लोकतंत्र जनमानस में स्थित है। अनेक भाषाई मुखड़े अपनी विविधता में उस केंद्रीय इकाई को प्रस्तुत और तरंगित करते हैं जिसे हम भारतीयता नाम से पुकारते हैं। और मैं आगे का हिस्सा छोड़ रही हूँ, लेकिन एक और ज़रूरी बात जो कृष्ण बलदेव वैद से संवाद में करते हुए उन्होंने कही, वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हमें इतनी आदत हो गई है स्त्री और पुरुष को अलग अलग देखने की, उनमें भेद करने की, कि हमें उनके बीच जो समानताएं हैं उनको भी देखना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है। अब तीसरा अंतिम बिंदु है प्रतिकार। तो वैसे तो स्त्री का लिखना ही अपने आप में प्रतिकार है। जिस संख्या में आज स्त्रियां लिख रही हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अपने आप में ये एक क्रांतिकारी घटना है।
लेकिन अगर हम देखें कि स्त्रियों के लिखने से क्या अंतर आते हैं, तो जो मालादी गिना रही थी कि जब 60-70 में हुआ तो स्त्री ने साहित्य में अपनी स्वतंत्र अस्मिता को लिखा। उसके बाद उस साहित्य में ज्यादातर क्या था, बाह्य परिस्थितियों और मनस्थितियों का द्वंद्व था कि मन में कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और चल रहा है। तो वो सब उनके साहित्य में आ रहा था। इंदु जैन की कविता की एक पंक्ति है, मैं डरी जरूर पर मरी नहीं। तो ये जो रचनाकारों की पीढ़ी थी वो वही साहित्य सामने ला रही थी और उन्होंने ये जाहिर किया कि वे मात्र भोक्ता नहीं हैं, उनमें सृष्टा होने का, दृष्टा होने का संकल्प भी था। बाद की जो पीढ़ी आती है, जो गीतांजलि श्री, प्रत्यक्षा, वंदना राग, मतलब जो 80s 90s में लिख रही है, उनका अस्मिता बोध भी गहरा है, लेकिन वो अपने समय और समाज को एक आलोचनात्मक नजरिए से देख रहे हैं। इस समय पर कविता की दुनिया में अनामिका और सविता सिंह जैसी स्त्रीवादी कवित्रियां भी आ चुकी हैं। मैत्री पुष्पा का जिक्र किया मालादी ने। साहित्य में भी, कथा साहित्य में भी मैत्री पुष्पा जैसी स्त्रीवादी रचनाकार आ चुकी हैं। मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा, अलग अलग शेड्स मिलने लगे हैं। लेकिन उसके बाद की भी एक पीढ़ी है जो लगभग मेरी समकालीन है, नीलेश रघुवंशी, जिनका उपन्यास एक कस्बे के नोट्स, जिसे पढ़ने लिखने की इजाज़त मिली है, अपनी जिंदगी चुनने की इजाज़त मिली है, अपने घरों से बाहर निकलकर शहरों की तरफ ये लड़कियां निकली हैं, उन्होंने अपनी दुनिया खुद बनाने का फैसला किया है। वो दुनिया पितृसत्तात्मक समाज के बीच होकर भी पितृसत्ता के दबावों से मुक्त हो रही हैं। ये एक नया परिवर्तन है। वो अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश की स्वतंत्र नागरिक के रूप में पहचानना चाहती हैं। प्रभा खेतान, मृणाल पांडे का साहित्य भी इसी दृष्टि से देखा जा सकता है। 21वीं सदी इसी विरासत को लेके आगे बढ़ी है। पितृसत्ता के दंश, स्त्री पुरुष की बाइनरी दोनों यहाँ हैं, लेकिन स्त्री को किस दृष्टि से देखा जाए यह आग्रह छूट गया है। पुरुष समाज द्वारा तय किए गए मानक की तरफ ना तो देखा जा रहा है, ना ही स्त्री दृष्टि की अतिशयता को साथ लेकर चला जा रहा है। दरअसल 21वीं सदी की लड़कियां अपने होने को लेकर एक तरह से आश्वस्त हैं। वे जैसी हैं उसमें संतुष्ट हैं, कोई ओढ़ा हुआ संकोच नहीं। अस्तित्व को जताने के लिए जताने का भाव जाता रहा है और होने का भाव अधिक है। यदि समाज ने उनके होने पर शर्म किसी कोई शर्त लगा रखी है तो उसे ये स्त्रियां सिरे से खारिज कर नामंजूर किए दे रही हैं। अब स्थितियां बदली हैं और स्त्रियां अपने होने में, अपने वजूद में, अपनी देह और त्वचा में, अपनी मांस मज्जा में सहज हो रही हैं। समाज और परिवार दोनों जगह ये स्त्रियां बराबरी की जगह ढूंढ रही हैं। अब वे उसके लिए किसी प्रकार का समझौता करने के पक्ष में नहीं। इन सभी परिवर्तनों का एक सकारात्मक पक्ष यह भी हुआ है कि पुरुष रचनाकारों के बीच, स्त्री और पुरुष के बीच प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा परस्पर समझ, साझेदारी के पुल बने हैं। बहुत से पुरुष रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में स्त्रियों को चित्रित किया है। लीलाधर मंडलोई की कुछ पंक्तियां कोट करना चाहती हूँ। बाज दफा हम कहना चाहते थे बेटियों से कि हमारी सिरजी दुनिया उनके काबिल नहीं, कि हमें छोड़ना ही मुक्ति के रास्ते पहला कदम है। इस दौर में बेटी और माँ पर बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं। देह, यौनिकता, समलैंगिकता, नए नए विषय सामने हैं।
लेकिन उन्हें भी बोल्ड कहकर खारिज करने से नहीं होगा, उन्हें नए सिरे से पढ़ना होगा। इस सब का असर प्रेम की अवधारणा पर पड़ा है। प्रेम अपनी रोमानियत से बाहर निकलकर जो उसका यातनापरक हिस्सा है वो भी सामने आया है। गैर बराबरी के संबंध रिजेक्ट किए जा रहे हैं, अस्वीकार किए जा रहे हैं। स्त्री का चिंतन प्रकृति की तरफ बढ़ा है, इको फेमिनिज्म। हमने ये महसूस किया है कि सभी स्त्रियां समवर्ग नहीं हैं। जाति, समाज, जहाँ वो लोकेटेड हैं, चाहे वो आदिवासी समाज हो या कुछ इस तरह के बहुत से अंतर उनके बीच अलग अलग स्थितियां पैदा करते हैं। और इस नज़रिए से हम एक बार पुनः भारतीय सैद्धांतिक स्त्रीवाद की क्या हो सकती है उसकी तरफ देखते हैं, पाते हैं कि द्वंद्व बराबर बने हुए हैं, लेकिन उस डायलेक्टिक को स्वीकार करने से ही आगे की दिशा निकलेगी। उसमें शोषण की असंख्य कहानियां हैं तो शक्ति की भी हैं, जो अंधेरों के बीच सर्चलाइट से जगमगाती हैं। उनकी रोशनी में रास्ते स्वयं उजागर हो जाते हैं। ऐसी स्त्रियों की शक्ति के आख्यान भारतीय संहिता के रोल मॉडल हैं। पितृसत्ता के विरोध में स्त्री साहस की कहानी स्त्री आंदोलन का एक पक्ष है, लेकिन हमें स्त्रीवादी आख्यानों को लोकतांत्रिक देश की स्वतंत्र नागरिक दृष्टि से पढ़ना है। 21वीं सदी में ये संकेत मिल रहे हैं। यह एक नया स्त्रीवाद है जहाँ इस नई स्त्री को किसी से न कुछ मनवाना है, न स्वयं किसी के सम्मुख कुछ प्रमाणित करने की कोई जिद है। स्त्री ने अपने स्त्रीत्व को सहजता से स्वीकार किया है। धन्यवाद। Thank you very much, Rekha, for a very useful reminder that patriarchy is not synonymous with men versus women. Patriarchy is a system. Within that, there is opposition that comes to the assumptions of hierarchy between men and women, which is addressed by men writers as well as women writers, and you gave us several examples of that. So we come to the end of this session with the question that has been asked by many of us here. I think that's what we're going to take away, the questions. What is the location of woman power? Is it in just being able to write as a woman? Does it come through as being able to produce one's self physically on a public platform and recite poetry? Does it mean that men are ventriloquizing your voice as a woman? Or does it mean that women have come into their own and can speak for themselves, and that themselves has expanded from the individual to a sisterhood and a collective? So that is the map that we have covered. Now, Jyoti ji will have to tell me if there's any time for questions. All right. So we have, we can take 3 or 4 questions. If you'd please raise your hands, we would be very happy to receive your queries to the panelists. Yes, please. Well, you're welcome to make a comment. Let's just keep everything brief so that we can get in more voices. Thank you. Of course. This is to Raksanda Jalil. I really admired your paper. And since you were talking about parallel examples from Pakistan and other places, just wanted to remind you about the Landa tradition in Afghanistan. And this is a beautiful book, incidentally secreted out by by Sayyid Majroo. And these are the women who sing these songs. And these are two-liners, the Landa. And how they twist the songs on their head to make their voices count and question the deep-rooted. And we are talking about a society which is entirely different. So
patriarchally steeped. So these are the songs about love and war. And I thought that I'll just mention this to you. This might. For me, what is interesting about this tradition is because, incidentally, these have been translated into French by Majrou, and then retranslated into English, and I'll that's certainly look that, out for them. Thank you. So that would be, I thought, a bit useful. I was very happy to listen to all this. I was very happy to listen to all this discussion. And because we are sitting in Sahitya Academy, naturally all the discussion is hovering around literary figures and how much women are expressing themselves in words and literature and so on. What I feel that the society can change in favor of women, or it can be an equitable society only when we have more and more people in decision making, more and more women in decision making. Because you see that very few women are in power. We'll start from the union cabinet, see how many women are there. Look at the state government, where women can take part in decision making. So I think that women should come forward in all fields of life, express themselves freely, and try to get the share of power also. Why we are talking about 33% reservation only? Why are we talking? Let us walk the talk. See, till 75 years, we have not even got the reservation. So we should get that. Only then we will have an equitable society where we can talk of mutual cooperation and harmonious relationship. Thank you. It's a valid point, and I think the speakers and my own remarks in the beginning touched on a very vital link between political presence and literary articulation. We'll take one more question and then we'll bring the session to an end. Please, let's give 1 second, please. Thank you. It is a comment, really, an observation on what Rakshanda questioned us about, whether in Bangla we have women who are cited, And I was wondering, one has to look back and think, whether in Bangla we've had recitation of poetry, really. It is more to do with writing and putting down on paper. Maybe that's something a little different from the Urdu tradition, where recitation was a very big part, I think, of. Yes. Women also, one has to really think back, but maybe Mala, you could comment a little bit on this. In Bangla, do we have a tradition? There has been jatra and other kinds of forms of oral recitation, but poetry recitation to that extent as we see or hear about in Urdu, I think maybe there's something to read there. It's something that I've been thinking about, and I'll go to Rekha's reference to Tagore. I think Shantiniketan brought about a huge revolution in the possibilities of a woman's articulation, expression, and presence in public spheres. And of course, we read about the women writing and reading and presenting and acting. So there was a complete breakdown of that stereotype of the Antar Mahal and the outside world when it came to the configurations that Rabindranath Tagore and his family. So of course I can think of Swarna Kumari Devi and many others who were a part of the public sphere. So I think Bengal, and I don't know about Bengal, but certainly Shantiniketan itself, and I would imagine with Anando Mott and certain other classics that we have in the background. Of course, we have Toru Dutt writing poetry, before anybody else was doing in much of the rest of the country.
So I think, yes, Bengal has a very strong tradition of women in public spaces. Anyone else? Tanya? That's the last question we'll take from Tanya. Again, ma'am, adding to what you said just now, I mean, when it comes to women in public spaces, it was not just, recitation. Tagore also encouraged women to, sing, and that too without any accompaniments. And they would be, those places would be frequented by men. And also the Robindro Nritya that we say, he actually took that form from Manipuri. So, and he completely transformed it. And he kept on encouraging women to not just have solo performances, but also duets. And at one point, he came under severe criticism. It was stated, "Uni shobaike nachiye tulechen," in the sense, as if, the whole state was, especially the target was women. But he said that, it was said that he was, as if it was a, as if it was something slightly vulgar or obscene, because they were all out in the open and having duet performances, not also solo. So just wanted to add this bit. So thank you. And I think to that we can add what Leena was also talking about, Iravati Karve, and from a different profession to come into literature and to turn the discoveries of science into poetic and lyrical forms of expressing the female mind and the female body. So I think altogether the panelists have beautifully addressed the issue of women power from different literary contexts, different genres, and many possibilities within which the power is expressed. Thank you very much. And we bring this program to a conclusion with the words from our compere. That has been a fascinating session where we've explored how women have fought and overcome various challenges to carve a space for themselves and how they have impacted literature in the last 7 decades. Many ideas have been thrown up, many questions were asked, many answers have been sought, and hopefully someday those answers will be found. We would like to thank the chair, Professor Madhushree Lal, Leena Chandorkar, Rakshanda Jaleen, and Professor Rekha Sethi. One small photo op, kindly come forth. Thank you very much. We thank you, the audience, for being so wonderful. Our next session will start at 2:30, where we explore northern literature from North India at 2:30. And after that, we have another very fascinating session, I think at 4:30, about Dalit literature. Hope to see you then. And of course, please go and have yourself some lunch now.
which is the largest festival of letters in the world. In the 6th session of the National Seminar on Literature of Independent India, we explore the literature of Northern India. May I request the eminent Hindi poet, Sri Badri Narayanji, to chair this session, please. Sri Badri Narayan is also a social historian and cultural anthropologist and is at present serving as the director at GB Pant Social Science Institute, Allahabad. His important poetry collections include Khudai Mein Hinsa and Sach Sune Kai Din Hue. He has been honored with several prestigious awards, including Bharat Bhushan Agarwal Award, Kedar Samman, and the Sahitya Akademi Puraskar. May I also request on the dais Professor Rana Nayyar. Professor Nayyar is a noted translator and has retired as professor from the Department of English and Cultural Studies, Punjab University. He has over 22 books to his credit. He has translated 14 modern classics of Punjabi into English. He has also to his credit one collection of poems, Breathing Spaces, and 4 critical books to his credit. A committed theatre lover, Professor Rana has directed over 20 major full-length productions, and he has acted in many of them. Professor Rana will speak on Punjabi literature in independent India. Shri Shad Ramzan is an eminent Kashmiri poet and writer. May I request him to join us on the dais, please? Shri Shad Ramzan, besides hundreds of research papers, has authored about 15 books. He received the Sahitya Akademi Translation Prize for Anhar Te Akas and the Sahitya Akademi Award for his poetry collection, Kore Kakud Gome Pushrit. He is the convener of Sahitya Akademi's Kashmiri Advisory Board. Shri Shad Ramzan will speak on Kashmiri literature in independent India. Dr. Om Goswami, may I request you to join us, please? Apologies, Mr. Om Goswami is not on this panel. May I now request Professor Mahesh Sharma ji to join us on the dais, please? Professor Sharma is a professor of history at Punjab University, Chandigarh. He has been the India Chair Professor at the University of Tel Aviv, Israel, Senior Fulbright Fellow at the Center for India and South Asia at the University of California, and Fellow at the Indian Institute of Advanced Studies, Shimla. He has worked prominently on the social and cultural history of Western Himalayas. He was awarded the Discovery International Award by the Australian Research Council for a collaborative project with the Australian National University. Professor Sharma will be speaking on oral and tribal narratives of Northern India. May I hand the mic over to Shri Badri Narayan ji. Hello. Thank you. Thank you, Sahitya Academy and the organizers of the program, those who organize a panel on post-independent Indian literature and provided me this opportunity to chair this session. Mostly chair should not do many things, should not speak a lot, but I'll say a few things and then I'll request my co-panelists to speak on. Then in the last I'll say something. We have already listened the inaugural session and so many sessions around this theme. And we have observed that
Many things happened in Indian literature since 70 years. So many movements, so many discussions, so many discourse, changes in the craft, changes in the shift in the form took place. So many literary movements appeared, and now our speakers are going to reflect on various languages where these things had happened: Punjabi, Kashmiri, and also in oral tradition. And these new shifts which we have observed, my question is whether it happened at all India level in every language. What new shift? Suppose you must remember that in inaugural session we have heard that there are identity movements in every literature, women movement, gender movement, Dalit identity, so many identities, those who emerged in 90s and how they affected the literariness of India. The neoliberal time which emerged in 90 came due to neoliberal economy. How this time has impacted in literature in post-90s phase, which I used to call long 90s. How this long 90s is working in various kinds of literature. And before that, Nai Kahani movement, new poetry movement, our inaugural speakers talked about so many small movements took place in Bangla, Bhukhi Pirhi, Yutsa Pirhi, so many literary movements. Whether this kind of movement appeared in all the Indian literature, and if they appeared, why? And what were the socio-economic reason because of that, or cultural region, or the region of the influences from the West? What were the causes because of that these movements appeared? And if they don't appear, what happened in those literary, in the context, in traditions? And what are the reason because of that this kind of movements couldn't influence them? And this non-influence of these movements, is it progressive for that language, or is it regressive? So this kind of various questions which we are going to, our panelists are going to raise in it. And now this we are living in the post-identity age, where identity is in one way empowering, but on another way it is trying to subsume us. It's like a snake and rope. I used to call a snake and rope, because an identity which started identity movement in 90, in the first phase, it worked as a rope for empowerment for marginals, either women or Dalit or whatever. But after that, after a few years, we realized that it gave a kind of monotonous stereotyping, a kind of a very repetitions, very what we call in Hindi Atmaghati repetitions, and also based on various kinds of negation, because you are not women, so you can't talk about women. You can't write about women. You are not Dalit, you can't write about Dalit, you can't talk about Dalit. So in various kinds of negations, through various kinds of negations which we created because of this identity movement, what is happening? What is in our literary genres, literary repertoire? Whether we are losing or eroding ourselves because of this kind of movements, in terms of our resources, cultural resources, in terms of our craft or reflections, whatever. So and you know these are the serious questions, and you know the what we call writer kya karta hai? What writer does? Writer does through work through the device of empathy, and when empathy will be taken from you, what we will do? Because if you are not women, you can't write on women, so your empathy has no meaning there. So if you have no meaning of your empathy, how you are going to write on them? So these kinds of issues are emerging. I don't know how our panelists, how they have planned their presentations, but maybe these kind of things will help us to explore or to take this discussion further.
So now I'll request Professor Rana Nayyarji, who is eminent Punjabi thinker and literary critic and also literature, to reflect on this. And how many time do you have, Jyoti ji? समय division कैसे है? कितना मिनट है? 1.5 घंटा पूरा. So हम लोग divide कैसे करें? 20 minute everyone, and then question answer and share remarks. That's a good way. जी, please. Thank you. Make this session intimate, interactive, and two-way process. Maybe feel free to raise questions when question session will come. Not a bhashan kind of thing. Good afternoon, one and all present in this room. Professor Badri Narayan, the chair, Mr. Shad, Dr. Mahesh Sharma, and the august gathering in this room. I would like to thank the organizers first, and of course the chair, for giving me this opportunity to share some of my thoughts with you. Let me confess right in the beginning, because I don't really want that I should pitch my argument at a level where I'm misunderstood. So let me put my cards on the table. I am going to talk about literature, but I'm not really going to talk about literature from the writer's perspective, because I am not one. But I'm going to look at it from critic's perspective, which I think is also a valid way of looking at it. And in fact, another reason why I'm going to talk about critical perspective is because I happened to put together a book, Critical Discourse in Punjabi. I was one of the editors. There were other people along with me. We worked on it together. We translated criticism. We were basically trying to see how critical tradition has developed in Punjabi. I mean, that's the book we did for Routledge. It's already out, though I haven't received my copy as yet, so that happens. So I have tentatively titled my paper, Gazing Through History, Punjabi Critical Discourse, to put it very simply. Professor Badri Narayan, I think, has put the agenda very clearly. But let me raise certain questions which I find are more pertinent to the kind of discussion I want to initiate. I hope I'm allowed to do that. I think one of the first questions that I asked myself when I'm raising in this paper, I have a written text, I'm not going to read it. There are places where I'd probably read it and other places I'll just sum up the argument. One of the questions that I'm raising is that what is critical discourse, which is a fundamental question and a very obvious one, and how is it constituted? Thereafter, I offer two positions. One is that you can look at it in a very limited perspective, and you can think of critical tradition being linked with what we call literary productions, or it has some kind of an association with textuality or the process of textualization. Because Professor Mahesh Sharma is sitting here and he represents oral cultures, so I think he probably would be able to relate to the next point that I'm going to make. But we all understand that this is not the only thing. Literary productions are important, but then there is some kind of critical tradition available to us in oral cultures as well. So then the second point is that do we talk of critical tradition in any language? It has to do with Punjabi specifically, but I think we can extend it to, connect it to other languages as well. Do we talk of it as some kind of a phenomena that emerged after the emergence of what we call print culture, or what generally passes off as literary modernity? Or
there are some pre-modern elements also available to us where we can see traces of critical tradition. These are the two questions that I'm raising in the beginning. Now, just to put things in perspective for you, in the sense in which we understand critical tradition in Punjabi, it has developed in the last, let's say, 100 years or so, or a little over 100 years. That is the general sense we have. Of course, I'm going to argue against it later. So we essentially see it as a 20th century phenomenon. It started somewhere in late 19th or early 20th century. And the reason for that was because print culture began to emerge in our own language around 1850s. And a lot of prosody books were written, but those prosody books were written primarily with the aim of promoting teaching of Punjabi language. And it was expected that if people know Punjabi language, because there wasn't much of focus on Punjabi language as such, of course, the language was in circulation, but it hadn't really become language of the people. So we have movement in 19th century, it's called Singh Sabha movement, which had this exclusive aim to promote Punjabi language and Punjabi culture, especially the Sikh tradition. So, and with that objective in mind, they also started writing a lot of journals, a lot of journalistic writing came to the fore, which actually strengthened this print culture and paved the way for the critical tradition. Now, in a matter of speaking, if you are looking at, you see, primers began to be written around that time, but the tradition of writing primers is as old as Guru Angad Dev Ji, who's the one who is supposed to have written the first primer in Punjabi, so that people could relate to Gurumukhi and also understand Guru Granth Sahib, Guru Bani. Somewhere in 1812, the first grammar of Punjabi was compiled. And it's ironic that the first grammar was not compiled by a Punjabi, but by an Englishman. William Carey was his name. And he was incidentally the same person who had set up the first printing press in Serampur. And he's the one who compiled the first English grammar. Of course, subsequently, another grammar was compiled somewhere in 1868 by Lal Bihari Puri. So these efforts that were made are significant because they actually tell us how gradually we are moving forward towards the creation of some kind of critical tradition. Then in the beginning of 20th century, we have Bhai Khan Singh, he's known as Bhai Khan Singh of Nabha. He belonged to Nabha. He was a very erudite scholar. He was a polyglot, he knew several languages. Apart from Punjabi, he was well versed in Urdu, Persian, Braj Bhasha, Sanskrit, so on and so forth. He actually undertook a humongous lexicographic project. And it took him something like 14 years to complete that project. He started it in 1912 and he finished it in 1926. And this work was not published until 1934. It took him 8 years to publish it. It runs into about 3,300 pages. And it would surprise you that it's the effort of one man, but it has something like 64,000 entries in it. And this is known as Punjabi the Mahan Kosh. And that we give credit to Bhai Khan Singh from Nabha.
Now, these are some of the developments. Sorry. These were some of the developments that were taking place in late 19th and early 20th century. And these developments played a very, very significant role in the creation of critical tradition. Along with that, I think one should also mention how different magazines, literary and cultural magazines were started. There was a magazine called Pritam, which was started by Labh Singh in 1923. There was another magazine called Phulwadi by Gyani Hira Singh Dard in 1924. Preet Ladi, which is very popular and it's still there, by Gurbakh Singh in 1933, and Panch Darya by Mohan Singh in 1939. In this context, I could also mention Nagmani, which many people know, those who are familiar with Punjabi language or literature, was started by none other than the lady who became a legendary figure in Punjabi, Amrita Pritam. This was started by her in 1966. And I have no hesitation in saying that this particular magazine played a very important role in shaping Punjabi imagination as much as in shaping Punjabi culture and literary trends, because that's where most of the new poets used to get published. Amrita was that kind of a person who patronized young talent. So thereafter, when we have to talk about the first critical efforts, I would mention Baba Buddha Singh, who was born in 1978 and died in 1931. That is just to help you put him in some kind of a historical frame. He's often described as a pioneer in this area. Punjabi literary or critical tradition, it is believed, started with him. And he actually, Baba Buddha Singh was a scholar of Punjabi as well as Persian. And he wrote one work, it's called Prem Kahani, which was in Persian. His other work, Raja Rasalu, is in Punjabi. And this work, these two works are seen as his primary contribution. Interestingly, Baba Buddha Singh was not a litterateur. He used to write poetry and short stories, but was not a litterateur of repute. He was essentially an engineer by profession, but he decided to engage in this critical enterprise. The only point I would like to make about Baba Buddha Singh is that his criticism was impressionistic and subjective. And it also lacked what one would like to call theoretical base. And these two things, subjectivity and impressionism, they are reflected in the writings of some of the critics who appeared later, people like Puran Singh, who was a very famous mystic and a visionary poet, and Teja Singh. But it's generally believed, and I think this is where most of the Punjabi scholars agree, that Teja Singh wrote a book called Sahit Darshana, which is philosophy of literature. And they say that this is the first work in which he's raising certain fundamental theoretical questions. So we find that Punjabi critical tradition is moving away from subjectivity, from impressionism, as moving towards, it's taking some kind of a theoretical turn, if one may say that. But full-blown literary theory is not to be found there. Then if we are looking, or if we are thinking about the first history that was written in Punjabi, the name that comes to mind is that of Mohan Singh Diwana, who wrote, interestingly, a number of scholars of Punjabi criticism and even
practitioners of various genres, they were trained both in Punjabi and English. Mohan Singh Diwana wrote this history in English first and then later in Punjabi. That was way back in 1933. It was a very conventional kind of history, chronological, sequential. I think the question of literary history and its relationship with historiography remains very significant, though this did not figure in the discussion of Punjabi scholars until 1990s, the period that Professor Badri Narayan said was the longish period in the sense. That's the time when people like Professor H.S. Patia started focusing on these questions. If we are thinking particularly of post-1947 developments, then I think the name that comes to our mind is that of Sant Singh Sekho. He was a Marxist, a liberal, poet, novelist, and also a critic. He wrote a critical work called Satyarth in 1957, and that is the time Punjabi critical tradition takes the Marxist turn. As a matter of fact, he kind of did the groundwork, and thereafter a number of people followed the trail that he had left. And if you want to make generalization, then all shades of Marxism, let me say, or practically all variants of Marxism, from vulgar to orthodox, from unorthodox to revisionist, they have found their footprints in Punjabi critical discourse. Here I would just like to make distinction that is not mine, but which has been made by a reputed critic whose name I have already mentioned, Professor Patia. He divides the whole spectrum of Punjabi critical discourse, especially the Marxist discourse, into two segments: early Marxists and later Marxists. There's a long list of critics. It's there in the papers. I'm not going to read any of it. Those of you who are interested can possibly go back to the paper. But this is based more on chronology than anything else, the early Marxists, because Marxist critics in Punjabi are following the trail of Marxists there in the West. So as and when a new kind of Marxist theory came, it found a very happy place to flourish in Punjabi critical tradition. Along with this, another fact that needs to be emphasized is that we've also had our own, because I don't have time and space, and I'm supposed to sum it up, 2 minutes, yes. We have our own variants of formalism, structuralism, feminism, deconstruction, modernism, and postmodernism, so on and so forth. There's a Delhi school of Punjabi criticism represented by Professor Harbhajan Singh, which took the lead in this direction, but I'm not really going to talk about it. Briefly, let me say that there has been an effort in Punjabi critical tradition to also raise this question whether critical tradition is purely a modern phenomena, or could we trace critical tradition even in the pre-modern literature. So there are some people, if I have to mention a name, Harnam Singh Shan is one name that comes to mind. He's of the view that in the pre-modern literature, which was primarily oral, different forms apart from poetry, qissas, so on and so forth, you find traces of criticality. You find that you cannot actually separate the critical from creative. So that is the point that has been made. Ultimately, I think if you want to know what my position on this is, I would not like to talk about it either as a pre-modern phenomena or as a modern phenomena, because then we are talking in exclusivist terms, and I'm an inclusivist. So
I would like to put two together and say, if you want to get more holistic understanding, then I think we have to put both together and see how the relationship develops. Thank you. Thank you, Professor Anand Nair, for your wonderful exposition on the theme and raising the issue of criticality and linking it with creativity, posing the entire, presenting the entire historical domain of making the critical creativity in the Punjabi literature. And now I am going to request Shad Ramjan. Shad Ramjan is Ji from Kashmir, and he is eminent literature and critic. He is going to present his paper on Kashmiri literature in the past 7 decades. Means the Swadhin Bharat, 70 साल का स्वाधीन भारत और उसका कश्मीर का साहित्य. So now I request you to present your. आपकी इजाज़त से मुझे लगता है कि जब मैंने सुबह कोंकणी का उनका लेक्चर सुना और उसके बाद भी मैंने कई तकरीर सुनी, तो हम जिस तरह से लिटरेचर को या जानते हैं, पहचानते हैं या पहचानने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि हम खुद से भी ही कुछ नाइंसाफ़ी करते हैं. शायरी, खुसूसन शायरी को या लिटरेचर को किसी भी मूवमेंट से या किसी भी फिलॉसफी से, स्कूल ऑफ थॉट से जोड़ना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है. शायरी तो लिटरेचर मैं तो शायरी का ही जिक्र करूँगा. तो शायरी बहरहाल किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से या किसी भी ज़माने से उसको जोड़ा नहीं जा सकता है. अगर हम ये कहेंगे कि मॉडर्न पोइट्री का क्या रोल रहा है या मॉडर्न पोइट्री का थीम क्या है, तो हम हाफिज, शिराजी या गालिब, शेक्सपियर को कैसे पढ़ेंगे, उनको कैसे हम आज की जो पीढ़ी है उनके साथ किस तरह हम उनको जोड़ेंगे. इसीलिए शायर हर ज़माने में रेलेवेंट होना चाहिए और हर किसी इंसान के लिए से उसका अकीदा क्या हो, उसका रीजन क्या हो, उसकी ज़मीन क्या हो, उसकी लैंग्वेज क्या हो, और शायर हर किसी शख्स के लिए रेलेवेंट होना चाहिए. पहली बात ये. दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, मैंने लिटरेचर को पढ़ाया है 40 साल यूनिवर्सिटी सतह पर. शायरी के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हमें जो जानना चाहिए. क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि फिर मैं जिस तरह स्पीकर्स ने सुनाया अपने जो पंजाबी या कोंकणी जो हिस्ट्री, लिटरेरी हिस्ट्री, तो मैं किताब लेकर पढ़ूँगा, खुद भी पढ़ सकता है कोई भी बच्चा. तो मैं असल में हमें देखना यह है कि हमने शायरी में क्या खोया है या क्या पाया है. शायरी के लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. पहली कि शायरी का कंटेंट क्या है. कंटेंट क्या है शायरी का, शायर कहना क्या चाहता है, उसको हम थीम कहते हैं. शायर क्या कहना चाहते हैं, मैं शायरी की बात ही करूँगा. दूसरा कि वो जिस ज़बान में शायर कहता है या पोएम कहता है कि वो ज़बान मेटाफोरिक हो, उसके मेटाफोर्स कैसे है, वो किस ज़बान में शायर कहता है, क्या वो ज़बान, उसकी जो शायर की ज़बान हो, क्या वो रीडेबल है, क्या वो जो कारी है, जो सुनने वाला है, जो उस ज़बान तक पहुंच सकता है, उसका इडियम वो जान सकता है. 2 चीज़ें, थीम, लैंग्वेज. और तीसरा, जिस एरिया का शायर हो, जिस ज़मीन से वो ताल्लुक़ रखता हो, शायर उस ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए. पहली बात. अगर वो उस ज़मीन से नहीं जुड़ेगा तो मेरे ख्याल से वो उस धरती के लिए बड़ा शायर नहीं हो सकता है. हाँ, उसके बाद अगर वो आफाकी बन जाता है, वो दूसरी बात.
आफाक आला शायरी जिसको हम उर्दू में कहेंगे, अगर वो तब है, वो तो जिस तरह गालिब है, पहले अपनी ज़मीन से जुड़ना चाहिए। 3 बातें। उस एतबार से मैं अगर कश्मीर की जिक्र करूं, कश्मीर का जिक्र करूं, तो कश्मीर की जो ट्रेडिशन है लिटरेचर की, शायरी की, वो 4000 साल पहले है। एक क्यों सारी हिंदुस्तानी जबानों में हमारी ट्रेडिशन सबसे पुरानी है। गुनाडे को आपने सुना होगा या नाम सुना होगा, उसने बृहत कथा लिखी 4000 साल पहले। वही गुनाडे की वही बृहत कथा आपकी कथा सरित सागर है, जिसको आपने संस्कृत में ट्रांसलेशन किया है, और कश्मीरी से है वो फिर पर्शियन जुबान में उसको कलीदुद्दमना में तर्जमा हुआ। बेसिक तो कश्मीरी है। तो अगर हम उस ट्रेडिशन को देखें तो फिर हम लल तक पहुंचेंगे। 4000 साल से पहले फिर 700 साल पहले तक में पहुंचाया मैंने एक जुमले में। उसमें यह है कि लल ने एक जुमला का, ललदेद का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी शायर हमारे। उसने शेर में एक मिसरा कहा, उसने कहा असी ओस तो असी आसो, हम ही थे, हम ही होंगे और हम ही रहेंगे। इसका मिस्टिक माने कुछ और है, लेकिन अगर मैं एज क्रिटिक इसका माने करूँ या एक लिंग्विस्टिक इसका माने ये भी करूँ, एक तारीख शनास बनकर, एक हिस्टोरियन बनकर इसका माने करूँ, तो मैं करूँ जो कश्मीरियों की ट्रेडिशन है, उनकी ज़बान का जो तारीख है, उस कौम की जो ट्रेडिशन है मजबूत है, लल का इशारा उस तरफ है। अगर हम उस ट्रेडिशन को ना समझेंगे तो आज की जो आप जिस पर आज जो हमारा पेपर, मेरा पेपर है, तो हम इस ट्रेडिशन को, जो हमारी नई पीढ़ी है, उस ट्रेडिशन को, आज की ट्रेडिशन को नहीं समझ पाएगा। ये एक कड़ी है और हर कड़ी पर एक अपना एक दर्जा है। उस दर्जे को, उस मकाम को, उस ट्रेडिशन को हमें जानना चाहिए। तो जब हमारी 20वीं सदी की 19वीं सदी की शायरी आए थे, उसमें तो एक शेर में एक सुनाना और चाहूँगा मैं। ट्रेडिशन की बात जब मैंने की तो एक स्वच्छकराल है, शायर है, उसने एक लिखा है एक मकालमा, डायलॉग। 19वीं सेंचुरी में उसने एक डायलॉग लिखा है, दपियो मई बाल यारस ये लागो। मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, वो समझते हैं, पंडित है मेरे दोस्त, डॉक्टर गौरी शंकर है ना। तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही है। तो उस नज्म को जब अल्लामा इकबाल ने सुना है तो उसके बाद उसने एक जवाब शिकवा और शिकवा लिखा, क्योंकि वो जो डायलॉग हो, जो मकालमा है, वो जिसको हम सूफी ट्रेडिशन कहते हैं। कश्मीर की शायरी अगर आप किसी दौर की पढ़ोगे, कश्मीर की ज़बान को लेकर, कश्मीर का अफसाना लेकर, कोई भी जॉनर आप पढ़ेंगे, उसमें मिस्टिक ट्रेडिशन आपको बिल्कुल ही मिलेगा, क्योंकि ऋषियों का देश है, ये तो सूफियों का देश है। तो आप नुंदऋषि को देखिए, तो फिर अगर आप 19वीं सेंचुरी की 20वीं सेंचुरी 20वीं सदी की बात करेंगे तो मैजूर की को आपको पढ़ना होगा। तो मगर आप और जो हम हिंदुस्तान की जो बाकी ज़बानें हैं, हम और एक फ़र्क ज़रूरी है। फ़र्क ये है, उस वक्त हम अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हम डोगरा राज के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई बात एक थी, मामला तो एक था, मान लो तो आज़ादी का था। तो जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट आई, तो उस प्रोग्रेसिव मूवमेंट ने कश्मीरी शायरी को मुतासिर किया पूरी तरह से। अगर हम महजूर को पढ़ेंगे, अगर हम आज़ाद को पढ़ेंगे, उसमें वो ज़रूरी है, लेकिन अगर इन डेप्थ हम इन दोनों का भी मुताला करेंगे, इवन हम दीनानाथ नादिम का मुताला करेंगे, तो उनमें भी हम अपनी ट्रेडिशन को, जो लल दत्त का ट्रेडिशन है, जो नुंदऋषि का ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को हम कहीं ज़रूर पाएंगे। हमारी उस जो प्रोग्रेसिव पोइट्री भी हमारी है। ये मतलब मेरी बात का कहना यही है, मेरा कहना यही है। तो फिर अगर हम 60 की बात, जैसे आपने कोंकणी की कही, तो बिल्कुल सिनेरियो बदल जाता है। हमारा भी सिनेरियो 60 में बदल गया पूरा, कि जब हमारे हिंदुस्तान के ज्ञानपीठ अवार्डी प्रोफेसर रहमान राही की बात आती है। ज्ञानपीठ अवार्डी थे, मेरे गुरु थे। तो उन्होंने कश्मीरी शायरी का बिल्कुल ढांचा बिल्कुल बदल दे दिया, मॉडर्न पोइट्री हम जिसको कहेंगे। लेकिन वहाँ भी पर मेरा एक सवाल ज़रूर ये है, आप सभी जहाँ बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं, वहाँ भी
हमारा वो ट्रेडिशन, यानी हम मशरक से जुड़े हैं, यानी हम संस्कृत और फारसी से जुड़े हैं। कश्मीरी कौम पहले संस्कृत से जुड़े हम, उसके बाद पर्शियन से जुड़े हैं। तो वेस्ट से हम जुड़ गए, लेकिन पूरी शायरी हमारा रहमा राही इतना बड़ा मॉडर्न पोइट है, लेकिन अगर हम उसकी शायरी का मुताला करेंगे, उसने भी कहा है सो युस छुक्त सु म्योन फरियाद बोस, आप जो भी हो, लेकिन आप जो मेरा दर्द है उस दर्द को आप सुन लीजिएगा। यही दर्द हाफिज का था, जब हाफिज ने कहा आरिफ कू की कुनत फहम ज़बान सोसन, क्या कोई ऐसा फूल है जो कब्र पर खिलता है, फूल का कोई है जो इस कब्र के फूल की जबान को समझेगा, ताकि उसको ये पूछेगा तुम मुरझा क्यों जाते हो, जब खुल उठते हो एक मौसम में तो दूसरे मौसम में मुरझा जाए। तो यही सवाल लाल का है, यही सवाल नुंदरशी का है, यही सवाल महजूर का है, और यही सवाल रहमान राही का, और यही सवाल मेरी शायरी में शाद रमजान का है। यानी जो आला शायरी है, जो आफाकी शायरी है, उसमें हम किसी भी तरीके से किसी स्कूल ऑफ थॉट की तरफ अगर जरा भी रुजू करेंगे तो हम गुमराह होंगे। किसी भी जमाने के साथ उसको जोड़ेंगे तो हम अपने जो सुनने वाले हैं उनको हम गुमराह करेंगे, जो नई पीढ़ी है। क्योंकि जो आला शायर, उसमें जो इंसान है, उसी इंसान के मुतलिक जो उसके अपने सवालात हैं, कायनात के मुतलिक, दुनिया के मुतलिक, खुदा के मुतलिक, खुद के मुतलिक मैं कौन हूँ, वो सवालात जो हैं, जो शायरी है, वो बड़ी शायरी है, उस शायरी में वो आपको मिलेंगे। अब गालिब को पढ़ेंगे वो आलम तिलिस्मे शहरी खामोशां है सरबासर, वो कब्रिस्तान की जिक्र करता है कि कोई आता है कोई जाता है, मगर दूसरे मिसरे में कहता है यहाँ मैं गरीब किश्वरे बूदो नबूद था, यहाँ मैं ही अजनबी हूँ इस शहर का, जिसको आने और जाने का ये मामला कुछ समझ नहीं आता। तो जब आप मेरी नज़म को आज सुनेंगे, वो भी 2 मिसरे सुनाऊंगा कश्मीरी में। हे खुदावंदा बुछुस सुली सुबहन यकीन सजद सोचा परांचुसला निदा गुस इल्लल्लाह वातुन, और मेरा जो क्वेश्चन भी है वही भी यही है, वही कायनात की उस अजली कारीगर से है जिसने इस कायनात को बनाया। ये मुझे लगता है कि शायर को, जो कारी है, रीडर है, रीडर को अगर हम बांट देंगे तो हमने शायरी को बांटा, अगर हमने शायरी को बांटा हमने जबान को बांटा, अगर हमने जबान को बांटा हमने कौम को बांटा। अगर हम ये कहेंगे बंगाल की शायरी, अगर हम ये कहेंगे पंजाब की शायरी, हम ये कहेंगे हिंदी की शायरी है, उससे मेरे ख्याल से जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसको हम ठीक तरह से उसको हम जो अपनी पूरी इंडिया की ट्रेडिशन है, हम हिंदुस्तानी सब है, उस ट्रेडिशन को हम मजबूत नहीं कर रहे। इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि शायरी शायरी है, चाहे किसी भी कौम से है, चाहे किसी भी जबान से है, किसी भी जगह से है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये, हमारी और एक प्रॉब्लम शायरी में आ गई, वो तो आ ही गई, अब हम उसको निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि 90s में जो कश्मीर में हालात हुए, उसमें हमारे एक बरादरी जो मेरे साथ बैठे मेरे भाई, इनको वहाँ से निकलना पड़ा। तो इनकी जो शायरी है या यहाँ अफसाना है, तो उसमें एक दर्द है, लेकिन जो वहाँ बैठे पंडित हैं, मैं मुसलमान हूँ, ये घर से भागा, उसका दर्द क्या है? मकान का दर्द है, उस आंगन का दर्द है जिस आंगन में सुबह खिलता हुआ आफताब को देखता था। उसका ये दर्द है कि उसके जो यार दोस्त वो गुम हो गए, वो उसको नहीं मिलते हैं। उसके अपने वतन का दर्द है, अपने मकान का दर्द है। लेकिन जो मैं मुसलमान हूं, मेरा भी वही दर्द है, लेकिन अलग किस्म का दर्द है। शेर एक सुनाऊंगा, चची जायज सचर, अपने दोस्त के नाम है मेरी गजल तलाशी के नाम, चची जायज सचर, यानी आपके पास मकान नहीं है, लेकिन मेरे पास मकान है, लेकिन बसने वाले नहीं, कि उनको मारा गया है, 2 लाख मर गए कश्मीर में। यानी आपके पास मकान नहीं है, दर्द है। मेरे पास मकान है, मगर मकान में जो रह रहे हैं वो नहीं है, वो मकान में नहीं। अगर आपके पास शमशान है, शमशान चशी, तो आपके पास शमशान है, लेकिन मेरे लिए कब्र जो है, जो जमीन में कब्र खोई, वो डल है, झीली डल है, उसमें हमारी लाशें तो झील में फेंकी जाती है। तो दर्द है, लेकिन 2 तरह का दर्द है। लेकिन अगर उसको जोड़ा जाए तो दर्द ही कहेगा वो दर्द कहलाता है जो लल ने दिया है। जो लल ने एक ऐसा मिसरा कहा है, उसने कहा कि
आमिपन सुदरस नाविछस लमान, यानी उसने दर्द कहा कि उसने कहा जिस ऑरिजिन से मैं आई हूं, मैं कब उस ऑरिजिन से जाकर वापस मिल पाऊंगी। वो स्वर्ग की बात करती है, खुदा की बात करती है, वो दर्द है, वो जो दूर होने का दर्द है। हम हमारे हिसाब से कुरान की आयत है कि अल्लाह नूर समोत वाला अर्द, आयत ये है कि जो इंसान है वो खुदा के नूर से जुदा होता है, वो कब वापस मिलना चाहता है। तो लाल का वो दर्द है, इस पंडित भाई का ये दर्द है, अपने मकान और अपने दोस्तों से मिलना चाहता है। मेरा ये दर्द है कि मेरे जो दोस्त हैं वो रहे नहीं। तो इस तरह से जो हमारा जो शायरी का मुहावरा है, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज की बात की, थीम आ गया, जो शायरी का जो मुहावरा है वो मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफोरिक लैंग्वेज हम कहेंगे। अगर हम मुहावरे के भी दो किस्म हैं। एक ये है कि जो आज जबान में आप, आज की जबान है, प्रेजेंट एज की जबान है, इस जबान में आपको उसी जबान में आपकी शायरी का मेटाफर होना चाहिए। आप 6 साल पहले जाओगे, 600 साल पहले जाओगे तो मेटाफर वही होगा। मेटाफर करीब, मैंने कबीर को सारा ट्रांसलेट किया है, तो वह मुहावरा उस कबीर का अलग मुहावरा है, फिर इकबाल आया उसका अलग मुहावरा है, फिर और कोई शायर उसका अलग मुहावरा है। एक तो ये, दूसरा है शायरी मुहावरा। वो शायरी मुहावरा को परखना है। जो क्रिटिक होता है, जो कारी होता है, अगर वो शायरी मुहावरा तक नहीं पहुंचता है, वो शायरी के मजमून तक नहीं पहुंचता है। क्यों? एक जो लफ्ज होते हैं, अल्फाज, उसके बहुत सारे माने हैं। एक मिसाल मैं दूंगा, ये किस तरह शायरी में मेटाफर इस्तेमाल की जाए। हमारी शायरी में कबीर ने इस्तेमाल किया, फिर हमारे शेखुल आलम ने किया है, फिर बहुत सारे। ये लकड़ी है, इस पर मेरा हाथ है, मेरा हाथ जला नहीं, लेकिन इस लकड़ी में आग है। जो वेद्स हैं, मैंने वेदों को पढ़ा है, उन्हीं की बात कही है। ये जो आग है वही खुदा है। जो गुलाब है, ये खुदा नहीं है। जो इसमें आग है वही खुदा है। जो गुलाब है वो खुदा नहीं है। जो गुलाब में खुशबू है वही खुदा है। लिहाजा उस लैंग्वेज को अगर आप ना परखेंगे तो आप इसको लकड़ी समझकर प्रेजेंट करेंगे। जो क्रिटिक हो उसको ये लकड़ी के तक नहीं जाना है, उसको ये लकड़ी में जो आग है, तो उस आग को आवाम तक या रीडर तक पहुंचाना जरूरी है। तो अगर तब जाकर देखेंगे, तब मैं एक बात कहता हूं तो कुछ लोग मेरे नाराज भी होते हैं। मैं ये कहता हूं कि कश्मीरी शायरी जो है, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात करूंगा। ये कहूंगा मैं, ये बहुत मुश्किल बात कहनी है तो, लेकिन मैं कहूंगा हमारा मेटाफर डिफरेंट है। मेटाफर की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं कश्मीरी सूफी पोइट्री को करूंगा, पूरी पर्शियन शायरी को आप सामने रखेंगे, लेकिन कश्मीरी मेटाफर को पढ़ेंगे वो अलग है। पूरी संस्कृत शायरी को आप पढ़ेंगे, दो मैंने कहा हमारे दो हमारे इम्पैक्ट है, एक संस्कृत और पर्शियन। एक मिसरा में पढ़ूंगा शमस फकीर का, शिनिया गश्ती ओस में उन ओलुई इम इश्क नारन, ये समझ पाए इश्क नारन। वो कहता है शिनिया की शना से जाकर मेरा शून्य जाकर मेरा घोंसला था। तो ये जो मेटाफर है, ये ना पर्शियन में है ना संस्कृत में है, ये अलग किस्म का मेटाफर है। क्यों है? जो ट्रेडिशन हमारी है ये बहुत पुरानी ट्रेडिशन है। तो मैं आखिर में यही कहूँगा, टाइम तो इशारा दे रहे हैं कि ये कहूँगा कि कश्मीरी जो शायरी है, जिस पर जो हम कहेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन लिटरेचर, उसको परखने के लिए हमें 4000 साल पहले की ट्रेडिशन को पढ़ना ज़रूरी है। अगर उस ट्रेडिशन को हम ना जाने, उस लैंग्वेज को ना जाने, उस मेटाफर को ना जाने, तो हम इस पीढ़ी को, जो अपनी बात है, मेरी शायरी मैंने कही, जो भी जिसने भी कही हो, हम उसको समझाने में हम नाकाफी रहेंगे, ना अहल रहेंगे। तो दूसरी बात, अगर शायरी को हम बांटेंगे, हम इंसान को बांटते हैं तो हम कौम को बांटते हैं, लिहाजा हम हिंदुस्तानी हैं। अगर हम ये कहेंगे शायरी हमारी हिंदुस्तानी है, जिस तरह मैं बोल पाया तो मैं हिंदुस्तानी में बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, तो शायरी हमारी भी पूरी हिंदुस्तानी है, चाहे कश्मीरी की हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो। तो उस शायरी में है हिंदुस्तान की कदीम ट्रेडिशन। उस ट्रेडिशन को ना देखें तो हम खुद के लिए नाइंसाफी करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद शाद साहब ने बहुत अच्छे से जो कश्मीरी पोइट्री और कश्मीरी कविता
का संबंध पूरे भारतीय कविता से स्थापित किया। और सचमुच सूफी परंपरा तो पूरी भारतीय परंपरा है और उसके साथ और पूरी दुनिया की परंपरा भी है, क्योंकि सूफी एक भाव है और वो भाव पूरी दुनिया में कहीं भी होती है। और कविता का जो आधार है, जो मूल भाव है, जो प्रेम, विरह, करुणा, ये सारे मिलकर सूफी भाव बनाते हैं। तो बहुत अच्छे से, और जो नए शिफ्ट आए हैं, जो नया डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो कैसे कविता में आ रही है, यानी वो जो हमारी ट्रेडिशन है भावों का और जो नए सवाल हैं वो कैसे जुड़ रहे हैं, ये सारी बातें आपने बताई, बहुत ही अच्छी तरह से आपने चर्चा की। अब मैं अपने इस बहस को हम आगे बढ़ाते हैं और नाउ आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट डॉक्टर महेश शर्मा जी, and here is a shift in discussion, and this is about oral traditions, oral and tribal narratives of the northern India in the post 7 decades. Oral and tribal narratives, in oral or maybe print also. In oral, shifts in oral traditions. Any means oral tradition is not always eternal. It has also go through various kinds of shift and changes. So Mahesh Sharma ji is going to reflect on that. Now I'll request you to. Northern India. Yes, please. Thank you. Thank you, Professor Badri Narayan ji, Dr. Rana Nayyar, Shad sir, and friends. Of course, I'm going to talk about the shifts. It's shifting oral narrative of the Himalayan tribes in the last 7 decades. And Northern India would be too large, and even this would be too large, actually. Himalayan tribes. But before I talk about this, we have to reflect about the way the tribes have been considered. One is the anthropological sense of tribe, where we are talking about a tribe as a community, a territorial community, about their distinct culture and language. And the other is the scheduled list of tribe. This is by the government of India, and sometimes there is a dissonance between the two. So we have to keep this in mind, and keeping this in mind are 4 major tribes that one can think about. 3 of them are territorial. One is Loholas. Loholas of Lahol Spiti. The others are the Kinnoras, the Kinnars of Kinnor. The third one is Pangwals of Pangi. Now they have a distinct location, a distinct territory. They don't move. But the tribe that I'm going to focus upon is the tribes who are the shepherds, the Gaddis. Now they do have a kind of a homeland, but they are transhumants. They move from Lahol Spiti to Gurdaspur, say from 4,500 meters to about, say, 100 meters. That is their annual journey. I'm going to focus on this, primarily also because of the facility of language. There is not much print material on these tribes. The Loholas and the Kinnars, they are largely Buddhists. So we do have some kind of Buddhist literature. There is also some translation of the songs of the nuns, particularly of the songs of Kinnori nuns. They are mostly Lamaic Buddhists, if I may call it.
particularly they are what is known as Drukpa and Nagimpa, that is the red hat sect and the yellow hat sect. They do not belong really to the Dalai Lama sect. Of course, the Dalai Lama is the overarching authority, religious authority, as well as the secular authority. So we don't have much either in print or say, I don't know much about their oral tradition. Pangwals, incidentally, you know what happened in 1950s when Chandigarh was created? The government of India decided to shift Pangwals from Pangi because for 9 months it was cut off from the rest of the country. So they thought that it would be important for them to shift in a hospitable climate. So in what is today are the posh sectors, sector 9, 10, they were, actually placed there. But after a couple of months, much like what happened in Northeast when Elwin, and Nehru devised a plan to give a permanent housing in Northeast, these people declined and they went off. So this is the kind of terrain that we are talking about. These are the kind of people we are talking about. So not much has been written about them. Incidentally, the shepherds, the Gaddis, are perhaps the most written about tribal community in India, particularly the shepherding community in India. And I would like to chart the course of the shifts in their narratives. I can think of shift in two ways. One is if I consider the literature that has been written about them, the shift that comes in that literature, which is largely anthropological literature and little historical literature, one of them being me who contributed to it. But along with that, as I started collecting their songs, as I started interviewing them, there are shifts in their oral narrations as well. So I'm going to talk about, in a way, about both of them. They, in a larger sense, meet with what Badri Narayanji started with saying about the questions of identity, about those long nighties, about neoliberal program, and how it impacted even that community which has been moving. It's a question, the way the identity changes, the way they disown their identity, but then come back to reclaim their identity. So these are two different shifts that I can think about, and both these shifts are reflected in the literature that has been written about them as well. The earliest of the writings, as in any other place, are in 1870s, 1880s, when with the settlement program and the British administrators, they started inquiring about these tribes. 1857 was traumatic for them in a very different way, that British administration that took over Punjab, they were wary of the peripatetic movements. And because of those peripatetic movements, they decided to settle these tribes. So what happened was that they would partially move, and for a brief time, they would settle their families. They would settle their families in, say, places like Kangra, in places like Jammu, and other areas as well. Other thing that I would like to just briefly touch upon is that when we think about these tribes, about these shepherds, they are also the cultural carriers. So they are not talking about their own oral traditions. They are also carrying with them the traditions from the area into which they frequent, and those are reprocessed. This is how the song lines are made. So the songs from Jammu would come to Kangra, songs from Kangra would go to Garhwal, and so on and so forth. So there is a reprocessing that is also going on. In post-independence, the first major work
was done by Newell. And along with that, one of the celebrated work that was done on their marriage and the tradition by Fillmore. Newell went on to document them for the Census of India series, and some of the villages were chosen in Brahmor and Kukti. Fillmore was a Protestant priest, and he came and he wanted to compare the type of traditions in England as well as, say, with the tribes here in India. But in the process, he went on to document the significant ways in which the Gaddis were trying to shed their identity by appropriating the cultural nuances and traditions from the area to which they frequented. So there was a kind of a Sanskritization that was happening with them, and slowly they would assuming the caste identities. So the tribe which we would think about as an egalitarian tribe, as an egalitarian community, became segmented community. They're not necessarily following the kind of a hierarchy, but still segmented community nevertheless. In the 70s, some of them, though this was started, as I just briefly mentioned, by the British, they started settling down. So they gave up their flocks, they gave up their herding practices, some of them, and started settling down in places like Jammu, places like Kangra, places like Mandi, and so on and so forth. So they turned into agro-pastoralists. So from pastoralism, they became agro-pastoralists. Along with this, what is happening is that they are also already, the caste system has already come into the community. So they are shedding their language as well. So they were always bilingual because they were moving to these different communities, and in order to facilitate the trade, they were always acquiring the language of those areas. This settlement leads us to the changes coming up in 1990s. The 1990s is also, this is the time of Mandal Commission. And in the Mandal Commission, there is this aspirational politics that is also happening. They already have this scheduled tribe status, but the scheduled tribe status is in the area, in their homeland. Scheduled tribe status is not in the areas in which they are settling. So now this is a kind of two communities. One is the settled community who are trying to acquire this status, while there is a community which is already a homeland community, which is trying to, and there are agitations which is trying to deny them this status because of the aspirational politics. It's about jobs, it's about making an MLA, and so on and so forth. So if you have left the area, you cannot acquire that status. If you have left the profession, you are no longer a tribe. So if you have acquired a different kind of a caste, you are a part of a caste community, so you cannot acquire that kind of status. So here comes this queer question interesting question about identity. Who are the Gaddis? The Gaddis who are, wearing the kind of attire that they do, speak the language that they do, who are shepherds. Are they the Gaddis, or the Gaddis who were once the Gaddis, but now settled in different areas, perhaps acquired a different caste, a hyphenated community, that the Gaddi Brahmins or a Gaddi so and so and so forth? Are they also the Gaddis? So in order to subvert these kinds of questions, a different kind of movement is coming up. Now they are trying to acquire the Gaddi status by going back to the language, by during the time of their festivities donning their attire, reviving the traditions of singing and the rituals of Navala, for instance, the night-long vigil to Shiva in a local form as Dhudu. They are Shivites. So reviving those kind of traditions, making a sacred territory
It's very interesting. Initially, there were no temples in the entire Gaddi land, except in Burmah, and Burmah was once an area of a capital of the state. So there were temples, but they are Sanskritic temples. But there are no temples. Then, from 90s to 2020, a number of temples they come up. These are the people who are now going to their temples. They are trying to make a connection with their homeland, which is actually not their homeland for a long period of time. Along with that this is where a new kind of oral tradition is coming up. While in, say, for instance, in 1970s, they are more concerned about their herding profession. And there is this beautiful song about their environmental consciousness. This is a place called Surgani, where a hydel project came up. And they say that Choti Surgani Bada Dam Bana, Pehle Tha Pahad, Hun Maidan Bana. I mean, so this is roughly what it would be in Hindi. But now, these are the kind of songs which are not really required. The songs which take them back to their identity, about Dhudu, the Shiva, about the whole connection of Shiva, and that is Dhudu, and the Gaddis, and about the whole profession of herding, about the question of the making of identities. These are the questions, which are significant at this point in time. So what oral tradition, though I have not touched largely on oral tradition, but through oral tradition that we can see, through their kind of politics that we can see, that not only the oral tradition is also impacted by these kind of trends, but they, in a certain sense, the oral tradition is reflective of these kind of trends. So the duality of the identity, and then giving away and then reclaiming the identity, the quest goes on. Along with that, just a final note, the aspirational politics that we speak about, there are certain other tribes also. For instance, the lumberers, the Halis, who were once the tillers, people who left, people who became then the Dalits at one point in time. They would now like to acquire the scheduled tribe status. They would now, they now see Gaddis as a kind of a community to which they can claim their membership of. Whether they belong to that or they did not belong to that community historically is a different question. That is a new kind of a movement, new kind of tradition, a new oral tradition being reinvented is what is going on in the ground today. Thank you. Thank you, Mahesh ji. You must have observed that narrative changed. Narrative never remained constant, and change because of aspirational changes, because of change of the requirement, because of the change of time and space. And these changes you must have observed in the case which he presented. And similar kind of case you can find in different parts of India among the shift of the narratives of the marginals. And that shift, maybe somewhere you can find just opposite what he is saying in his case. Maybe some different kind of case studies you can find in different part of area, because narrative is a very interesting domain of where many things is happening today. Politics, democracy, aspirations, identity, and various kinds of things, and eternity also. Many kinds of things are happening. So now I'm going to, I'm requesting you, we'll have some time, 5-10 मिनट का समय है. 3 सवाल हम लेंगे, 3 questions. 3 सवाल अगर इससे जुड़ा हुआ किसी के भी पास हो, not comment, questions, sharp questions, brief questions you can pose, and our panelists will respond. Yes. सर, मेरा नाम तेंजिन है, मैं हिमाचल से हूँ. तो गद्दी के बारे में सुनने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा. मैं खुद तिब्बती हूँ, टिबेटन रेफ्यूजी. लेकिन गद्दी के बारे में जितना मेरा जानकारी है
मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी जिस दृष्टिकोण से आपने वो ये प्रेजेंटेशन किया। मेरा प्रश्न ये है कि अभी गद्दी की एस्पिरेशन, एक शेड्यूल ट्राइब के नाम की एक एस्पिरेशन जो चल रहे हैं, और उसमें नॉट जस्ट पॉलिटिकल एस्पिरेशन, एक हिंदुआइजेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, क्योंकि उनका नैतिक रूप से उनका अपना देवता है, और देवता तो 1000 देवताएं हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे हिमाचल के लैंडस्केप में क्या, पॉपुलेशन और पॉलिटिक्स के लैंडस्केप में क्या फर्क पड़ेगा? आपको कैसे लगता है? ये पूछना है जी। मेरा नाम अलका त्यागी है। मेरा सवाल शायद रमज़ान जी से है। उन्होंने जिस तरह से मेटाफर की बात की, तो वो बता रहे हैं कि पोइट्री में जो रियलिटी रिफ्लेक्ट होती है वो केवल मेटाफर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन मैं उनसे सवाल करूँगी कि जिस तरह से पॉलिटिक्स पोइट्री में एंटर करती है, तो उसके लिए आपका क्या आपका पर्सपेक्टिव है उस पर? ठीक है, अगर नहीं है तो आई रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल महेश शर्मा जी टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन एंड देन शाद साहब। तेंजिन, शायद आप मैक्लोडगंज से हो। हाँ, और समझ सकता हूँ क्योंकि आप उधर गद्दियों से घिरे हुए हो। वहाँ पे गद्दी बसाए गए थे, और जो उधर स्लेट्स की खाने हैं उनके वो मालिक हुआ करते थे। कुछ अरसे पहले जो मैं ये अभी पॉलिटिक्स की बात कर रहा था, धर्मशाला में इनफैक्ट तिब्बती और गद्दियों के बीच में किसी तरह का जो है वो, प्रेस ने तो उसको कम्युनलिज्म का कलर दिया था, पर जो है वो एक जो इकोनॉमिक दोनों की जो टेंशन्स हैं वो सामने जो है वो आई थी। जो धर्मशाला के गद्दी हैं और भरमौर के गद्दी हैं, मैं यही कहना चाहता था, जो घुमक्कड़ गद्दी हैं, जो नोमैड्स हैं, जो शेपर्ड्स हैं, वो फ़र्क है। और शेपर्ड के पास तो शायद इतना वक्त ही नहीं है, वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने में है। भरमौर का गद्दी की जो एस्पिरेशंस हैं वो बिल्कुल फ़र्क हैं। जो धर्मशाला के गद्दी हैं, जो कांगड़ा के गद्दी हुए, उन लोगों को, वैसे जम्मू में भी हैं, उन लोगों को अभी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल गया है। ये गद्दी जो है, जैसे कि हिंदुस्तान में और जगह भी हुआ है, और 1947 के बाद यहाँ पर एक धीरे धीरे हिंदू कॉन्शियसनेस की बात जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से 1970-1980 के दशक से पहले जो है वो कास्ट सेगमेंटेशन में होती है। ये सारे जो धर्मशाला वगैरह की गद्दी हैं, ये किसी तरह की कास्ट ग्रुप्स के साथ जो है वो बिलोंग करते हैं। तो इनकी जो हिंदू कॉन्शियसनेस है वो उस धारा से जुड़ी हुई है। भरमौर में जो है वो और तरह की कॉन्शियसनेस जो है वो मिलेगी। तो एक हिमाचल के साथ इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? हिमाचल के साथ तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है, पर जो शेड्यूल ट्राइब की जो मूवमेंट है, और अब शेड्यूल ट्राइब से ज़्यादा जो है लोग शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस को भी इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि छोटे से प्रदेश में अगर आपको ओबीसी का स्टेटस मिल जाता है तो आपको एक बड़ी जो है तादाद में, आप जो 27% है करीबन, तो वो इसकी एक अपनी किस्म की पॉलिटिक्स है। पहले लोग दलित बनना चाहते थे, जो लोग हैं 1952 में, सर ख्याल ये था, पेरी की स्टडी में कोहली अपने आप में डिसाइड कर रहे थे कि हम दलित का स्टेटस ले कि नहीं, क्योंकि दलित का स्टेटस लेने से हम दलित हो जाएंगे, हम स्वर्णों के साथ बैठ नहीं सकेंगे। वक्त की एस्पिरेशन के हिसाब से उन्होंने दलित स्टेटस लिया। ठीक, तो कुल मिलाकर बात यह है कि पॉलिटिक्स है, हिंदुआइजेशन की पॉलिटिक्स है, जैसे और जगह की पॉलिटिक्स है, वो गद्दियों के साथ भी पॉलिटिक्स है। धर्मशाला से गद्दी एमएलए बने, वो लोग कंटेस्ट करते हैं, उसकी पॉलिटिक्स को इस तरह से भी आप देख लीजिए। जल्दी
एक मिनट लूँगा आपसे। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा सवाल पूछा। तो मैं ये कहूँगा कि मेटाफर अगर आपको पॉलिटिक्स शायरी में तो आती है, अब तो बिल्कुल आ रही है हमारी शायरी में, तो लेकिन उसको भी अगर हम मेटाफर में ना बोलें तो वो एक नारा रहता है। नारा मीन वो स्टेटमेंट, वो शार रहता है। जैसे मैं एक शायर हमारा सुनाऊँगा, जो 40 हमारे साल जो हैं, जो इसका जिसमें मिल्टन सी आई, सब दर्द अंदर है। तो इसने एक शेर सुना, उसने कहा कि सो खौफ और करित जब फ्रकान ज़मीन आसमान। वो ये पॉलिटिक्स है, यानी जो खौफ, इन 30 साल का जो डर है, वो मेरे जहन को सांप की तरह चाट रहा है, सांप की तरह सांप बनकर चाट रहा है मेरे जहन को। तो जो पागल भी, अब हमारे कश्मीर जो पागल मैड मैन हो, वो भी या कब्र ढूंढता है या खामोशी ढूंढता है। ये दो ही चीजें उसके लिए काफी। ये पॉलिटिक्स शायर है, लेकिन उसने उस अंदाज में कहा है कि अगर इंसानी ह्यूमन ट्रेजिडी का उसका भी देंगे नाम, तो ह्यूमन ट्रेजिडी है। तो मेरे कहना यह है कि जो भी आप कहोगे, लेकिन उस मेटाफर में कहो ताकि आपके लिए भी शायर कल रेलेवेंट हो। अगर आज हमारी 30 साल की मिल्टन से अब ख़त्म होगी, तो वो उस वक्त की अगर कोई शायरी है तो वो तो अब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं रह गई। अगर अब मैं ये पंडित हमारे भाई, हम इनको भी कहते हैं कि अगर आपके दर्द जो है दर्द है, मगर वो शायरी में बताओ, हमारा दर्द शायरी में बताओ। अगर आप नारा स्टेटमेंट बनाओगे, वो कल उसके कोई मायने रहेंगे। मेरा कहना ये है। थैंक यू पैनलिस्ट, बहुत ही अच्छे संवाद हुए, आपने सुना, अच्छे सवाल भी और अच्छा उत्तर भी और अच्छा व्याख्यान भी। मैं 2-3 बातें कह के अपनी अध्यक्ष संबोधन खत्म करूंगा। एक तो ये है कि जो आपने देखा कि किस तरह से क्रिटिकल क्रिएटिविटी से हमारा संवाद शुरू और फिर वो जाता है एक दर्द के बना पर और सूफी ट्रेडिशंस कश्मीर से होते हुए एक भारतीय कविता को एक्सप्लोर करता है, और वो भारतीय कविता से एक्सप्लोर करते हुए एक मार्जिनल कम्युनिटी की जो आइडेंटिटी शिफ्ट की तरफ पहुंचता है। और ये इस एक तरह से नैरेटिव की यात्रा भी आप देख सकते हैं कि 70 इयर्स में किस तरह से हमारे डिफरेंट जोन्स में साहित्य में वो हो रहा है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो चीज़ें हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य में हो रही हैं, वो शायद यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं। वहाँ पर मॉडर्निस्ट मूवमेंट हो रहा है, प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे विमेन मूवमेंट हो रहा है, आइडेंटिटी मूवमेंट हो रहे हैं, और यहाँ पर एक रूटेड एक एक्सटेंड जो प्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन है जो लिटरेचर में दिखाई पड़ रहा है। तो ये दो तरह की प्रवृत्ति है, और मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए। मोस्टली जो सारा डिस्कोर्स है वो जो इस तरह के जो फैशनेबल मूवमेंट्स हैं लिटरेचर के, उसी पर केंद्रित होकर रह जाता है। और हिंदी तो इसका सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना जिसको वायरल होता है, हिंदी को होता है वायरल। कुछ भी कहीं होता है वो वायरल हो जाएगा, उसको जुकाम होगा, क्योंकि उसका रूट के साथ जो रिश्ता है वो बहुत कमज़ोर है। और जिस लैंग्वेज का रिश्ता रूट से कमज़ोर होगा, वो बाहर के आंदोलनों से बहुत जल्दी प्रभावित होता रहेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये हम लोगों को रीथिंक करने की ज़रूरत है, और भारतीय भाषाओं से यही सीखने की ज़रूरत है कि भारतीय भाषाएं किस तरह से अपने रूट के साथ अपने को जोड़े हुए हैं, और ये पांव जमाए रखना कि आंधियों में भी हमारे पांव न उखड़ें, और हम अपनी ज़मीन को ही, जिसको कि हमारे जो कांशीराम जी एक बहुत बड़े जो दलित लीडर थे, वो कहते थे माटी पानी की समझदारी, जिसको माटी पानी की समझदारी नहीं है वो साहित्य में क्या रचेगा। तो ये जो माटी पानी का सेंस है बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो बात है कि ये जो चेंजेज हो रहे हैं जो आपको दिखाई पड़ा गद्दी में, और जो एक सवाल बहुत मौजूद सवाल था कि एक हिंदुत्व कॉन्शसनेस का विस्तार और विकास मार्जिनल कम्युनिटीज़ में हो रहा है, और वो डेवलपमेंट के एस्पिरेशन के साथ हो रहा है, वो स्टेट में पावर शेयरिंग के साथ हो रहा है, वो एक अलग से नहीं हो रहा, उसका बड़ा गहन रिश्ता है तीनों का, और वो चल रहा है और वो चलेगा, क्योंकि वो ये हमारे विकास की रास्ता उधर ही जा रहा है। हर आदमी अपने को मेन स्ट्रीम बनाना चाहता है, हर कम्युनिटी,
मेन स्ट्रीम भी बनाना चाहता है और राज्य से फायदे भी लेना चाहता है। तो ये दोनों के साथ वो यानी मार्जिनल भी बने रहें, क्योंकि मार्जिनल मतलब जहाँ से हमें लाभ मिले, और साथ साथ मेन स्ट्रीम भी एक बड़े समुदाय से अपने को जोड़े। तो हिंदुत्व की चेतना उन्हें एक बड़े समुदाय की तरफ ले जाती है। लेकिन एक जो बात है कि इन सब में भी एक, अगर आप उनके ओरल ट्रेडिशन को गहरे से अध्ययन करें और डॉक्यूमेंट करके, तो आपको लगेगा कि इसमें भी एक अंतः भाव चलता रहता है। और वो अंतः भाव इस तरह के शिफ्ट से का असर तो उसमें होता है, बट आपको बदलता नहीं है उस तरह से। यानी वो एक सुपरफिशियल चेंजेज हैं जो ओरल ट्रेडिशंस में होते रहते हैं। यानी नैरेटिव में चेंज होना अलग चीज़ होता है और ओरल ट्रेडिशन में चेंज होना अलग चीज़ होता है। तो ओरल ट्रेडिशंस में उनके सॉन्ग्स, उनके रिचुअल्स, 2-3 तरह के सॉन्ग्स ट्रेडिशंस आपको दिखाई पड़ेगा। एक तो पॉपुलर कल्चर का, जिसमें कि इलेक्शन होगा तो उसके भी गीत बन जाएंगे, सड़क बनेगा उसके भी गीत बन जाएंगे, आकाशवाणी में गाने वाले हरित वो बना उसके भी गीत बन जाएंगे, बट दे डोंट रिफ्लेक्ट द इंटरनल चेंजेस ऑफ द ओरल ट्रेडिशन ऑफ द कम्युनिटी। उनके फिर एक बड़ा एक इंटरनल मूवमेंट होता है उनकी रचनाओं में और गीतों में, और वो एक लंबे समय के बाद बदलता है। और बदलता है तो भी अपने रूट को लेके चलता है वो। यानी जो अभी ये भाषाओं में हो रहा है ये उसी तरह की चीज़ है। यानी उसका वो इस तरह से छोटी छोटी, जैसे आप हरियाणा की जो रागनी है, रागनी को आप अगर सुने तो रागनी में हर कोई भी चीज़ होता है उसमें एक रागनी बन जाएगा। किसान आंदोलन होगा उसका भी एक रागनी बन जाएगा, कोई अगर कहीं हत्या हुई तो उसकी भी एक रागनी बन जाएगी। बट वो उनका रूट चेंजेस को नहीं रिफ्लेक्ट करता है। जो उनके चौपालों में गाया जाता है, जो उनके जो कहते हैं ना कलेक्टिव, उसमें गाया जाता है, वहाँ पर उस तरह का फ्रीक्वेंट शिफ्ट नहीं है, या तुरंत कुछ घटना हुई और तुरंत वो ओरल ट्रेडिशन में आ गया, वो नहीं है। वो एक पॉपुलर है, हर ओरल ट्रेडिशन का एक पॉपुलर है, पॉपुलर में वो चेंज दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन जो 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 जीवन में हमारा रचा बसा लोक संस्कृति है उसमें उस चेंज को होने में समय लगता है और लंबे समय बाद वो चेंज होता है तो भी उसका एक नैरेटिव स्ट्रक्चर होता है जो रिपीट होता रहता है। यानी रिपीटेशन एक तरह से वहाँ पर कम्युनिटी के क्राफ्ट ऑफ नैरेटिव का स्ट्रेंथ होता है। तो यही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि ये सारे परिवर्तनों को जब आप देखें तो उसकी स्टेबिलिटी को भी देखें, या उसके कंटिन्यूम को भी देखें, उसकी निरंतरता को भी देखें, और उसके रूटेडनेस को देखें, और माटी पानी को देखें, तब जाके आप किसी चेंज को समझ सकते हैं। नहीं तो आंधी आई और आंधी में बह जाना, जो कि हमारी हिंदी में बहुत होता है, तो वैसा ही होता रहेगा। ये नहीं वायरल नहीं होता, जैसे वायरस होता है ना, हाँ बीमार हो जाते, जुकाम हुआ तुरंत हमें जुकाम हो जाएगा, अमेरिका में कुछ हुआ तुरंत हमारे यहाँ आ जाएगा। तो हमारे यहाँ भी है। नहीं वो कनेक्ट है, लेकिन वो मेरा यही कहना है कि अधिक से अधिक हम भारतीय भाषाओं से सीखें। हिंदी और भारतीय भाषाओं में जो संवाद है वो जितना गहन होगा, अमेरिका से ज़्यादा संवाद भारतीय भाषाओं से होनी चाहिए। हमें अमेरिकन पोइट्री हम बहुत पढ़ते हैं, हमें डोगरी कविता पढ़नी चाहिए, हमें कश्मीरी कविता पढ़नी चाहिए, हमें पंजाब की कविता पढ़नी चाहिए, हमें तो मुझे लगता है ज़्यादा हम अपने को इनरिच कर सकते हैं। क्योंकि जो हिंदी का कोई रूट नहीं है, हिंदी जो भाषा है वो अपने तरह से एक बाद की बनी हुई भाषा है। वो बहुत सारी बोलियों का रूट है, भोजपुरी का रूट है, अवधी का रूट है, ब्रज का रूट है, लेकिन हिंदी का अपना कोई, तो हिंदी को या तो उसके माध्यम से वो अपने रूट से जुड़े, ब्रज अवधी या कश्मीरी पंजाबी के माध्यम से वो अपने को भारतीय बनाए रखे सबको, तो ये जरूरी है ये। लेकिन होता क्या है कि हम अपने को ग्लोबल बनाने के चक्कर में बहुत सारे जो ऐसे मूवमेंट जो सुपरफिशियल मूवमेंट्स हैं वो हमको बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। वायरल मतलब जुकाम जल्दी होता है, हमें जुकाम, मौसम बदला और जुकाम होगा हमें। तो हाँ, और शेष बातें अब बाद में करेंगे क्योंकि समय कम है और एक दूसरा सेशन भी शुरू करना है, हमारे दूसरे सेशन के वक्ता आ गए हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना समय निकाला एंड यू अटेंडेड दिस सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक you our panelists, and for formal thanks I'll hand over the mic to the Sahitya Academy. So that was the session on literature from the north. इस तरह के जब सेशंस होते हैं तो जी चाहता है कि वक्त ज़्यादा हो, सवाल ज़्यादा हो,
सवालों में से और सवाल निकले, बट वक्त की पाबंदी है. We would like to thank the chair, Shri Badri Narayan ji, Professor Rana Nayyar, Shri Ishad Ramzan, and Professor Mahesh Sharma. Thank you so much. Our next session will start in 2-3 minutes. We just need to change the setup, and tea will be served after that session. Next session is on Dalit literature.
She will be speaking on countering hegemonies and creating alternate paradigms. May I also request on the dais Professor Shivraj Singh Bechain. आइए. Professor Bechain is an eminent columnist and writer in Hindi. He has written a dozen books, which include 4 poetry collections, 3 short story collections, and his autobiography. His book, Mera Bachpan Mere Kandho Par, has been translated into several languages. He has been teaching at the Delhi University since 1997. He has been honored with 8 national awards and 1 international award, including Ambedkar National Award, Subramaniam Bharati Samman, Sahitya Bhushan Samman. He will be speaking on that literature, Beyond Seeking Identity. May I now hand over the mic to Shri Sharan Kumar Limbadi. नहीं ये ठीक है. You start. You can start. नाम ले लेना किसको बुलाना है. You are supposed. हाँ, साहित्य अकादमी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि साहित्य अकादमी ने पिछले 5 साल में बहुत अच्छे लिटरेरी फेस्टिवल्स लिए हैं. शिमला का हो, भोपाल का हो, दिल्ली में 2 लिए हैं. और बहुत कम स्टाफ होते हुए भी उन्होंने एक बड़ा आयोजन करने का उनके पास बहुत अच्छा अनुभव रहा है. इतने लेखक को जमा करना, विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी करना, और ख़ास तौर दलित और आदिवासी और स्त्री, LGBT इन लेखकों को भी वो बुला रहे हैं. ये एक साहित्य अकादमी के तेवर में, भूमिका में एक बड़ा बदलाव आया है. इसका मैं स्वागत करता हूँ और साहित्य अकादमी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये ऐसा माहौल आगे भी चले. इस सेशन में बहुत ही सीनियर लेखक यहाँ है. पी शिवकामी तमिल दलित ऑथर है. शिवराज सिंह बेचन हिंदी दलित ऑथर है. वो दोनों बोलेंगे और मैं अध्यक्षता करूँगा. मेरे सामने बहुत ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लेखक तेलुगु के सीनियर लेखक है, बहुत सीनियर लेखक है. वाइस चांसलर भी रहे हैं. कोलोकरी इनोक जी है. हिंदी के दलित कहानीकार रजत रानी मीनू जी है. और मेरे बहुत सीनियर और श्रेष्ठ मार्गदर्शक दामोदर खड़से जी यहाँ बैठे हैं. और मेरी एक उपन्यास का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है और अंग्रेजी की प्रोफेसर रही है बी मंगलम जी यहाँ है. इन सभी को मैं मेरा नाम लेकर मैं मेरी भूमिका संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ. साहित्य अकादमी ने इस सेमिनार का एक थीम रखा है, पोस्ट इंडियन लिटरेचर. मैं जब पोस्ट इंडियन इंडिया एंड बिफोर फ्रीडम इंडिया, मुझे यानी ब्रिटिश इंडिया और फ्री इंडिया, ये दोनों को जब देखता हूँ साहित्य में क्या बदलाव आया है. आज़ादी के बाद भारत का साहित्य पूरा बदलता हुआ दिखाई देता है. आज़ादी के पहले मेन स्ट्रीम वाला साहित्य था. मेन स्ट्रीम वाले लिखते थे और वही हम पढ़ते थे. आज़ादी के बाद साहित्य का चेहरा ही बदल गया है. आज़ादी ने भारतीय साहित्य का चेहरा बदल दिया है, क्योंकि आज़ादी के बाद विभिन्न स्तरों से लेखक आए हैं. दलित यानी विभिन्न स्तरों से लेखक आए, दलित आए, आदिवासी आए, LGBT आए, स्त्री आई. इतना ही नहीं, कोई कुली लिख रहा है, कोई विभिन्न व्यवसाय में जो लिख रहे हैं ऐसे आया है. साहित्य में भूचाल आया है, आंधी आई है. और भारतीय साहित्य वेदों से लेकर
आज़ादी के पूर्व तक एक 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 खास टिपिकल रोमांटिक और आइडियोलॉजिक मेंटालिटी में के चक्कर में घेर गया था। मुझे हिंदी अच्छी नहीं आती, मगर आज़ादी के बाद एक घेरा टूट गया। और आज़ादी के बाद हम आज़ादी को ही प्रश्न पूछने लगे। आज़ादी को अपराधी के कटघरे में खड़े कर आज़ादी को सवाल पूछने लगे। आज़ादी किसको मिली? आज़ादी देश को मिली, आज़ादी हमको नहीं मिली। आज़ादी हमको नहीं मिली। आज़ादी कभी कभी लाल किले पर दिखती है, पार्लियामेंट में दिखती है, स्कूलों में, कॉलेजों में 15 अगस्त 26 जनवरी को दिखती है, इतना ही। आज़ादी हम आज़ाद देश के नागरिक होते हुए भी हम आज़ाद क्यों नहीं है? हमारे पर अन्याय क्यों होता है? हमारे पर अत्याचार क्यों होता है? ये सवाल हमारे मन में खड़ा है। तो आज़ादी किसको मिली? हमको क्यों नहीं मिली? यदि हम आज़ाद है, फिर हम गुलाम क्यों है? हम पर अन्याय क्यों होता है? हम पीड़ित क्यों है? ये सवाल हमारे मन में है। आज़ादी मिली देश को तो हमें भी मिलनी चाहिए। आज़ादी की परिधि का विस्तार करने का काम दलित साहित्य ने, आदिवासी साहित्य ने और स्त्री विमर्श ने किया है। ये तीन विमर्शों ने मुझे लगता है कि भारतीय साहित्य का चेहरा बदल दिया है। मुझे तो लगता है कि भारतीय साहित्य ऊपर पैर नीचे सिर था, मगर उसको खड़ा करने का, जमीन पर भारतीय साहित्य को जमीन पर खड़ा करने का काम दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, स्त्री साहित्य ने किया है। नहीं तो वो जमीन के ऊपर ही ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक, यही बातें बनाते थे। और दलितों के, स्त्रियों के बारे में, आदिवासियों के बारे में बहुत इंसानी दया से, सहानुभूति से लिखते थे। जिस पर अन्याय हो रहा है, जो प्रताड़ित है, वो लोग लिखने लगे, क्योंकि इनको आज़ादी के पहले लिखने का अधिकार ही नहीं था। संविधान के कारण सभी को लिखने का हक मिला। समता, स्वातंत्र्य, बंधुता का, ये मूल्यों का जाहिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, ये मूल्य सभी को मिलनी चाहिए। फिर समता हमें क्यों नहीं मिलती? हमें न्याय क्यों नहीं मिलता? हमें आज़ादी क्यों नहीं मिलती? प्रश्न हमारे सामने खड़े हो गए। नामदेव डसाल ने लिखा कि आज़ादी किस गधी का नाम है? तो आज़ादी किस गधे का नाम है, ऐसा भी हो सकता है। कि मैं ये जब ये मैंने कविता की लाइन मैंने पढ़ी, तो मैं भारत माता का जय ऐसा कहने वाला बच्चा, वो शोभा यात्रा में घूमने वाला, एकदम नामदेव दसाल की एक कविता की लाइन, आज़ादी किस गधी का नाम है, तो मुझे मेरे मन में भूचाल आ गया, ये क्या है? ये मेरी मानसिकता ही बदल दी। अण्णा भाऊ साठे एक दलित लेखक थे, उनकी एक लाइन है कि ये पृथ्वी दलित के हथेली पर टिकी हुई है। मैं उसके पहले ये पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है, ऐसा ही मेरी मानसिकता थी। ये सब मानसिकता, पुरानी मानसिकता दलित की बदली, आज़ादी के बाद आदिवासी की बदली, स्त्री की बदली, और हम अपने हक अधिकार के लिए लिखने लगे। हम अपने हक और अधिकार के लिखने से भारत का जनतंत्र मजबूत हुआ। हम एक प्रकार से भारत का जनतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। क्यों? जनतंत्र लास्ट आदमी तक, आदिवासी तक, दलित तक, स्त्री तक जब तक नहीं जाएगा, उसका विकास नहीं होगा, तो वो असली जनतंत्र ही नहीं होगा। जनतंत्र एक किसी कटघरे में खड़ा है, उस जनतंत्र को खींचकर हम हमारे पास तक लाना चाहते हैं, आज़ादी को खींचकर हमारे पास लाना चाहते हैं, न्याय को हम हमारे पास लाना चाहते हैं, और हम पूछते हैं कि कब हमारे पास आओगे, क्यों, कहाँ अटके हो, किसने आपको रोका है? इस प्रकार से हम आज़ादी के आकांक्षा से हम लिखते हैं। आज़ादी हमारी प्रेरणा है, मगर आज़ादी की प्रेरणा देने वाला विचार जो है बाबा साहब अम्बेडकर का है। यदि बाबा साहब नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि हजारों सालों से हजारों ईश्वरों ने हमें गांव के बाहर रखा था, अछूत रखा था कि अछूत। अब हमें बोलने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था। पशु का मूत्र यानी गाय का गोमूत्र को पवित्र मानते थे, और हमारे जैसे मनुष्य को अपवित्र मानते थे। ये महान संस्कृति थी। हम संस्कृति को चैलेंज करने लगे कि एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा देश है कि जहाँ हम गोमूत्र से भी हम कैसे क्या अपवित्र हो सकते हैं? हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान है।
स्त्री भी बोलने लगी मैं भी इंसान हूँ, आदिवासी बोलने लगा मैं भी इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान के जो हक और अधिकार होते हैं वो मुझे मिलने चाहिए। इस प्रेरणा से दलित साहित्य, स्त्री साहित्य और आदिवासी साहित्य लिखा गया है। ये आज़ादी की महान उपलब्धि है। ये हमारे देश की एक नया चेहरा, एक नई संस्कृति, एक नई परंपरा बनाने की बहुत बड़ी पहल है और उसमें ये दो महान लेखकों ने कंट्रीब्यूट किया है और वो आपके सामने बोलने वाले हैं। उसके बाद मैं अध्यक्षता की कुछ बात कहूँ। मैं इसके पहले तमिल राइटर पी शिवकामी, ये तमिल की बहुत बड़ी लेखिका है। ये IAS ऑफिसर थी। इन्होंने बहुत बड़े IAS के पोस्ट पर काम किया है, राजदूत रही है बाहर, जापान में हमारे देश की राजदूत रही है। और मायावती की इलेक्शन जब लग गई तब इन्होंने अपने IAS पद का इस्तीफा दे दिया, रिजाइन किया और इलेक्शन में आ गई, मुझे दलितों के लिए कुछ करना है। जब मैं चेन्नई में गया तब उन्होंने खुद का मायावती के साथ रहकर मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ करना है। तो तमिल में वो केवल लेखिका नहीं, तमिल लोगों के लिए वो सोशल वर्क का बहुत बड़ा उनका काम है। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल फील्ड में उन्होंने एक पार्टी निकाली है और तमिल लोगों के लिए वो पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने का बहुत बड़ा काम कर रही है। और अंग्रेजी में एक प्रोमिनेंट दलित लेखिका है पी शिवकामी, और वो आपके सामने आएंगी और उनके विचार आपके सामने प्रेजेंट करेंगी। आई रिक्वेस्ट यू टू कम हियर। Sharan Kumar Limbale ji, Shiraj ji, distinguished guests in the audience and friends. It's a great pleasure to stand before you and read my paper. The title is Countering Hegemonies and Creating Alternative Paradigms. Usually I don't read my paper, but Sahitya Academy wanted the paper much in advance, so I had written it. So I find the paper is good, so I better read it. Hegemony needs to be articulated before entering into a discourse on countering it and creating alternative paradigms. Hegemonic forces are present in all spheres of life in India and across the world. We can trace hegemony right from the origin of private property, state, and family. Worldwide, the land ownership pattern resulting in feudal relationships between landlords and landless peasants was replaced by employer-employee relationship in capitalist economy. In both the regimes, rulers and the state acted as protectors, safeguarding the interest of the capitalists under the pretext of stabilization and sustaining the country's economy and the sovereignty of the nation state. As a result, many nation states in Europe had started colonizing vulnerable countries like countries in Asia, Africa, Pacific, and South American regions. The colonial era came to an end with World Wars I and II. In a country like India, the hegemonic setup has been infused in the structure through caste and religion. This phenomenon is more challenging as the counter-hegemonic forces suffer multiple oppressions of not only material conditions, physical violence, but disadvantages arising out of interpersonal relationships. They have to face the combined opposition of state, capitalists, and the caste society as a whole. The capitalists include the manipulating global giants, multinationals of today's global market-driven economy. In this international literature festival organized by Sahitya Academy, and in this particular session, the focus is on countering hegemonies and creating alternate paradigms through literature. The emergence of modern Dalit literature, feminist literature, Dalit feminist literature, Adivasi literature, autobiographies of criminal tribes, and LGBTQ is noteworthy
as their works are not only the lived individual and collective experiences of the marginalized sections of the society, but also exercises enormous pressure for bringing about changes. The hegemonic forces, ideas as reflected in literature. This is the title. Literature as a work of art is an expression of its author's perceptions, imaginations, and artistic execution. It is a dialogue or a continuation of dialogues or events of history, contemporary issues pertaining to politico-economic society. In a way, all literature are some sort of dialogues with so they engaged in dialogues with the society. In Sangam literature, the concept of Puram dedicates itself to the social, political life of that period, whereas concept of Aham deals with individual life and family. Those were not just the portrayal of the people or life, but also dialogues initiating a process of change or alter or reinforce the existing concepts which were governing people's lives. If the literature on Emperor Ashoka's life talks about his remorse feelings after his war on Kalinga, and later under the Buddhist influence, how he gives up not only war, but abstains from any kind of violence. Mahabharata too talks about remorse feelings of Arjuna against violence, but before the war and not after the war, like Emperor Ashoka. And he justifies the pursuance of war by differentiating the individual ethics from the virtues of a king. In other words, victory justifies the violent means to attain it. This is a typical example of dialogue between major streams of thoughts in ancient India, namely Buddhism and Brahmanism. Also, the Buddhist philosophy preached equality. Also, while Buddhist philosophy preached equality, Brahminical values upheld the Varnashra Dharma. To our disappointment, this historical discussion is still carried forward in 21st century contemporary literature between hegemonic forces and subaltern sections. The forms are different, but the essence is the same. In my Tamil novel, Unmaikkum Munnum Pinnum, which if translated to English literally means truth before and after, portrays how the Brahminical perception is continued from British time till now. It reads as follows. Neela, an IAS officer belonging to Dalit community, meets the Chief Minister of Tamil Nadu, who happened to be a Brahmin, regarding budget announcement concerning Adi Dravidar and Tribal Welfare Department. She proposes distribution of 5 acres of land to the landless agriculture farmers and tries to convince her as how it would help the poor to cross the poverty line. The Chief Minister expresses her doubt as to how the poor agricultural laborers would manage when the multinationals fail to earn profit from agriculture. On that moment, Neela was reminded by the similar opposition raised by bureaucrats at the Board of Revenue in the late 19th century when the English collector recommended distribution of land to the poor Dalits. The English collector was Tremin Here, and he traveled widely in his district during famine, and he wrote a 100-page report called the Paraya problem. In that report, he has described how the Parayas of Chengalpat district suffered at the hands of the caste Hindus, and several possible ways. If I explain that, it would, I think, run to an hour also, so I will refrain from doing that. But he had recommended at the end of his report
that if only the Dalits are distributed a piece of land and schools are giving admission to them, their conditions will improve. So when this report was taken to the board of directors, revenue board it's called, it consists of those days mainly by the British officers, means Britishers, and the subordinate officers around this board of revenue were Brahmins. So the officials at the board of revenue quoted the English collector's report, in which he had said that these people are poverty stricken, they are living in huts like pigsty with no proper clothes, and quoting this style of life, they said how could they afford to buy bullocks, and hence the collector's recommendation should be discarded. In fact, they said the collector must be foolish because he doesn't know the culture in India, and so he's very anxious to improve the plight of these poor people, but he doesn't know the reality. That's what he has said. So now Neela, the protagonist of my novel, wonders how they cling on to the ideas of Varnashra Dharma even now. Because according to caste rules, the pariahs cannot own the land, and they are supposed to work as landless peasants with their landlords. And caste Hindus and Brahmins particularly, they are supposed to own the land, but they should not plow the land, because while plowing the land they might harm the insects in the earth, the Brahmahati dosham will affect them. So that's what the logic they said. The same logic is followed by the current chief minister in 21st century. It is not simple in contemporary Indian literature to strictly demarcate writers wholly subscribing to Brahmanical thought as against liberal democratic streams of thoughts. Writers who are against capital accumulation and condemn it in their writing fail to talk about caste system. Writers portraying the pitiable plight of small and marginal farmers in this country do not think about the landless poor. Writers who are critical of current day politicians applaud their scheme of distribution of freebies to the poor. Even the agriculturists who are fighting for minimum support price do not talk about the need for land reforms. The local Marxists haven't examined the caste system, which they still consider as a superstructure, and in the event of the never happening revolution, they believe that the caste would vanish. The purpose of my analysis is to pinpoint that while one of the hegemony is fought with the tooth and nail, another form of hegemony is directly or indirectly unopposed or ignored. The Periyarists in Tamil Nadu, who are in the helm of affairs, still not wholeheartedly working against untouchability and the caste system. The controversy between individual ethics and the remnants of caste society ethics is still dominating in the literary atmosphere. Now another subtitle, hegemony, counter-hegemony, anti-hegemony, power over somebody, power to help somebody, and decentralization of power. Wielding power over people to accumulate wealth and control their lives by the combined army of capitalists and state or government has become the nomenclature in many democratic welfare states across the world. These hegemonic partners justify their monopoly to power by citing their competition with global market players and maintenance of law and order in order to attract investment from multinationals and to achieve a particular number as growth rate. The welfare governments have become welfare cheats. The same novel by P. Sivakami, how the government siphons off the grant received from central government to construct a residential school for the tribals in Kalrayan Hills in Tamil Nadu to some other purpose, was again portrayed.
Similarly, the money received for scavengers' welfare was also diverted. In Jayamohan's novel Kadu, to Cardamom's Forest, to the approach of government-appointed contractors and the bureaucracy wielding power on behalf of government have been portrayed as exploiting and cheating the tribes and forest dwellers. Welfare states have become welfare cheats with the mandate of majority of people in a democracy. Noam Chomsky calls this consent without consensus. The counter-hegemony group in turn need power to bring about change and affirm benefits to vulnerable. But a close examination of counter-hegemony group from the lenses of postmodern fragmentation, they appear to be inclusive by accepting difference, and they present a picture of a rainbow alliance. But this is not a permanent one. During general election, each dominant party in the state, together with other dominant parties in other states, form an alliance to effectively oppose a national dominant party or parties. It is similar to the conglomeration of Indian capitalists as against their global counterparts. Moreover, each of its members keeps crossing over for personal gains. Similarly, the vulnerable sections ally with those who are willing to accommodate them during election, no matter whether they have an agenda in their manifesto to fulfill even portion of their requirements. Thus, the counter-hegemony group operates on one single agenda of replacing the existing hegemony. Their situation as power to group will soon become power over group. In the event of the success and in the absence of ideological synthesis happening between them as a power to group. True to the comparison of the alliance, means the alliance is compared to a rainbow. So true to its comparison, it's only short-lived. This counter-hegemony group as a short-lived unregistered company cannot initiate any structural change to decentralize power and respect human values. We are currently passing through a phase of rainbow alliance, and to create alternative structure, we need to travel a long way. Dalit autobiographies present stories of their painful life at the hands of caste perpetrators. By expressing their nightmares of caste, they are able to retain the benefits enshrined in the Constitution. Certain Dalit writers feel that there should not be any grouping of writers as Dalit, impressed by the Brahmins who don't call themselves as Brahmin writers. If caste has not found a place in literature as a subject matter in others' literary works, there could be only two possibilities. First, they are afraid of shouldering responsibility for inflicting pain on Dalits, or they don't see any alternative structure at all. Perumal Murugan's work, One Part Male, is countering hegemonies in its own way. The pressure on a woman and a man to bear a child to live up to the social norm has led the pair to participate in a temple festival. The husband helps his wife to conceive by allowing her to date an unknown donor on a random basis. And this has become a practice he establishes in his narrative in several pages. Maintaining caste structure by controlling female bodies was a clever invention by the dominants. Perumal Murugan's novel deconstructs it by quoting the stray exceptions. The moral of the story is that sanctity of caste is only as far as in protecting their piece of land and property and to enslave labor. In Sholagattoti, another famous novel in Tamil by Balamurugan, is noteworthy to mention here. The tribe by name Sholagar live in the forest, and they undergo unsurmountable torture at the hands of the lower and higher officials of forest department, who are in search of sandalwood smuggler Veerappan. The tribes are primitive, and their interaction with the mainlanders is to the minimum,
and the culprits responsible for the inundation of the forest are the greedy mafia supported by corrupt politicians. Thus, Balamurugan's novel condemned the physical torture on the tribals and questioned the structure that favored the dominance. There are a number of texts in Tamil that are countering hegemonies in their own way. The main characteristics of these works can be summed up as deconstructing the different hegemonic agencies. But to my knowledge, reconstructing exercise in the work of arts is very, very limited. When Periyar was asked once, how does one replace God in his life? He seems to have replied that if one finds human excreta in the middle of the house, instead of cleaning it, one shouldn't ask a question as to what to replace it with. Though he was right in a way, there may be a different angle to the same question of replacement. If, for example, theft takes place in a house, though catching the thief and punishing him is necessary, the owner of the house reworks on the security system to avoid similar occurrences. Making it known to the people by exposing the hegemonic forces through literary articulations is laudable, but more importantly, the literary genres should also initiating dialogues on alternatives. So here I want to mention the states are always interested in creating their own dialogues, and they float among the people, mainly to divert them. When I was going for a village camp, I was talking to them for at least for an hour, along with many others. We were a team of 5 to 6 people. So we were against this freebies, and we wanted the people to talk about land, because if we keep talking, that becomes a talk of the country, and then the politicians have to necessarily to look at it. So after 1.5 hours, I think the meeting lasted. So when we were about to board our vehicle, one old woman came and asked us, see, the next village, they have distributed a TV, they have not given to me. What should I do? See, this is what happens when, this is the intention of the state government, I should say clearly. Otherwise, why would they initiate a program called the Endriga, which is, paying, without any work? Because I see literally women sitting on the tank bund and getting money and going. So they must have discussed in Delhi at the tops. They said, this Dalits and poor people, just give them something, yeah, do away with it. So this must have been the discussion. Otherwise, they wouldn't invent such a program. They would have invented something better so that they can stand on their own and poverty is alleviated, maybe once for all, except for the physically handicapped or widows who are not able to cultivate the land or stand on their own. Maybe very few people will still remain poor, but most of them would have crossed poverty line. Pandit Ayodhya Das, a Dalit and Buddhist scholar of late 19th century, has produced an exemplary work in Tamil by name Indradesa Charitram, the history of heavenly country. Based on the continuing discourses between Buddhism and Brahmanism and ancient philosophies, his work creates a new world of Buddhist values as against Varnashra Dharma. In other words, a casteless and classless society which upholds equality as a source of not only peace and happiness against the so-called God-created Brahmanical graded society, but also an economically viable society. In Ayodhya Das Indradesa, there is no one who is hungry, and as a result, there is no one who can take pride in helping the poor. In the world wrought with pessimism, competition, inequality, and lack of fraternity, this novel attempts to reconstruct an imaginary world. Like Alice in Wonderland by Lewis Carroll, written in 1865, where the 7-year-old Alice finds the adult world silly with too many restrictions and etiquettes. Ayodhya Das, a social revolutionary of the same period, looks at the cruel plight of the people and decides to take them to Indradesa,
Indra, according to him, is Buddha. Recently, one of my friends called me. She said, I have very urgent matter to talk to you. Said, why don't we all shift to the newly found islands somewhere between Australia and New Zealand? Because it's too bad to live here, she said. Anyway, this came to me. Indra, according to him, is Buddha. He explains because the derivation of the word Aindran means all the five senses, control of all the five senses. So therefore, Indra is Aindra is Buddha. So he says, Indra, according to him, is Buddha, rewriting history, finding out the true meaning of words, events, customs, and festivals in the light of freedom and equality through self-realization, deconstructing hegemony and reconstructing a world of equal opportunities for all are the methodologies used in Indradesa Charitram. Alternative paradigms, this is the last title. I'll take 2 minutes. At the end, question arises about defining alternative paradigms. The very first thing to remember is that alternative paradigm is not a dominant paradigm. It's not going to be a paradise either, since it takes time to build one. Literature is a prelude to events in our future. Let us write our dreams and induce readers to dream. The literary world, at least, should be free from hierarchy and commercial orientation. If authors are not living a dual life, you understand what's a dual life. You write one, but you live another life. In other words, leading a life true to their work of art, then their works would command much more respect. Reality, as we see, is not our creation. It's an artificial world created by profiting business politicians. We need to create reality which encourages to realize the worth of human beings. Because these days, anyone I talk to, see, without money, you can't contest elections. Say, everybody, true. It's become like that. And they don't have a problem with it. That is what is more worrying. We need to create reality which encourages to realize the worth of human beings. Being practical and narrating them as the only possibilities would lead us nowhere. Because being practical is many a times unethical to fellow human beings. What we want to see becomes our reality over a period of time. A journey towards achieving reality is the first step towards an anti-hegemonic activity. Discourses, counter-discourses aiming at finding fault with the existing system in the choicest of words are alluring, yet creativity lies in configuring alternatives and making them as our realities. Writing career brings honor to the author, but his words are going to be altering lives for the better, then the author's true worth is considered achieved. Getting rid of power over is an ideal that needs celebration. Accumulation of power is a burden. The power to change for the better also needs to change hands in the process of decentralizing it. Revolutionaries can become dictatorial in due course. In other words, democratic practices within power to block is necessary. Michel Foucault's postmodern fragmentation is advantageous in many respects. It recognizes the difference and recommends inclusiveness. But our Indian experience of inclusiveness remains only a contingent or namesake or ceremonial or token representation. The inclusiveness needs to be cohesive to achieve a common goal. The quality of inclusiveness improves when all
subaltern and counter-hegemony groups are consulted in decision making. There is a need to have constant training in perceiving the otherness to achieve unity and synthesis between the members of anti-hegemonic group. Thank you. Thank you, Shivkami ji. Shivkami talked about very important point, that is deconstruction and reconstruction regarding Dalit literature. It is a new thing for me. शौरा सिंह पहचान गए हैं 2 मिनट के लिए, उनके बारे में मैं बोलूँ, वो आने के बाद मैं बोलूँगा, तब तक मैं थोड़ा टाइम पास करता हूँ. दलित साहित्य के बारे में आप जब सोचते हैं तो दलित और हिंदू, दलित और कास्ट, इस बारे में आप सोचने लगते हैं, या ऐसा नहीं है. इसका बहुत वास्ट स्वरूप है. वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दलित एक जाति का लेखक नहीं है. बहुत उनकी जाति है, अलग अलग जाति के लेखक है. हिंदी बेल्ट में उनकी जाति अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, केरला में अलग है. हम विभिन्न जाति में बटे हुए हैं, केवल जाति में नहीं है, हम विभिन्न भाषाओं में बटे हुए हैं. तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, मराठी, बहुत सारे तेलुगु, इतने भाषा में हम बटे हुए हैं. केवल भाषा में भी नहीं है, हम धर्मों में भी बटे हुए हैं. केवल हम हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं ऐसा नहीं है. हम हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था है उसके खिलाफ बोलते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोलते हैं. ये केवल हिंदू दलित ही लिख रहा है ऐसा नहीं है, जो क्रिश्चियन दलित भी है, इसमें बहुत बड़ा वर्ग है, वो क्रिश्चियन दलित का है, बहुत बड़ा वर्ग है कि वो भी लिख रहा है. और अंग्रेजी में उनका डोमिनेंस ज़्यादा है, क्योंकि हम रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं, हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं होती है, हम इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कम पढ़ रहे हैं. वो अंग्रेजी में ही लिखते हैं और अंग्रेजी में ही लिखने के कारण इंटरनेशनल लेवल पर उनका प्रेजेंटेशन अच्छा जा रहा है. अंग्रेजी में लिखते हैं क्रिश्चियन दलित लेखक, और ओरिजिनल उनके रीजनल लैंग्वेज में भी लिखते हैं. केवल क्रिश्चियन दलित लेखक लिख रहे हैं ऐसा नहीं है, हिंदू दलित लेखक लिख रहे हैं ऐसा नहीं है, मुस्लिम दलित लेखक भी लिख रहे हैं. इसको भी समझिए कि वो भी मुस्लिम धर्म में जो जाति व्यवस्था है, जब धर्मांतरण के बाद वो जाति व्यवस्था को लेकर वहाँ गया है, और वहाँ भी उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. सिख दलित भी लिख रहे हैं. पंजाब में 34% सिख है, वहाँ भी दलित साहित्य उभर कर आ रहा है. कि क्या हो रहा है कि क्रिश्चियनों के लिए अलग चर्च है, क्रिश्चियन दलित के लिए अलग चर्च है, सिख दलित के लिए अलग गुरुद्वारा है, और हिंदू को मंदिरों में तो जाने को नहीं दिया जाता है. मैं देखता हूं कि दलित साहित्य ये दलित मुक्ति का साहित्य है. जब मैं शिवकामी को सुन रहा था तो मेरी ये भी भावना बन गई है, दलित लिटरेचर इज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट ऑफ दलित मूवमेंट. ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है. मैं जब लिखता हूं तो मैं केवल लिखता नहीं है, मैं एक पॉलिटिकल स्टैंड लेता हूं, मैं एक पॉलिटिकल एक्शन करता हूं. मैं जैसे कि विधायक पार्लियामेंट में एक मुद्दा लेकर लड़ते हैं, वैसा मैं साहित्य में हमारे जाति का, हमारे कौम का, हमारे प्रश्नों का एक मुद्दा लेकर मैं लिखता हूँ. मेरा साहित्य एक पार्लियामेंट जैसा है, ये हमारी एक पॉलिटिकल लड़ाई है. इस सियासत में हमें बराबरी का हक और अधिकार चाहिए. दलित साहित्य मानव अधिकार का साहित्य है, दलित साहित्य का हक और अधिकार का साहित्य है. इसे हम केवल ये बहुत ऑनेस्टली लिख रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है, बेबाकी से लिख रहा है, ये इसकी समीक्षा हो नहीं सकती है. मुझे तो ऐसा लगता है कि दलित साहित्य को अच्छा आलोचक अभी तक नहीं मिला है. जब दलित साहित्य को समझना है तो जाति व्यवस्था को समझना होगा. केवल हिंदू जाति व्यवस्था को नहीं है, मुस्लिम जाति व्यवस्था को, क्रिश्चियन जाति व्यवस्था को, सिख धर्म में जो जाति व्यवस्था उसको भी समझना जरूरी है. जाति व्यवस्था केवल हिंदुस्तान में भी नहीं है, जाति व्यवस्था माइग्रेंट हो गई है. यूके, यूएसए, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्ला, श्रीलंका, सब तरफ जाति व्यवस्था है. और दलित साहित्य एक राष्ट्रीय स्तर पर और नेशनल स्तर पर उभर कर आ रहा है. और इसकी दलित साहित्य की चर्चा स्टेट रीजनल लैंग्वेज में, नेशनल लैंग्वेज में और इंटरनेशनल लैंग्वेज में हो रही है. मुझे खुशी इस बात की है कि हमें
प्रोग्रेसिव कम्युनिटी ने बहुत बड़ा साथ दिया है। मैं देखता हूँ, कल मैं हरियाणा में गया था, रेवाड़ी में, वहाँ मेरी आत्मकथा सिलेबस में लगी है। ये बहुत अच्छा है कि हमारे दलित लेखकों के किताबों पर अध्ययन हो रहा है, किताबों पर अनुसंधान हो रहा है, किताबों का अनुवाद हो रहा है। यानी हम क्या कर रहे हैं, समाज को समझ रहे हैं। हम जिस उद्देश्य से लिख रहे थे कि ये उद्देश्य नए जनरेशन को भी, हमारा उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। एक नई जनरेशन, एक नया समाज, एक नया राष्ट्र बनाने की कोशिश है। मैं अनुवाद अध्ययन अनुसंधान को इस प्रक्रिया, इस स्वरूप में देखता हूँ। अभी स्वराज सिंह बेचैन आए हैं, मैं आपके बारे में कुछ कहूँगा कि जब मैं बाहर जाता हूँ फेस्टिवल में, तब हर जगह पर ये आते हैं। शिवराज सिंह बेचैन हिंदी साहित्य का एक रिप्रेजेंटेटिव चेहरा है। ये केवल दलित लेखक नहीं है, दलित के परे जाकर भी लिखते हैं। अब बहुत पॉपुलर दैनिक में लीडिंग कॉलम लिखते हैं, केवल दलितों पर भी लिखते हैं नहीं, आज की आवाज़ क्या है, आज के प्रॉब्लम क्या है, आज इर्द गिर्द में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, इसको भी वो बहुत सावधानी से देखते हैं और लिखते हैं। इतना दलित लेखक केवल आत्मकथा लिखता है ऐसा नहीं है। दलित लेखक कितने फॉर्म्स में लिखता है, कितने विभिन्न रूपों में सोचता है, इसका एक मिसाल शिवराज सिंह बेचैन है। डीयू में प्रोफेसर है, ये चौड़ी थे, मुझे उन्होंने वहाँ बुलाया था। उनका एक आलेख मैंने मेरे किताब में छापा है, भारतीय दलित साहित्य, वो मराठी में है। उसमें उन्होंने हिंदी दलित साहित्य के बारे में एक अच्छा आलेख लिखा है। वो आलेख पढ़कर मुझे लगा कि ये बहुत विद्वान और अभ्यासु और चिंतनशील व्यक्तित्व है ही। मैं शिवराज सिंह बेचैन को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और आपकी बात रखें। भाई शरण कुमार लिम्बाले ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। हमने बहुत कुछ लिम्बाले जी से सीखा है, और सीखा इस रूप में है कि हम लोग लेखक हो सकते थे, लेकिन जो तेवर और जो विचार और जो मुद्दे शरण कुमार लिम्बाले की वजह से हिंदी में आए, वो शायद नहीं आते अगर शरण कुमार लिम्बाले मराठी में नहीं होते। तो मराठी कोई नहीं, हिंदी के लिए भी शरण कुमार लिम्बाले की बहुत बड़ी देन है। उन पर हम कभी बात करेंगे, बल्कि उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर अलग से बात करेंगे। फिलवक्त मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, साहित्य प्रेमियों को, साहित्य के अध्येताओं को। साहित्य अकादमी की जो शर्त है कि वो पर्चा पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पर्चा लिखा है। और लिखने की आदत यह है कि वो आज तक भी लिखा है, कई दिन पहले उसको भेजा था, लेकिन आज भी उसमें कुछ काम किया है। तो आपके हाथ में हो सकता है अधूरा हो, और मैं बहुत विस्तार से नहीं पढ़ूंगा, कुछ बिंदु मैं सामने रखूंगा। ये बात सच है शरण कुमार लिम्बाले ने जो कही कि दलित लेखक केवल आत्म अभिव्यक्ति के लिए ही नहीं है। खाली आत्मकथा लिखना होता तो फिर तो इसका मतलब यह है कि आसपास की दुनिया उसे बेचैन ही नहीं कर रही, वो तो पूरे समाज से पीड़ित है, पूरी समाज की हालत देखकर ही तो लेखक बना है। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल अपनी बात करता है। मैं ये पर्चा पढ़ रहा हूँ, और अगर बड़ा लगेगा तो छोड़ता चला जाऊँगा, तो कुछ जोड़ता चला जाऊँगा। हाँ, ये कर सकता हूँ। हाँ। तो पहला मुद्दा तो मैं इसमें जो ला रहा हूँ वो ये है कि हिंदी में दलित साहित्य की बात जब हम लोग 80 में कर रहे थे, 1980 में, तो हिंदी के संपादक, आलोचक मानने को तैयार नहीं थे, और जब मानना भी शुरू किए थे तो उन्होंने केवल इतना माना था कि हाँ, मराठी में कुछ दलित साहित्य है। और मराठी का भी तब माना था जब हिंदी में कमलेश्वर ने सारिका के विशेषांक निकाल दिए। बॉम्बे में जब वो थे तो उन्होंने कथा चक्र में कुछ दलित रचनाओं को सीलाज कर दिया।
तब हिंदी में ये मानना शुरू हुआ कि हाँ दलित साहित्य भी है। राजेंद्र यादव हंस में जब दलित साहित्य की बात शुरू कर रहे थे, और मैं समझता हूं कि उस पर मराठी का बहुत प्रभाव पड़ा था। ये 93 की बात है शायद, जब सणकुमार लिम्बाले जी की आत्मकथा पर 91 में आई, लेकिन शायद 92 या 93 में हंस में आपका एक साक्षात्कार छपा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि उसको लेके आए थे, और उसके बाद फिर दलित आत्मकथाओं पर चर्चा होनी शुरू की। और उस आत्मकथा की प्रेरणा से खुद ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा लिखी, नेम्स राय ने लिखी, और कई लोगों ने आत्मकथाएं लिखी। अब जहाँ तक दलित साहित्य के विकास की बात है, ये 1990 का ही दौर था जब शोध आरंभ हुआ, क्योंकि उससे पहले किसी भी विश्वविद्यालय में दलित साहित्य पाठ्यक्रम की बात तो दूर है। आज स्थिति यह है कि हर विश्वविद्यालय में दलित साहित्य पढ़ाया जाता है, रिसर्च होती है। अब 50 का सैकड़ों थीसिस दलित साहित्य पर हिंदी में लिखी जा चुकी हैं विभिन्न लेखकों पर। लेकिन वो समय ऐसा था कि दलित साहित्य पर बात नहीं हो रही थी। मुझे याद है कि जब मैं अपना विषय लेकर गया था अपने शोध निर्देशकों के पास, जिसमें 3-4 बदले, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तो मुझे एडमिशन ही नहीं दिया था, तो आखिर में एक हिंदी के कवि, साहित्य अकादमी से सम्मानित वीरेन टंगवाल, जो चूँकि पत्रकार भी थे, कवि भी थे, प्रगतिशील व्यक्ति थे, उनसे जब मेरी बात हुई और हिंदी दलित पत्रकारिता पर मैंने काम किया, हिंदी दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव, और ये पहला काम था इस रूप में कि डॉक्टर अंबेडकर को हिंदी में लोग जानने लगे थे, लेकिन एक पत्रकार के रूप में जानने को लोग तैयार नहीं थे। जब मैं अपना विषय लेके जाता था तो लोग कहते थे, ज्ञानी लोग, प्रोफेसर लोग, अरे भाई संविधान निर्माता बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, अब अंबेडकर को पत्रकार तो मत बनाओ। और मैं कहता था मैं क्या बनाऊंगा, वो बने हुए हैं। तो इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता था। फिर शोध प्रबंध तैयार हो गया तो भाई पत्रकारिता तो कहीं पढ़ाई नहीं जाती, और पढ़ाई जाती है तो दलित पत्रकारिता तो कोई पत्रकारिता भी नहीं होती। तो ये सवाल मेरे सामने आ रहे थे। और उसी समय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब रजत का एडमिशन हुआ और इन्होंने 90 दशक की हिंदी दलित कविता, जब ये अपने गाइड के पास विषय लेकर गए तो उन्होंने कहा, 90 का समय था, कहाँ है दलित कविता। तो फिर ये बहुत सारे जो संग्रह थे वो बांध के अपने गाइड के पास ले गए, क्योंकि समस्या ये थी कि दलित रचनाओं को पूर्वाग्रह की दृष्टि से देखा जाता था, या उन्हें देखा ही नहीं जाता था। वो मानने को तैयार नहीं होते कि दलितों ने जो लिखा है वो साहित्य की कोटि में आता है, वो किसी विधा में आता है, जबकि हर विधा में लिखा जा रहा था। कविता लिखी जा रही थी, कहानी लिखी जा रही थी, उपन्यास भी उस समय तक लिखे जा चुके हैं। आप देखिए 1952 में बंधन मुक्त उपन्यास आ गया। मेरठ के रामजी लाल सहायक ने 1952 में बंधन मुक्त लिख दिया, और जाति तोड़ने का सवाल उस उपन्यास में है। और 82 में, 84 में ये सब, 1975 में देवी दयाल का आ गया। तो बहुत सारे उपन्यास हिंदी में आए, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा था, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, कोई बात नहीं की जा रही थी। एक जो बड़ी घटना हुई जिसकी वजह से दलित साहित्य में उफान आया, वो 2 घटनाएं। एक तो बाबा साहब को भारत रत्न मिलना, और बाबा साहब की सारी रचनाओं का भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना, ये एक बड़ी घटना। और एक दूसरी घटना थी काशी राम का उत्तर प्रदेश में बहुजन आंदोलन खड़ा करना।
ये अलग बात है कि उन्हीं काशीराम ने अपने अखबारों को बंद किया। और मैंने तो उनसे खुद कहा था एक साक्षात्कार में कि आपने ये बहुत गलत किया। एक बार मैं एक साक्षात्कार मैंने उनका लिया था जो काफी चर्चा में भी रहा था, छपा था उस समय। तो फिर ये कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि काशीराम कोई साहित्यकार थे, ऐसा भी नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर कोई साहित्यकार थे, लेकिन वो साहित्य से कुछ अधिक थे। जो हम साहित्य में सवाल उठाते हैं, जो साहित्य में हम मुद्दे उठाते हैं, वो मुद्दे उनकी वैचारिकी में आ रहे थे। तो ये दूसरी घटना ये हुई। और अब जब हम आगे चलते हैं कि हिंदी में और उथल पुथल हुई। 1993 में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने नागपुर में एक वक्तव्य दिया दलित सम्मेलन में। उस वक्तव्य में पहली बार उन्होंने प्रेमचंद पर सवाल उठाए, उन्होंने कफन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने कफन में एक जाति विशेष को अपमानित किया है और ये कह के कि ये चमारों का कुनबा था, और फिर उनको पात्रों को बिल्कुल अमानवीय चित्रित किया है। वो ये दिखा रहे हैं कि भाई पत्नी प्रसव पीड़ा से बेचैन है, घर में बच्चा पैदा कर रही है और वो आराम से भूनकर आलू खा रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। और जमींदार को उदार दिखा रहे हैं। जमींदार पैसा देता है तो वो दारू पीते हैं। उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा कि ऐसा अमानवीय दलित नहीं हो सकता, ये प्रेमचंद की कल्पना है या प्रेमचंद ने ऐसा सोचा है अपनी तरफ से। और फिर मैं समझता हूं कि ये एक तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आलोचना का उद्घाटन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर तो प्रेमचंद पर डॉक्टर धर्मवीर ने प्रेमचंद सामंत का मुंशी लिख दी, और फिर कमल भारती ने ने फिर क्या किया कि प्रेमचंद के साथ साथ नागार्जुन, निराला और जितने हिंदी के प्रगतिशील लेखक थे उनकी भी चीरफाड़ शुरू कर दी। तो अब एक द्वंद्व पैदा हुआ, एक जद्दोजहद पैदा हुई, और उसमें ये कि कौन दलितों का लेखक है, कौन दलितों का लेखक नहीं है, ये बात बहुत तेजी से उठने लगी। जहाँ तक जो बात शरण कुमार लिम्बाले ने कही थी कि असली चीज है आज़ादी, आज़ादी के प्रश्न को लेकर भी दलित लेखकों ने लिखा। एक कवि हुए NR सागर, और उनसे पहले मैं एक कवि हैं अर्जुन, उनकी एक पंक्तियां रखता हूँ। जाको धन धरती हरो ताय रखो नहीं संग, जो पर रखनो हु पड़ो तो कर रखो अपंग। जिसका धन और धरती छीन ली गई, हरण कर लिया गया, उसको अपने साथ नहीं रखा, गांव के बाहर रखा। और रखने की मजबूरी अगर हो गई, रखना भी पड़ गया, तो उसको विकलांग करके मजबूर करके रखा। तो ये कविता एक बड़ी षड्यंत्रकारी नीति की ओर इशारा करती है। अब इस क्रम में हिंदी में जिन्होंने दलित साहित्य को जन्म दिया या दलित साहित्य के जो आधार बने, वो स्वामी अच्युतानंद खासकर हैं, क्योंकि उन्होंने उस जमाने में जब गांधी जी हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं और स्वामी अच्युतानंद जी कविता में उसका विरोध करते हैं, और इस तरह से स्वामी अच्युतानंद और पूरे देश में आदि हिंदू आंदोलन चलाते हैं, अखबार निकालते हैं, गजलें लिखते हैं, कव्वालियां लिखते हैं। और ये 1922 के दौर की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाते हैं कानपुर में उनके साथ, और फिर जब
प्रिंस बैल जब आता है तब उसको 17 मांगे थमाते हैं अपने समाज की, लखनऊ में सम्मेलन करते हैं। तो सामाजिक आंदोलन और साहित्यिक आंदोलन, ये दोनों जुड़वा भाई की तरह चले हैं हिंदी में। मैं कुछ छोड़ के आगे बढ़ता हूं। एक चीज का और असर हिंदी पर पड़ा और वो मराठी पर भी पड़ा। ये जो अश्वेत साहित्य का अनुवाद हुआ, उस अनुवाद ने हिंदी को भी प्रभावित किया और उसमें जो सवाल थे वो सवाल ऐसे लगते हैं कि जैसे वो बिल्कुल आज के और हमारे सवाल हैं। मैं कुछ ये ग्लोरिया मंतुंगवा की कविता है, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। वेदना भरे हुए दिन काटे नहीं कटते थे, हर पल उनके बीत जाने की प्रतीक्षा रहती थी। वे कुछ महीने, कुछ हफ्ते और फिर कुछ दिन, हर पल जैसे आजादी पास आ रही थी। एक चिर प्रतीक्षित बच्चे का जन्म होने जा रहा था, यानी आजादी को बच्चे के जन्म के रूप में उन्होंने देखा है। एक फेजे का माकोन से की कविता है। इतिहास के इस नाजुक मोड़ पर मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में केवल आतंक और दहला देने वाली हिंसा देखी है। अगर वक्त मुझे अनदेखा करके चला गया तो भला मैं लंबी जिंदगी का क्या करूंगी। मेरे बहुत से साथी पहले ही रोशनी की तलाश में भोर से पहले ही मारे जा चुके हैं। और अब इसका हिंदी में आप देखेंगे कि हिंदी में एक कविता है, और जो इसकी कल भी चर्चा हो रही थी। कविता है, क्यों हिलता नहीं पत्ता भी। हमारे साथ जब होता है बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, तब क्यों हिलता नहीं एक पत्ता भी। और जब तुम्हारे साथ हुआ बलात्कार, तब क्यों हिल गई संसद। इसमें आप देखिए कि मैं आपको उस स्थिति की तरफ ले जाता हूं। 2012 में एक घटना हुई, मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। सब लोग जानते हैं कि उसने कितना तूफान खड़ा किया था। और उसी समय एक दलित लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ, उसे जिंदा जलाया भी गया और कहीं कोई उसका जिक्र नहीं हुआ। और उसका जिक्र किया हमारे ये सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका नाम क्या था, मैंने नहीं, उनका नाम मेरे ध्यान में था, अल्तमश कबीर। अल्तमश कबीर ने कहा कि ये तो आंदोलन हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस दलित लड़की के बारे में किसी ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया। तो अब उस दृष्टि से आप इस कविता को देखेंगे। और जब तुम्हारे साथ हुआ बलात्कार, तब क्यों हिल गई संसद भी। चीख उठी महिला सांसद बलात्कार के खिलाफ, क्यों उड़ गई महिला आयोगों की नींद। आज क्यों उठी बलात्कारियों को सजाए मौत देने की बात। कल क्यों मौन थे तुम। क्यों मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुआ बलात्कार क्या पहला बलात्कार था। नहीं तो तब तुम सब चुप क्यों थे जब मेरे साथ हो रहा था बलात्कार, सामूहिक बलात्कार। कारण मालूम है मुझे, क्योंकि तुम हो अभिजात्य सवर्ण और मैं ठहरी दलित। यदि हजारों बालाओं के साथ किए जा रहे बलात्कार पर तुम खामोश नहीं रहती तो तुम्हारे बोलने से मिल जाता मेरी आवाज को थोड़ा बल। पर आज तुम्हारी बच्ची के साथ नहीं हो सकता था बलात्कार, जिसका अफसोस है तुम्हें और मुझे भी। उफ, रुका भी नहीं सिलसिला हमारे साथ बलात्कार का, पर तुम अवश्य बैठ गई चुपचाप, पूर्ववत शांत मौन सादे, गोया कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह से
हिंदी हो या मराठी हो या अफ्रीकी साहित्य हो, जो वेदना है गुलामी की, वो एक ही तरह से व्यक्त हो रही है सारी दुनिया में। ज्यादा हो गया क्या? हाँ ठीक है। आप बता दीजिएगा, मैं लिखता हूँ कुछ एक दो कविता। बहुत लंबा हो गया है लेख भी। अच्छा ठीक है, तो कुछ सवाल अगर आ जाए तो अच्छा है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि अब मैं आलेख को पढ़ूंगा तो बहुत समय हो जाएगा और ये छपकर आने पर ही अच्छा लगेगा। तो मैं अपनी बात रोकता हूँ और किसी का आना चाहिए। कोई सवाल, कोई जिज्ञासा? हाँ, आ रहे हैं सवाल आ रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। आप शिवकामी जी को भी सवाल पूछ सकते हैं और किसी को भी पूछ सकते हैं। हाँ, हाँ। मुझे मत पूछिए। बहुत साधुवाद। मैं आप दोनों से सवाल कर लेता हूँ। मैं मान्यवर कांशीराम की हिंदी पत्रकारिता को पढ़ रहा हूँ इस समय, तो उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है। क्योंकि आज उनकी जन्म जयंती भी है, आज उनकी 90वीं जन्म जयंती है। और सर ने कहा है कि उत्तर भारत में जो हिंदी का दलित आंदोलन आया, तो एक बड़ी घटना थी कांशीराम का बहुजन आंदोलन। जी, तो मैम ने भी वो कहा कि आज जो है पॉलिटिक्स इतनी महंगी हो रही है, उसमें उनने जो एक्सपेरिमेंट किए पॉलिटिक्स में और साहित्य लिखने के लिए उनने जो जिस तरीके से मोटिवेट किया उत्तर भारत में दलित समाज के लिए, पूरा बहुजन समाज के लिए, तो उसका जो योगदान है उसको हमें कैसे देखना चाहिए, या साहित्य में उनकी वैचारिकी को अभी भी कैसे देखना चाहिए? क्योंकि वो जो है दलित से ऊपर बहुजन की बात कर रहे हैं कि हमें पूरा एक बहुजन तबका है जो जाति के आधार पर पीड़ित है, तो उसको पूरे एक साथ करना चाहिए और सभी की समस्या को एक साथ लेना चाहिए। तो दलित से ऊपर बहुजन की जो उनकी सोच है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? ये तो अच्छी बात है कि बहुजन की सोच। आवाज आ रही नहीं? आ रही है। आपके बाद शिवकामी जी भी इसको जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल। मेरा सोचना यह है कि राजनीतिक दृष्टि से बहुजन कहना और बहुजन जोड़ना अच्छी बात थी और इसकी आवश्यकता थी। लेकिन हमने ये पाया चाहे उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए कि जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बहुत मजबूत किया। आप चकित होंगे कि उत्पीड़न के अधिकांश जो आंकड़े हैं वो पिछड़ी जातियों की तरफ से आते हैं। जो उत्पीड़न होता है, मैं यादव बाहुल इलाकों में रहता हूँ, हमारे यहाँ जितना उत्पीड़न यादव करते हैं या जहाँ जाट बाहुल्य इलाका है, जाट करते हैं दलितों का, या गुजर करते हैं या लोध करते हैं, उतना ब्राह्मण नहीं करते। तो फिर बहुजन की जो अवधारणा है उसमें इस बात को समझने की जरूरत है कि पहले उनको लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है, उनमें ये चेतना लाने की आवश्यकता है कि हम शूद्र हैं। तो पहले तो वो शूद्रत्व को ही स्वीकार नहीं करते, तो उन्हें भी ये पहचानना पड़ेगा कि वर्ण व्यवस्था में हम भी बहसकत हैं, हम भी नीचे हैं और आप भी नीचे हैं, तो भाई भाई मिल सकते हैं। जो भावना उनके अंदर नहीं है, बहुत कम लोग हैं इस बात को जानते हैं। बड़ी संख्या में अगर इस चीज को पहचानेंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुजन संगठन बन सकता है, जो अभी नहीं बन पा रहा है। और चाहे तो ये राजनीति के तौर पर बनता रहे तो अच्छी भी बात है, लेकिन सामाजिक जो है अभी मेल मिलाप नहीं है। क्योंकि रोटी बेटी के रिश्तों को भी लें तो अभी शूद्रों के बीच और दलितों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता संभव नहीं दिखाई देता, जबकि जो उच्च जातियों के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता दलितों का कई जगह, बहुत सारी जगह हुआ है और हो रहा है, जब है, और पिछड़ी जातियों के साथ नहीं होता दिखाई देता। हाँ जी, In my opinion, social relationship precedes political alliance.
even now we have this feudal relationship in the rural area because there are landless peasants are there. So they have to necessarily work under the landowners. So their relationship is somewhat, kind of a feudal and not liberal. There is no give and take relationship. Though we remain in the same village, Dalit habitation is alag hai, and others are living in a different location, means far away from each other. In the urban area, some kind of a mix has come. Like Neyveli Lignite Corporation, if there is that plant, there are housing quarters, they don't allocate by caste. So there has been some mixing. There is also ideological oneness, I should say, between Dalits and Bahujan, because they are also deprived in a different kind, but Dalits are the most oppressed, so they can come together. This is a kind of an ideology which comes from the top. That should be matched by the ground level realities. So in case, I just imagine, if each Dalit who's a landless agricultural laborer gets 1 acre of land, how it is going to change the relationship in the village? See, he will work in his field, remaining time he can contribute to others. Other small farmers also, they will work on the field. If there is a necessity, they will come and work in Dalit field. Because the season is such, because for a particular time the plantation has to be finished or harvesting has to be done, there will be a give and take relationship. So if I have some seeds, I can save them and give it to my neighbor. So this kind of a relationship doesn't exist now. So where is the question of feeling Bahujan, feeling fraternity, even though you live in the same village? So there has to be some social, economic relationship is necessary to have a political alliance. If you have land, see, if now the landholders among Dalits are 11%. If 60% people are landholders, because 70% of Indian population is living on agriculture. So 60% of Dalits, if they are landholders, then there is a big lobby for agriculture. So the government of India has to enact policies based on this lobby. Now there is no lobby, only Punjab farmers are fighting. No, Tamil Nadu farmers, only few of them come and camp. There is no support from the agricultural laborers. So this land redistribution will shake the political alliances, in my opinion. Thank you. जोर से वहां से बोलो, आवाज दिखाओ. हाँ, जोर से. नमस्ते मैम, मेरा नाम ममता है. मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ और मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ और इसी से संबंधित मेरे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं दलित विमर्श या दलित स्त्री विमर्श से भी जुड़ते हैं. मैं दैनिक जागरण और जनसत्ता पे काम कर रही हूँ. जब मैं उसकी भाषा पढ़ती हूँ तो उसमें इस तरह के शब्द आते हैं कि तथाकथित दबंग जाति के लोगों ने मतलब दलित स्त्री का बलात्कार कर दिया. तो कहीं ना कहीं इन भाषाओं में भी मुझे समस्याएं लगती हैं कि जिन्हें क्रूर कहना चाहिए था उन्हें दबंग कह दिया और दलित को इस तरह दिखा दिया कि वो तो है ही इसीलिए. तो इस तरह से आप दलित पत्रकारिता की क्या भूमिका देखते हैं मुख्य समाचार में? ये मेरा सवाल है कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन समाचार पत्र को लेकर के, स्पेशली स्वराज सर को, क्योंकि उनका काम भी उसी पे है. और दूसरा सवाल मेरा ये भी है. Translate this question for me. She asked a question about media and media's role. You will reply because he worked on media. संक्षेप में बात करूंगा. ऐसा है कि मीडिया में कौन है, जो है उसी की भाषा तो
अखबार में या चैनल पर आपको सुनाई पड़ेगी। तो चूँकि मीडिया में अभी अभिजात वर्ग का ही कब्जा है, तो जब दलित जाएगा तो अपनी भाषा, अपना विचार, अपनी समस्या लेकर जाएगा। उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ बढ़ेगा, बनेगा, तो भाषा बदलेगी। भाषा अपने आप नहीं बदलती है, भाषा को कोई लेके आता है, भाषा के पीछे कुछ संस्कार आता है, कुछ परंपरा आती है। तो जो जहाँ से आ रहा है और उसका परिवेश आता है, जिस परिवेश में बोलने वाला या लिखने वाला रहता है, जीता है, वहाँ की वो भाषा लेके आता है। तो इसलिए आप अभी उस मीडिया से इतनी अपेक्षा मत कीजिए, अपने आप से अपेक्षा कीजिए, हैं, आप वो भाषा देंगे। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, पूछो। मुझे साहित्य अकादमी ने बोला है कि चाय ठंडी हो रही है, खत्म करो। मैं बोला कि सवाल आने दो, तो पूछो सवाल। सर, मेरा प्रश्न ये है, मेरा नाम अंजलि है और मैं विश्वविद्यालय से कर रही हूँ, हिंदी साहित्य से मास्टर्स। सर, जब मैं यहाँ आई, ग्रेजुएशन मैंने किया और मास्टर्स कर रही हूँ, तो पहली बार मैं स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को बड़े व्यापक रूप में मैंने पढ़ा, उनकी समस्याओं को मैंने समझने की कोशिश किया और उससे जुड़ने की भी कोशिश की। पर मेरे सामने ये प्रश्न उठा कि इतनी बड़ी समस्या हमारे जो हाई स्कूल है, चाहे इंटर है, उसमें क्यों नहीं दिखाया जाता है। रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां दी जाती हैं, तुलसीदास के, चाहे हम सूरदास की पंक्तियां देखते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी को केवल एक संविधान निर्माता के रूप में देखते हैं। ऐसी कविताएं जो मार्मिक है, जो वहाँ के वो जमीनी स्तर पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे क्यों छुपाया जाता है, उनको क्यों नहीं उस स्तर पे इस वेदना को दिखाया जाता है। क्योंकि हम बच्चे ही हैं जो इस समाज को परिवर्तित करते हैं और कक्षा में एक टीचर की जो शब्द होते हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि शिक्षा में ये नहीं जोड़ा जा रहा है? ये मेरा प्रश्न है सर। शिक्षा में क्या नहीं जोड़ा जा रहा है? सर, जो जैसे हमारा पाठ्यक्रम है उस हाई स्कूल का चाहे इंटर का, तो उसमें जैसे स्त्री विमर्श से संबंधित या फिर दलित विमर्श से संबंधित अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। यस सर। हाँ, एक सेकंड। ये जोड़ा जाए, ये बात हम कह सकते हैं। यहाँ से हम लोग जोड़ नहीं रहे हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, जो हमारे हाथ में हो। हम ऐसे तीनों पाठ्यक्रम नहीं बना रहे, लेकिन ये बात सच है और वाजिब है कि पाठ्यक्रम नीचे से ही, मतलब हम अभी विश्वविद्यालयों में तो विविधता आ गई है, पाठ्यक्रम में काफ़ी विविधता आई है, सब तरफ से सब चीज़ें आई हैं। स्त्री विमर्श भी आया है, दलित विमर्श भी आया, तमाम विमर्श आए हैं, और भी चीज़ें आई हैं नई नई। लेकिन हाई स्कूल इंटर में नहीं है। एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत लगा है जैसे, लेकिन उस पर भी काफ़ी विवाद होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कहानी लगी थी तो उस पर काफ़ी झगड़ा हुआ होगा, आपको पता होगा। तो हम सिर्फ अपील ही कर सकते हैं, या उसके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारण करने वाली समितियां हैं उनके लिए पत्र लिख सकते हैं, उनको सुझाव भेज सकते हैं, अखबार में ये बात कह सकते हैं, अब आप भाषण में बोल सकते हैं, यही हो सकता है। लेकिन वो होना चाहिए सिद्धांततः, तो वो होगा देर सवेर। और आपकी जो व्याकुलता है, प्रश्नाकुलता है, वो निश्चित तौर पर शांत होगी। और मुझे लगता है कि अब तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम मुझे बार बार फ़ोन कर रही हो कई दिनों से कि मुझे आपसे सवाल करने हैं, तो शायद, और अगर हो तो अभी मैं निपटा देता हूँ। मैं समापन की ओर आपको लेके जा रहा हूँ। आपको पूछना है? हाँ, पूछो। सर, मेरा सवाल बेचैन सर से है कि हम लोग गांव से ही आते हैं, तो जो दलित साहित्य में जो रचनाएं हो रही हैं, हम लोग यहाँ तो समझ रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जान रहे हैं, लेकिन जिसके लिए लिखा जा रहा है गांव में, वहाँ के लोग जागरूक नहीं है। जैसे हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पे होता ये है कि कुछ प्लेटें जो दलित बच्चे हैं उनके लिए अलग रखी जाती है और जो बच्चे उनके लिए अलग प्लेटें रखी जाती है। तो सर, हम यहाँ तो ये चीज़ें कर रहे हैं, सोच रहे, समझ रहे हैं, मतलब समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो हो नहीं रही सर। तो सर, इसके लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं खुद अलग प्लेट में ही खा के आया हूँ, मुझसे ज़्यादा अनुभव इस बारे में होगा नहीं। मैंने खूब लिखा है, मैं गांव में ही रहा हूँ, बल्कि मैं तो गांव का खेत मजदूर, बाल मजदूर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं जब जाता था रहट हाँकने, तो हमारे जो प्रधान के भाई की मैं रहट हाँकता था,
तो मेरे लिए भोलुआ आता था। भोलुआ कहते, कुल्हड़ से थोड़ा अलग तरह का होता है, तो वो भोलुआ आता था और वो रख दिया जाता, उस समय खाना खाता था। चूँकि मैं अछूत था और यादव तो अपने को अछूत मानते नहीं, तो लेकिन अब जब मैं लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो तमाम हमारे गांव के जितने भी लोग आते हैं मेरे घर ही खाना खाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मेरे बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन ये बहुत सीमित है कि कोई शौरा सिंह बेचैन बनेगा तब आपके बर्तन में खाएगा, सामान्य क्यों नहीं खाएगा? हाँ, वो बदलेगा। अब उसके लिए तो बहुत वैचारिक और उस तरह के सुधार के आंदोलनों की ज़रूरत है। आर्य समाज भी कुछ करता रहा है, लेकिन अभी चिंताजनक तो इसलिए है कि ये सुधार बहुत धीमा है। और जो आपकी चिंता है वो मेरी भी चिंता है। मैं भी सोचूंगा और आप भी सोचेंगे, तो सब लोग सोचेंगे कैसे ये होगा। ठीक है। Just because I ate in the different plate doesn't mean that you should. Because there is an act. There wasn't an act earlier in his time. Now there are two acts. One is Prevention of Atrocities, SCST Atrocities Act. Another one is Civil Rights Act. The Prevention of Atrocities Act was introduced in 1989 itself. So if anybody following two-plate system, please report to the police and they should be booked under Prevention of Atrocities Act. मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने प्रश्न पूछे और इससे संगोष्ठी में जान लाई। मैं समापन की ओर जा रहा हूं। मुझे मेरे लिए 6 बजे समापन कर सकते हैं ना? 10 मिनट में है। मैं 5 मिनट में कर देता हूं। कि देखो कि दलित साहित्य केवल दलितों के लिए लिखा नहीं जा रहा है। दलित साहित्य का अध्ययन केवल दलित नहीं कर रहे हैं। दलित साहित्य जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाने वाला टीचर केवल दलित नहीं है। अब हमें देखना चाहिए कि मैं जब यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, फेस्टिवल में जाता हूँ, तो सुनने वाले सब मेरे सामने दलित नहीं होते हैं। मैं मेरे लोगों के लिए लिखता हूँ, मेरे लोगों के लिए लिखता हूँ, वो अनपढ़ है। और मुझे जो पढ़ रहे हैं वो मेरे लोग नहीं है। मैं सोचता नहीं है। मैं मेरे लोगों के लिए नहीं लिख रहा हूँ। कोई भी दलित लेखक अपने लोगों के नहीं लिख रहा है। फिर किस लिए लिख रहा है? हम अन्याय के खिलाफ लिख रहे हैं। अन्याय किस पर भी हो उसके खिलाफ हम बोलते हैं। अन्याय के खिलाफ बोलना ये मनुष्यता का धर्म है। यदि अन्याय हो रहा है और हम नहीं बोलेंगे तो हम मनुष्य नहीं है। न्याय के प्रति हम संवेदनक्षम होने चाहिए और न्याय के संरक्षण में हमें बोलने चाहिए, क्योंकि संविधान में न्याय निहित है। संविधान में न्याय की बात कही है। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू है। ये समता के बारे में हम बोल रहे हैं, इक्वालिटी के बारे में बोल रहे हैं, भाईचारा के बारे में बोल रहे हैं। दलित साहित्य केवल किसी एक जाति का साहित्य नहीं है। दलित साहित्य अन्याय के खिलाफ और न्याय के समर्थन में बोल रहा है। हम ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते नहीं है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं। ये सोचना नहीं तो हम ब्राह्मण को बोलेंगे तो मैं ऐसा हुआ, एक कवि सम्मेलन था, उसमें मैं भी गया था और एक ब्राह्मण भी कवि आया था और वो ब्राह्मणों पर खिलाफ बोलने लगे तो उठ के चला गया। हमें जिस समाज में परिवर्तन करना है उस समाज को दलित की भाषा समझने के लिए उनको तैयार करना है, तो उनकी मानसिकता को भी हमें समझनी होगी। वो एक धर्म से, एक जाति से, एक व्यवस्था से पीड़ित होकर हमारे सामने बैठे हैं। उनमें हमें बदलाव करना है। हम बंदूक लेकर ये नहीं रेवोल्यूशन नहीं कर रहे हैं जैसा कि नक्सलवादी कर रहे हैं। ये बंदूक लेकर समाज को हम बदलना नहीं चाहते हैं। बंदूक लेकर मैं आपको मारने लगूंगा तो आप ये हिंसा होगी। ये हमें मान्य नहीं है। हम अहिंसा से लड़ना चाहते हैं। किताबें दुनिया को बदल सकती है, किताबें समाज को बदल सकती है, किताबें इंसान को बदल सकती है और उस किताब पर हम विश्वास रखते हैं। वो महान किताब है संविधान हमारा।
उस संविधान के मूल्यों को हम लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं। संविधान मूल्यों को हम, दलित साहित्य संविधान के मूल्यों को प्रचार कर रहा है। दलित साहित्य संविधान में जो समता, स्वातंत्र्य, बंधुता है, उसको लोगों तक एक नई पीढ़ी बनाने के हम लिख रहे हैं, यानी हम एक नई राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक नया राष्ट्र, जो आज तक जो राष्ट्र था वो पीड़ित था, जाति व्यवस्था में सड़ा हुआ था। अभी हम जब सौराज सिंह बेचन को पढ़ेंगे, शिवकामी को पढ़ेंगे, लिम्बाले को पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे सवर्ण विद्यार्थी? क्या लेना देना तुम्हारा? क्यों हम दलित को लिख रहे और दलित आए हम, तुम क्यों पढ़ते हो स्कूलों कॉलेजों में? क्या काम है? ये ऐसा नहीं है। मैं जाति की बात कर रहा हूँ और तुम जाति की भाव लेकर हमको समझेंगे तो आप मुझे समझ नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता हूँ। तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। दलित साहित्य इंसान को महान मानता है, दलित साहित्य इंसान को केंद्र मानता है, दलित साहित्य इंसान को पवित्र मानता है। और इस बात को हम हमारे मन में रखकर दलित साहित्य को पढ़ना चाहिए, उस दलित साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, ऐसे मैं समझता हूँ। मैं कभी कभी कहता हूँ कि मनु का मेरे पर बहुत आभार है और मैं पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता हूँ, मगर मैं कभी कभी लिखता हूँ कि अगले जन्म मुझे मिला तो मुझे अछूत ही मिले, क्योंकि मैं अछूतकों के प्रश्नों के बारे में लिख सकूं। मनु ने लिखा नहीं होता तो हम आज बगावत नहीं कर सकते थे। बाबा साहब की संविधान और मनुस्मृति, ये दोन किताबों को लेकर हमारा संघर्ष चल रहा है। हम मनुस्मृति को खारिज कर रहे हैं और बाबा साहब की भीम स्मृति आगे लेके जा रहे हैं। वो केवल हमें नहीं जा रहे हैं, हिंदू समाज भी बदल रहा है। हिंदू समाज बदल रहा है, हिंदू की मानसिकता बदल रही है। कहीं पर हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, एक स्त्री पर बलात्कार हुआ तो उसको हम बहुत बड़े दायरे में, सब दलित स्त्री पर अन्याय हुआ, इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए। वो बलात्कार करने वाला हिंदू है ऐसा सोचना नहीं चाहिए, वो गुनहगार है। हमें उसके खिलाफ बोलना है तो क्या करना चाहिए? हम हमारे समस्याएं बढ़ा रहे हैं। मैं एक हिंदू पुरुष ने एक दलित स्त्री पर अन्याय किया तो मैं सभी हिंदुओं को गालियां देने लगता हूं कि ये हिंदू ऐसे है, हिंदू ऐसा है, इनका धर्म ऐसा है, जातीय व्यवस्था है। फिर सब हिंदू उस गुनहगार व्यक्ति के पीछे खड़े रहते हैं कि ये बराबर किया है। हमें ये करना है कि जो गुनहगार हिंदू है उसको अलग थलग पाड़ना है और बाकी के हिंदुओं को हमारे साथ लेना है। इस प्रकार का एक डायलॉग, एक कल्चरल डायलॉग, एक बहुत बड़ा व्यापक डायलॉग हमें खड़ा करना है, क्योंकि हमें हिंदू को भी बदलना है और हमें भी बदलना है। इतना ही नहीं, हमें देश को बदलना है। एक सुंदर देश का सपना लेकर हम लिखते हैं। दलित लेखक एक सुंदर सपना देखता है। सौराज सिंह बेचन हो, पी शिवकामी हो, उन्होंने जो जवाब दिए, ये एक सुंदर राष्ट्र, आप भी जो सुन रहे हैं, हम सब एक सुंदर राष्ट्र का सपना देखने वाले लोग हैं। और मुझे लगता है इस बिंदु पर मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। चाय ठंडी हो रही है, चाय लेंगे। धन्यवाद। सर एक तस्वीर लेंगे। इधर आओ, आगे ये जो आएगा इसके आगे खड़े रहिए। इसके साथ ही इधर आओ, इसके साथ ही ये किसी का फोन यहाँ रह गया है, आप आके मुझसे ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही दलित साहित्य पर हमारा ये बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही प्रेरक सत्र समाप्त होता है। श्री शरण कुमार लिम्बाड़े, श्रीमती पी शिवकामी